जरा आप बताएं, आपकी जो पहली फिल्म थी उसमें एक बड़े स्टार आपके साथ थे और दूसरी फिल्म में तो इतने बड़े स्टार थे, तो वो दोनों फिल्मों का जो आपका शुरुआत हुई वो अलग अलग एक्सपीरियंस रहे होंगे। तो कैसा एक्सपीरियंस था पहली पिक्चर का और फिर जो दूसरी आपने इतने करोड़ की फिल्म कर डाली? सर, वही मैं बहुत सौभाग्य की बात मानती हूँ कि मेरी पहली फिल्म इतने करोड़ों की थी। पर उसमें आपको पता है, ये हो गया कि एक कलाकार के लिए सबसे कठिन चीज़ होती है बॉक्स ऑफिस। और वो हमारा जो सरदर्द था वो सलमान सर ने ले लिया, तो वो एक टेंशन मेरे शोल्डर से कम हो गई। तो उसमें आई थिंक ये एक्सपीरियंस पूरा हंसी मजाक का हो गया, मज़े का हो गया, क्योंकि मैंने अपनी जो पहली फिल्म थी, मैं इतने बड़े लोगों के साथ काम करी थी कि मुझे लगा मैं सिर्फ सीख लेती हूँ, मैं यहाँ पे कुछ दे तो नहीं पाऊँगी, पर मैं सीख लेती हूँ। और वहाँ पे मैंने सिर्फ सब कुछ निचोड़ा है। मैंने आसपास देखा है, मतलब अच्छा ऐसे करते हैं, अच्छा ऐसे करते हैं, मैंने सब सीख लिया वहाँ से। और वो थी मेरी पहली फिल्म। और जो मेरी दूसरी फिल्म है वो अभी तक आई नहीं है, पर वो संजय दत्त सर के साथ है, वो उसमें है। उतना नहीं जितना सलमान सर थे, किसी का भाई किसी की जान में, पर संजय सर प्रोड्यूसर भी हैं। तो इसमें थोड़ी ज़्यादा हैवी लोडिंग है, तो ये मुझे लगता है कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में पार्ट 1 में सीखो एक बड़े स्टार से, पार्ट 2 में दूसरे बड़े स्टार के सामने जाके, ये मुझे पता है, हाँ इतना मुझे आता है। तो ये थोड़ी प्रिपेयर होगी मैं सलमान सर की वजह से, तो बस वही लकी होगी वहाँ अच्छा, वो पे। इतने बड़े स्टार हैं, वो आपको बिल्कुल फील नहीं होने दिया होगा उन्होंने? जब आप फिल्म बन रही थी, जब वो शूटिंग चल रही थी, ऐसा तो फील नहीं होने दिया आपको? आई थिंक वो कभी कभी खुद भूल जाते हैं कि वो बहुत बड़े स्टार हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है सबको एक जैसा रखने, कि सबको एक जैसा रखें। उनको बहुत, स्पेशली अगर कोई उनको लगता है ना बच्चा है, उनको बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत हमेशा सिखाना उनको बहुत पसंद है। उनको नहीं लगता कि हमारी उम्र में कोई गलती कर सकता है। उनको लगता है ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे से करो, ये नहीं ऐसे करो। कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं बिल्कुल, बहुत कुछ सीखा है। एलिजे, देखिए इतने बड़े क्रिटिक अगर घर में ही हो, जब आप फिल्म कर रही थी तो क्या उनकी कुछ गाइडेंस मिलती रहती थी या पूरा छोड़ा हुआ था उन्होंने कि आप अपना बेस्ट दो, और बाद में जब वो फिल्म लगी, जब उन्होंने देखी, तो वो कॉम्प्लीमेंट या जो भी उन्होंने कुछ कहा जरा वो शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ? आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो थी वॉज दैट कि उन्होंने मुझ पर इतनी यकीन की दैट ही वॉज ओके टू सपोर्ट अ फिल्म विद अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट लाइक फर्रे, एंड इट वॉज द बेस्ट थिंग वी कुड हैव आस्क्ड फॉर। क्योंकि आई थिंक एडवाइस तो बहुत लोग देते हैं, बट टू एक्चुअली डू समथिंग फॉर समवन फिजिकली टू मेक अ मूवी हैपन, to find investors, to get the script, to get the director, इतना commitment देने के लिए it's very I'm really grateful कि उन्होंने मुझे इतना support किया। and more than advice I think it's that वो जो silent presence रहता है एक guardian angel जैसा, कि हम देख रहे हैं, हम involved नहीं हो रहे, you should be independent, you should live your life, लेकिन दूर दूर से वो देखते रहते थे कि आई एम हियर फॉर यू एंड आई एम देयर। ऐसे कुछ स्पेसिफिक अच्छा, उन्होंने ये बोला बताइए कि वो नहीं। लाड और डांट का मिक्स होता है उनके साथ या बहुत ज्यादा लाड करते हैं, डांटा कभी किसी बात के लिए उन्होंने? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, और जब हमेशा फिल्म प्यार देखी से ही उन्होंने, बात करते हैं। जब फिल्म देखी तो पहली बार क्या कहा फिल्म देखने के बाद? एक्चुअली उन्होंने कुछ बोला नहीं। आई थिंक दैट वाज गुड। ही वाज वेरी हैप्पी विद इट एंड ही सेड या कि बहुत अच्छी है एंड आई थिंक वी शुड गो थिएट्रिकल, क्योंकि प्लान था कि हम ओटीटी पे रिलीज़ करेंगे पहले, फिर उसके बाद फिल्म देखने के बाद हमें लगा कि शायद थिएटर्स में एक चांस होगी। एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट वी रिसीव फ्रॉम हिम कि ही सेड कि वी शुड डू अ थिएट्रिकल रिलीज फॉर फर्रे। सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग। बिल्कुल, और ऐसे छोटे छोटे बच्चे जब हैं, जब इतना अपनी मेहनत से काम करते हैं, भले ही वो ऐसी फैमिली से आते हैं जो पहले फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन इनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने लिए अलग से जगह बना पाना। वेदांग, अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी जो पहली फिल्म थी उसमें स्टार किड्स थे, शाहरुख खान की बेटी थी, खुशी थी उसमें, अगस्त्य नंदा थे, तो क्या उनके बीच में आप वो फिल्म कर रहे थे, आपके लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल था या बहुत आसान था? किस तरह का वो अनुभव रहा शूटिंग के वक्त का? नहीं, मुझे ऐसे कभी फील नहीं हुआ और फील कराया भी नहीं गया, टू बी ऑनेस्ट। एंड मेरे लिए ऑलरेडी बहुत बड़ी बात थी कि मैं कोई भी सेट पे पहुंच चुका हूँ, कि मैं कोई भी फिल्म का एक पार्ट हो चुका हूँ। सो मेरा ऐसे कुछ दिमाग में ऐसे कुछ था ही नहीं कि मैं किन के साथ काम कर रहा हूँ, मेरा उसके बाद क्या होने वाला है, ऐसे कुछ दिमाग में था ही नहीं एट ऑल। बट एक्चुअली हम सब डेब्यूटेंट्स थे उस फिल्म में, तो बिकॉज वी वर ऑन दिस जर्नी टुगेदर,
हम सब अपनी पहली फिल्म कर रहे थे, तो ऐसे कभी फील ही नहीं हुआ कि कुछ ऐसे डायनामिक था ही नहीं, कि ऐसे लग रहा था कि हम जस्ट 7 दोस्त हैं और एक साथ मेहनत करके एक फिल्म बना रहे हैं। तो मुझे ऐसे कभी फील कराया नहीं गया कि आई एम वर्किंग विद पीपल हु आर कैरिंग सच एन इमेंस लेगेसी। आई फेल्ट एट होम। बिल्कुल। और राजवीर देखिए, हमारे जो दर्शक हैं जो हमें अभी इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर इस हॉल में जितने भी लोग हैं, वो ये जानना चाहेंगे। देखिए, हमने वेदांग से कह दिया, उन्होंने प्रॉमिस भी कर दिया, साइलेंस उनका जो है वो कह रहा है कि वो गाएंगे ज़रूर, भले ही वो 2 लाइन गाएं। लेकिन हम आपसे चाहेंगे, इतने पॉपुलर डायलॉग्स हैं आपके दादा धर्मेंद्र जी के, सनी देओल जो आपके पिता हैं उनके तो डायलॉग्स, तो हम चाहेंगे चूंकि आप एक्टर हैं तो कुछ तो हो जाए उनका, ताकि हमें लगे कि हाँ, उनकी जो अभी वो यहाँ नहीं है तो हमें लगे उनकी प्रेजेंस यहाँ फेल्ट हो। आप बताएं कुछ करके उनका कोई डायलॉग फेमस। Good thing about movies is you can rewind it and play it anytime. So their dialogues as well. You don't want to paint the Mona Lisa again. So out of respect for my father, grandfather, my chacha, I will not say the dialogue. अच्छा, पलक आप ये बताएं, अब जो म्यूजिक एल्बम्स हैं वो भी चल रही हैं फिल्म के साथ साथ, तो व्हाट डू यू एंजॉय मोर? और आपके लिए भी दिक्कत ये है कि माँ इतनी बड़ी स्टार हैं और आपके लिए भी अपनी ज़मीन तलाशना, अपनी जगह बनाना उतना आसान नहीं होता, बल्कि आपके लिए शायद ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब एक पैमाना सेट किया हो आपके पेरेंट्स ने और फिर लोग उनके साथ कंपैरिजन करते हैं, तो वो तो होता ही है। तो किस तरह से लेती हैं उसको आप? सच बताओ, मेरी जो शुरुआत थी वो थोड़ी अलग थी। मेरा डेब्यू सच कहूँ तो बिजली ही था। तो मेरे डेब्यूटांट डायरेक्टर थे अरविंदर सर और मेरा डेब्यू हीरो था हार्डी। और उसकी वजह से मैं आज जहाँ पे भी हूँ मैं उसी की वजह से हूँ। तो उस म्यूज़िक एल्बम ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और उसके बाद मैंने एक और की, पर फिर उसके बाद मुझे लगा कि गाने में और नाचने में मज़ा है, पर यहाँ पे मेरा दिल इतना खुश नहीं है। मेरा दिल ज़्यादा एक्टिंग में है, हमेशा से एक्टिंग में था। और अगर मैं मम्मी की बात करूं तो, और मम्मी से जो कंपैरिजन होता है उसकी बात करूं तो, मुझे कभी वो एक प्रॉब्लम लगा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि क्या ही बोलेंगे कि तुम अपनी मम्मी जितनी सुंदर नहीं हो। हाँ ठीक है, नहीं हूँ, मुझे पता है। मुझे लगता है मेरी मम्मी से ज़्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। मैं आपसे बड़ी फ़ैन हूँ मेरी मम्मी की, तो आप मुझे क्या ही बोलोगे? फिर क्या बोलोगे? तुम अपनी मम्मी जितनी अच्छी एक्टर नहीं हो। हाँ तो मुझे 2 साल हुए हैं, मुझे टाइम तो दो थोड़ा, फिर बाद में बात करेंगे। पर मुझे लगता है कि जो भी है वो इतना बुरा नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी मम्मी से सब कुछ सीखने मिलता है। और मैं एक्टिंग की बात नहीं करी हूँ, वो ज़िंदगी में इतनी सुलझी हुई औरत है ना, मुझे बस उनसे एक औरत बनना सीखना है। क्रिटिक भी हैं घर में, बताती हैं कि ये ठीक किया तुमने, ये ठीक नहीं किया, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है उनसे? क्रिटिक ही है सर, क्रिटिक ही है। एक पूरी की पूरी देसी माँ है, ये गलत किया, ये गंदा किया, ये हो किया। पर जैसे अलीज़े ने कहा, अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो एकदम मुंह बंद। तब मुझे लगता है हाँ, आज कुछ नहीं बोला, आज कुछ अच्छा हुआ होगा। पर वो मुझे ही सोचना पड़ता है कि कुछ क्या अच्छा हुआ है। अच्छा एलिज़ा, देखिए, आप ये बताएंगी क्योंकि सलमान साहब को आपसे बेहतर कौन जानता है। आपके तो तीन अगर मैं कहूँ मामू हैं, तो वो उनमें सबसे फेवरेट आपके कौन है ये मैं पूछूं तो इसका जवाब आपका होगा कि तीनों हैं, या फिर कुछ ऐसा है कि एक सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं? ऐसे नहीं है, अलग चीज़ के लिए मैं अलग मामू के पास में जाती हूँ। जैसे? जैसे अगर मुझे हंसना है तो आई गो टू सोहेल मामू, बहुत जोक्स करते रहते हैं। अगर सीरियस सिचुएशन है, नहीं, जैसे वो जोक क्या होते हैं? वो सिचुएशनल होते हैं जोक तो वो है। और फिर अरबाज मामू एडवाइस देने में बहुत अच्छे हैं। ही इज़ वेरी वेल स्पोकन, बहुत आर्टिकुलेट है। तो वो जब भी कुछ किसी चीज़ में मुझे एडवाइस चाहिए तो मुझे पूछना भी नहीं पड़ता है, खुद कॉल आ जाता है उनसे। एंड सलमान मामू, वो it's good to be around him, क्योंकि वो याद दिलवाते हैं कि you need to be young at heart, and just like Palak had said कि वो बच्चे ही है अभी तक। तो sometimes उनके साथ रह के I feel like कि मैं और young हो गई हूँ। तो that's why when I go to him। तो अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, पहली फिल्म तो हो गई और वो जाहिर बात है उसमें पूरी ताकत लगी थी, पूरे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन अब वो फिल्म हो गई है। जी। अब इसके बाद का जो सफर है वो डगर जो है इतनी आसान नहीं है, जी। क्योंकि आप लोगों के ऊपर एक वो अलग सा प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, उससे निकलना है। तो अब जो नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट है, अभी क्या बातचीत चल रही है, नई फिल्म पे काम हो रहा है, या वो क्या प्रोजेक्ट है, कुछ अगर आप हमें बताना चाहें।
बता तो नहीं सकती हूँ, बट चीज़ें हो रहे हैं। फर्रे वॉज रिसीव्ड वेरी वेल, क्रिटिकली बहुत अक्लेम्ड थी, तो आ रहे धीरे धीरे, अभी देखते हैं। अच्छा, वो जो बेस्ट फीमेल डेब्यू जो आपका हुआ था, वो अवार्ड जब आपको मिला था, तो वो पल याद है आपको? वो कैसा अनुभव, वो कैसे एक्सपीरियंस? एक्चुअली उस मोमेंट में मैं बहुत नर्वस थी एंड बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि अहमदाबाद में, गांधीनगर में सॉरी, आई थिंक 30,000 पीपल वर देयर ऑन स्टेज, तो आई गॉट अ बिट नर्वस। तो वो पहला जो था वो याद नहीं है, पहला जो अवार्ड था, बट आई रिमेंबर द सेकेंड टाइम मैं ज़्यादा प्रिपेयर्ड थी, आई वॉज मोर पेशेंट, आई टुक द मोमेंट इन, तो या बट वो अनुभव बहुत ही, फर्स्ट टाइम वॉज अ बिट स्कैरी, धीरे 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 आदत लग रही है। बिल्कुल। और वेदांग रैना, आप कश्मीर से हैं, इतनी खूबसूरत जगह से है, कश्मीर के बारे में आप सुनते पढ़ते, आप गए तो नहीं हैं, मुंबई में रहे हैं सारे वक्त में, ऐसा सच है? ये ठीक बात है? हाँ जी, हाँ जी। तो मन होता है कश्मीर जाने का? कश्मीर के बारे में आज कल आप काफ़ी कुछ सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, इतना कुछ वहाँ पर हो रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कश्मीर से, तो मन कर रहा है आपका वहाँ जाने का? कुछ हाँ जी, कुछ वो जो सुनते हैं आप कश्मीर के बारे में, कुछ कहना चाहें अगर? ऑफ कोर्स, मेरे माता पिता तो कश्मीर में, वो दिल्ली से हैं एक्चुअली, लेकिन माय ग्रैंड पेरेंट्स, उनके एक्सपीरियंसेस मैं सुनता रहता हूँ कश्मीर के, तो मेरा बचपन से बहुत ही मन है जाने का, अपॉर्चुनिटी कभी मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इस साल एक्चुअली प्लान बन रहा था कि सम टाइम मे बी अप्रैल में यू नो द होल फैमिली विल गो, बट आई ऑलवेज हियर द बेस्ट थिंग्स अबाउट इट। और हम कश्मीरी लोग काफ़ी पैशनेट है अपने जगह के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, तो आई कीप हियरिंग स्टोरीज। भाषा आती है आपको? बहुत थोड़ी, बहुत कुछ एक अंश उसका अगर सुना पाए, ताकि वो जो कश्मीर में बैठे लोग आपको सुने कि हाँ, हमारा लड़का जो है वो इतना शानदार काम कर रहा है फिल्मों में। कैशुकरन, क्या चुकरान is how you doing or what are you doing, and म्यून नाव च वेदांग, that's my name is Vedang, and Orzu Dorkut, whoever knows that। तो वाजवान पसंद है आपको खूब? हाँ जी, of course, biggest fan of Kashmiri foods are Kashmiris। राजवीर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए धर्मेंद्र साहब का एक बर्थडे था, तो मैंने उनको बड़ा लंबा चौड़ा उनके साथ इंटरव्यू किया था, तो वो जब होते हैं मंच पे तो एक माहौल सा बनता है, इतना लंबा उनका काम रहा है, इतना बेहतरीन उन्होंने काम किया है, इतना प्यार उनको लोगों से मिलता है, और उनका एक अंदाज है। लेकिन अगर मैं सनी जी की बात करूं तो बहुत शाय हैं वो, आपके ब्रदर को भी मैंने देखा है और अब आपको भी देख रहा हूं। बॉबी की अगर हम बात करें तो वो आपके चाचू हैं, उनका वो पिता से मिलता मिलता है सब कुछ, लेकिन ये आप तीनों जो हैं वो बिल्कुल अलग लगते हैं दोनों से, इसका क्या कारण है? I think we have talked to a therapist about that. I don't have a proper. I have no clue. We just shy people. तो जब आप दादू के साथ होते हैं अपने, तो वो तो आपको कहते होंगे कि थोड़ा कुछ बोला करो, थोड़ा हंसा करो, थोड़ा सा वो जो उनका अंदाज है, कुछ बोलते हैं, छेड़ते हैं आपको? He likes when I crack jokes, make him laugh. That's about it. पलक, अब आगे क्या होने जा रहा है? अब नियर फ्यूचर में क्या करने वाली हैं अभी आप? आगे सर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जो मेरी फिल्म आ रही है कि वो लोग देखें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों को देखने मिले कि एक ऐसी चीज़ जिसको लेके मैं बहुत प्राउड हूँ, जिसको लेके मैं जानती हूँ कि हाँ, इसमें मुझे लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है, जो मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, पर हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोग उसको देखें, मुझे पता चले कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, और उसके बाद फिर तो मुझे बहुत अलग अलग प्रकार की फिल्में करनी है, मुझे हर जॉनर ट्राई करना है, और होपफुली मुझे ये मौका भी मिलेगा, और मुझे लोगों का बहुत सारा प्यार चोरी करना है, ऐसे छोटू। वो प्यार तो आपको मिल भी रहा है। जल्दी से मैं छोटे आंसर्स चाहूंगा आपसे, और फिर वेदांग, हमने आपका गाना भी सुनना है बिल्कुल आखिर में, मैं भूला नहीं हूँ, बिल्कुल याद है मुझे। आप ये बताइए कि अगर आप एक्ट्रेस ना बनती या ना होती आप एक्ट्रेस, तो क्या बनती उसके अलावा? हाँ, डायरेक्टर बनती। तो ये है तमन्ना दिल में कि एक दिन मैं कोई फिल्म डायरेक्ट करूंगी, हीरो सलमान खान होंगे उसमें? जी बिल्कुल। वेदांग? हाँ जी, सिंगर होते आपने तो बता ही दिया। या सिंगर, बिकॉज मेरा, आई वुडंट से माय करियर, बट स्कूल और कॉलेज में मैंने बहुत गाना गाया है। हाँ। और गिटार बजाया। ठीक, हम सुनेंगे आपसे। राजवीर, आप बताइए, आप तो खैर पूरी फैमिली एक्टिंग में है, तो क्या
अगर एक्टर ना बनते, कुछ और शौक है आपको, कुछ और भी बन सकते थे आप? Something in the gaming industry, probably. Gaming development or something. पलक आप? मैं आपको बस सच बोल रही हूँ, इसके आगे पूछना मत, क्योंकि आपने छोटा छोटा बोला कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं बोल रही हूँ मुझे और कुछ नहीं आता, हो गया जल्दी से बोलिए। तो बिल्कुल मतलब एक्ट्रेस। बस और कुछ नहीं आता। चलिए अब आखिर में आप चाहेंगे कि वेदांग हमारे लिए कुछ 2 लाइन गा दें? मतलब आपने एक बार जरा दिया। जोरदार ताली बजा दीजिए ताकि वो माहौल बने, वो गा दें। वेदांग प्लीज, देखिए अब तो आपको गाना होगा। प्रेशर का माहौल बना दिया आपने। हाँ तो चलिए गाइए। अच्छा ठीक है, 2 लाइनें गाऊंगा। आई विल ट्राई। मैंने कुछ, हाँ चलो ठीक है, लेट मी जस्ट। एक गाना है लाल इश्क। हाँ तुझे संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा। बस। बहुत ही शानदार, जोरदार तालियां आप सबकी एलिजे, वेदांग, राजवीर, पलक, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। आप बहुत अच्छा करें, नाम करें, अपने जो परिवार के लोग हैं उनका खूब नाम बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया यहां हमारे साथ मंच में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Very engaging and heartwarming conversation. Ladies and gentlemen, and with that, let's now shift focus to Bharat's economy. There's always something special about generational change. Now, with that, we've of course ended this session, but let's talk about the economy. If sustained economic growth is India's ambition, inclusive growth is Bharat's purpose. Welfare economics, education, health, employability will all have to sink in to cast the net growth to the widest possible range. Please welcome Dr. Shuchin Bajaj, Founder Director, Ujala Cygnus Healthcare. Vineet Rai, Founder and Chairman, Avishkar Group. Ashish Dhawan, Founder Trustee, Ashoka University. And Neera Nandi, Co-Founder, Dasra India, for a session on the Inclusion Club, inching away from inequality, in conversation with Shireen Bhan. Ladies and gentlemen, please welcome our esteemed panelists with a huge round of applause. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen. And the pressures on this panel now to outdo what we just saw, those star performers enthralling the audience here with what they intend to do. But since we are talking about the future, we're going to talk about an inclusive future for India. So much of the conversation over yesterday and today has been about the growth of India, the rise of the Indian economy. But all of this is meaningless unless growth is inclusive, unless growth is equitable. And my panel here today is going to discuss exactly that, what the roadmap ahead looks like in terms of being able to bridge some of the major inequalities that we continue to see in the country, whether we talk about the gaps in healthcare, we talk about the gaps in education. All of those are gaps that require innovative solutions, innovative thinking. Is there a road for private capital and for private enterprise to bridge some of these inequities? Let's just put some numbers on the table before I get my panel to comment. And Neera Nandi is here representing Dasra. Dasra has just put out a report, as it does every year, to talk about what is happening with corporate social responsibility spends. Remember, it is mandatory for companies to allocate 2% of their profit towards corporate social responsibility. So Dasra tracks what's happening on that front and also tracks what's happening as far as the use of philanthropic capital is concerned. But the bulk of the spending on the social sector continues to be done by the government. So if you take a look at the data, approximately 23 lakh crores, that's about 8.3% of GDP, is what the government is spending as far as the social sector is concerned. But it is still well below the asking rate. The Niti Aayog believes that the gap still is almost 5% between where we need to be and where we are today in terms of social sector spending. So what role can the private sector play? Neera, let me come to you with that. You've just put out the Dasra report, and while there has been progress, both in terms of being able to raise philanthropic capital as well as CSR spending, FY23, the number stands at what? CSR 23,000 crores. What more needs to be done? What's the positive change that we've seen, but what do you believe needs to be done going forward?
So probably we need to do a lot more. If you really look at India, culturally we give a lot, but there isn't much infrastructure to support that giving. So CSR, yes, gives a lot, but what our report also talks about is how powerful family philanthropy is, retail philanthropy is, and in fact that giving can take a lot more risk and can be more innovative. So a big part of what we've been trying to do is, can you take some of that innovation and link it with government systems, because as you rightly said, they're one of the biggest, deepest pockets, and if you can't work through government systems like health and education, a majority of the population isn't going to reach there. So what we saw this year was that more CSR giving, that increase came from companies actually meeting the mandate rather than there actually being growth. But in family philanthropy, interestingly enough, it was the affluent givers, so professionals, folks who have jobs, who are giving far more of their net worth than even the ultra high net worth. And first generation wealth creators doing more of the giving. Yes, and they're giving a lot more. Well, they have liquidity events, right? So once these liquidity events happen, we call them the now generation. So the now givers are putting quite a lot of money, like the Kamath brothers, Rain Matter, putting into, or even having Ashish here, really putting money into foundations in climate and other kinds of issues that aren't always the traditional health, but more at an intersection. So you're seeing these now generation givers, you're seeing intergenerational, kind of like the panel we had before, next generation is actually wanting to do a lot more in philanthropy and thinking about how they can be more strategic. And I think what's very exciting, and you'll agree with me, Shireen, is that we're seeing women-led philanthropy actually really move the needle, and if we can really get women to do more and be more of the decision makers. So they don't necessarily create the wealth as much, but they're actually leaning into doing that philanthropy. And our Giving Pie network, which has about 300 families now, collectively giving 1,000 crores to India, 70% of these families are actually women-led, as in they're the ones engaged in the philanthropy. So if I were to ask you, Neera, for one thing that you believe we need to prioritize, both from a private sector perspective, but also from the government's perspective, to create a much more enabling, facilitative environment to encourage more giving. I think we have to have some incentives, right? So I think... Incentives to give more? Yeah, like tax incentives. I think it can help. And I think, you know, we need to be able to do that, and we need to have more visibility and transparency. So if the government can mandate and we know where giving is going, then we're able to enable that. So I think just having more players and strengthening that ecosystem, I think, will really help. Okay, Ashish, I want to come to you now. Yes, go ahead. I just wanted to add a small thing on the giving. I think the incentive that would really help is being able to contribute shares. Because often people take their company public. If you donate shares to a foundation or a charity, it has to be liquidated within a year. So I would advocate that, you know, maybe give 5 years for a longer period of time. That'll then enable people to sort of tax-free give their equity, which is the way it happens Does globally. anyone really want to part with equity for foundational purposes or for giving purposes, Ashish? No, you'd rather, I think it's easier sometimes to give away small amounts of equity than to give away Money? cash. Yeah. That's easier, notionally. And two is, if you're getting it pre-tax, you know, giving away your equity before it crystallizes into a capital gain, that makes it easier. Yeah, you know, so that's one idea that you've put on the table to create a more facilitative environment to encourage giving. But since you did pick up the mic, let me continue that conversation with you, Ashish. And I want to talk about one of the big spaces that requires innovative solutions, innovative thinking, and a lot of capital from the private sector as well. A space that you're deeply involved and engaged with, education. What more do you believe needs to be done, not just at the level of primary education, but more so at the level of higher education, creating universities that people have access to, affordable educational facilities that people have access to? How do we create more Ashoka universities for the country? So Ashoka is a non-profit, and I can talk about that model later. But I think if we really want quality universities to grow, I think first thing is, I would say let's advocate to allow for-profit. You know, right now it's not for-profit, and then people find a way to take money out through an infra company, content company, etc. Let's make it legit for universities. So destigmatize the idea of for-profit for education. Absolutely. And especially for higher education, it's a no-brainer. I mean, you've seen it in the case of Brazil. There are higher education companies that have more than 1 million students. You know, they've scaled up the university system. So that's one.
Two is, I think we need a better quality marker. NIRF is not enough. I think universities should be forced to disclose their placement data, the acceptance data, all the data about the students they get in and the graduation, the outcomes, because often that's the basis on which parents will make decisions. We've seen it with engineering colleges. The worst ones had to shut down. So for the market to work well, you can't have information asymmetry. So that's a second one. And I think a third one for more research universities like Ashoka, we just need more collaborative platforms. I don't think anybody can do it alone. Some people can, like the Ambanis or Shiv Nadar. But I think more collaborative platforms come together. And I'm seeing that happen. We'll have 40, 50 Ashoka-type universities in the next decade. In the next decade, 40, 50 Ashoka-type universities? I think so. Well, that does deserve a round of applause because it is a huge supply mismatch at this point in time, and we're seeing Indian students actually having to go outside of India to be able to access quality education, higher education. Vineet Rai, you've been doing this for over 2 decades now. The idea of bridging some of these inequities, assets under management across the Avishkar group of what, about 8,000 crores plus at this point in time. Where do you believe the problem still lies? What do you believe needs to be done to really unleash entrepreneurship for the development sector? So let me actually just phrase, 2030 is just a few years away. Sustainable Development Goals came into being 2015. A world without hunger, poverty, inequity. Brilliant thought process. It's never happened since the time Homo sapiens walking straight. So great vision from the countries. Now, to make it happen, you require $2.5 trillion a year investment for the last 15 years. We lost everything during COVID. So India itself requires close to $1 trillion investment. Close to $1 trillion investment in case we have to change. Total impact investing, despite all our struggle, everything impact investing was born in this country. This country remains the model. I think we are talking about few hundred billions. That's where we have reached. Globally, impact investing is close to $1 trillion. I think what we have done very well in impact investing is we have convinced at least the foreigners that there is something called impact investing, and they have started allocating large amounts of capital. We are still struggling to convince Indians to participate in the venture industry. Impact investing is going to be a step from there. The good thing that has happened in India is that venture industry and impact investing has actually come together, partly because some of the largest enterprises are going to happen in agriculture, water, health, education, financial inclusion. And that's exactly where the new ideas and new innovation. I'm coming from startup Makum, and the amount of people who, the footfall that we saw in agri-tech was seen to be believed, actually, where you have AI, SaaS, and gaming competing against agri-tech for footfall. So. Well, that certainly is impact. We will have to see how this actually plays itself out. But you're right that we do have startups now focusing on India's specific problems and trying to look for Indian ways of being able to address some of those, including what you've been able to do, Shuchin, with your chain of hospitals. Now, explain to me what you've done differently so that you can make quality private healthcare accessible and affordable, and how do we scale that model? Thank you, Shirin. As we sit here speaking about billions and trillions of dollars, and we were together at an event recently at Davos where the head of a large multinational bank actually mixed up her billions and trillions and said, no, I don't really meant trillion, I meant billion. Oh, no, it was trillions. So when we sit here speaking of that, a silent majority seems to slip through all safety nets. In India, we are speaking about more than 500 million people who have no access to emergency, tertiary, quality healthcare. And in healthcare, the issue is that the inequalities are not just because of the financial reasons that we speak of at these panels, right? The inequalities go way beyond that. Geographical reasons are one of the top reasons, right? Metropolitan cities, the 9 metros of India have a population of what, around 12, 13 crores. If we take the state capitals as well, another 20 crores. So more than 100 crores are staying out of these cities, and they have less than 5% of all super specialty healthcare available. So even if you are a 100 crore net worth individual in a small town like Sitarganj where we work, if you have a heart attack and we were not there at that moment of time, there's no saving you. Those 100 crores cannot save you.
So we understand that the real need is in these small towns, but also poor physical outcomes are just a small part of the outcomes in all. Poor financial outcomes are real, and they are there for everybody to see. More than 40% of all Indians, and it is difficult to understand sitting in this hall, more than 40% of all Indians have to either borrow or sell some asset just to be able every to hospitalization. Yeah. Every time they're hospitalized, they will borrow. And more than 25% of them slip below the poverty line at each hospitalization. That is more than 6 crore people every year. Yeah. So providing low cost, high quality healthcare is something that we have excelled in. We have now 22 of these hospitals. The setup costs are low. We apply the Pareto principle ruthlessly. We understand that at 20% cost, we can deliver 80% of the infrastructure, 80% of the outcomes, 80% of whatever is needed in that healthcare region. So this is what we've been doing. And I think it is real. I think it's very doable. We've proved it to the world. We've proven the model. Yes, 22 hospitals up and running across India, across North India. At this point in time, Ashish said 40 to 50 Ashoka universities over the next 10 decades. How many hospitals are you going to be setting up over the next decade? Yeah, we shouldn't be less than Ashish. So 50 is the number we should go with as well. Okay, but you know, we're talking about safety nets. And Neera, I want to get you to come in on that as well. But just a quick point from you, Suchin, before I get Neera back in. Since we're talking about safety nets and we are talking about what the government can do, Ayushman Bharat, for instance, marquee scheme of the government, it is up for review. Vinod Paul committee has been set up by the government to review the Ayushman Bharat scheme. What do you believe needs to be done to recalibrate it, if at all, today? You know, people question the reimbursement rates, for instance. What do you think can be done to make it more robust? Shirin, you know, we've been the champions of Ayushman Bharat ever since it was launched. We did the first cardiac procedure in the country under Ayushman. The first angioplasty was done at our hospitals. Out of the first 10 hospitals recognized and rewarded by the government, 4 were ours. Unfortunately, the issue still remains, as in all PPP partnerships. This is a PPP partnership, right? The government is always wary and suspicious of the private healthcare or the private providers. The private providers are always wary that the government, does it really mean what it's saying on the big diocese? Payments are delayed due to those suspicions only. There's lots of issues between the rates that the private healthcare expects and the rates that the government wants to give. Even if we are ready to work at these rates, it's a very low margin, high volume business. So, but if you're earning less than 10% margins on those low rates, if the payments come in a year later, then you cannot, you know, hope to earn any money out of it. And that is why hospitals stop these services off and on. So like, for example, in Haryana, all private hospitals stopped Ayushman services for a couple of days because their payments had been due for more than 1.5, 2 years. So if they can, you know, they've announced the green channel, but if they can implement it on the ground, Neera, you know, just on the point of PPP and models that have worked, but as Suchin was also pointing out, gaps, execution gaps remain. And to Ashish's point about collaboration, you know, of the 23,000 in FY23 of CSR money and that available pool of capital, everyone wants to do a little bit of education, everyone wants to do a little bit of healthcare, but how do you get education or healthcare at scale using that capital through the power of collaboration? So in fact, in our report, we talk quite a lot about we're seeing an increase in collaboration and having more pooled funds alongside with government could accelerate a little bit more innovation. But the challenge, Shireen, is not about is it education or is it health. For example, 12 years we've been running a collaborative for adolescent girls. You can't just chop her into pieces and be like, here's education, here's health. You have to work on sort of outcomes that might be keeping her in school, making sure she's not getting pregnant, not getting married, and, you know, is employability, which brings me to, we can have as many hospitals and education and even businesses, but our biggest challenge is actually smoothing this income for a bulk of the country, right? Income is just so choppy that if there's some way to smooth that with policies, with schemes, with additional support, because then you're going to get really that engine for our economic growth. And the biggest challenge, honestly, that we've seen is for girls and women and the most vulnerable. So they often get invisible. They often don't get reached out to. And that's where philanthropy plays a role. And that's where collaboratives with philanthropy and pooled capital needs to go to the aspirational districts. It needs to go to the most vulnerable because they need products and services to be subsidized ultimately. Yeah, Ashish, you know,
the Niti Aayog and Amitabh Kant set up that 100 aspirational districts with a clear focus of being able to try and address the vulnerable. But outside of that, if I were to ask you to prioritize, and we were just talking about this, prioritizing growth, but more importantly, equitable growth, job creating growth, what is it that you would like to see now in terms of policy changes, policy interventions? Yeah, so I think at the end of the day, whatever philanthropy does will be very small. The state needs to come up with policies and crowd in private capital to make it happen. And we need to focus on labor-intensive growth. We need to prioritize sectors where lots of jobs get created. So I would say a few things. One is the investment to GDP has already gone up, public investment. It needs to go up further because we need much better infrastructure in order to be competitive from a manufacturing standpoint. Two is we need more industrial incentive. We have PLI, which is a good start. I think we need an ELI, employment-linked incentive, particularly for, and we need to pick sectors like garments, like woodwork, furniture making, toys, all the labor-intensive sectors which create lots of jobs and provide the right set of incentives for people to kickstart companies in those areas and to grow them. Third is we need an exports mission because China captured anywhere from 30 to 50% global market share in all labor-intensive manufacturing from an export standpoint. This is a golden opportunity for India because China is blacklisted now, and this will yield huge results in terms of job creation. So my focus would be more on how does one accelerate growth, but accelerate growth in a manner that's actually creates lots of jobs, because that's ultimately the way out of poverty. It's ultimately the way to reduce the Gini index as well, and so therefore reduce inequity. So not just PLI, but an ELI as well, and that's of course been on the table. Let's see whether the government moves forward. Yeah, Neera. I want to make a plug, Shireen, for the care economy. I think it can create jobs and it can really, really help women. No, you have my vote on that already. We need much more of the care economy, and that will unlock the potential for women to participate in the economy across the formal as well as the informal sector. But Vineet, you know, I want to talk to you about one of the big ideas that you've of course also been involved with, the social stock exchange, and India has seen the first listing on the social stock exchange. You know, take me through what you hope this will do for some of these issues that we've spoken about and for the idea behind impact investors and impact investing. So I think social stock exchange is more on the philanthropy side. So while I was one of the architects, but it's actually worked more for Neera than for me. Having said that, I think what it does is brings the more important parts of transparency and regulation and allowing people or encouraging people to do more philanthropy. I think for social stock exchange, while CSR and other things are already there, maybe we should actually allow temples to invest. And I know there is actually, the amount of money that is lying in the temples is actually worthy to go through social stock exchange into the projects that's listed. So Neera, for you, please do look at it. I am very sure the current government is actually thinking on that line, so do not forget that. Thinking of being able to monetize what's lying with temples? Yeah, and it's actually global. I have actually gone to Vatican and tried to take money out of them. I realize they don't have much money, but so I've tried everything. But Indian temples are very important. So I think we should use the money productively because the amount of hundi that they receive is significant and make a big difference, probably more than what we do on the CSR. But if you have to look on the equalization side, on the commercial side, then like carbon credits, where you are pretty much actually trading the arbitrage for growing trees, I think we need to evolve an impact coin. This is actually to address Suchin's. See, there's no way I will do a startup in Samastipur in Bihar, which I have done, unfortunately. I will generate a 25% dollar IRR and compete with Rajan Anandan of Peak 15. It's not going to happen. Unfortunately, whatever I do, as an impact investor, I'll do all stupid things. But when I go to the LP, they ask the same returns. Yeah. Now, you don't need to be a rocket scientist to understand Samastipur will always be far behind an IIT graduate in Delhi. Or gaming, a guy in gaming will actually win against a warehousing company. So an impact coin could actually work for Sachin, work for me, to push capital to generate returns and then get compensated. And that can come from the government. So impact coin is actually the way for the government to think about in creating an equalization
for those places where there is going to be a struggle to create value. Well, we've got three concrete ideas. Ashish, Vineet, and Neera putting three concrete ideas for the next government to consider. Shuchin, what are you putting down on that list for the next government to consider? Yeah, I think I agree that we need to add another P to the PPP. So it's public-private philanthropy partnerships that we need to make instead of just the public-private partnerships. I think for healthcare and education both, I think it's naive for us to think that the government can just step back and allow the private industry to... No, it cannot, because it continues cannot, to do the bulk of this heavy lifting. Absolutely, and the government needs to play a very active part. We've been hearing promises of increased GDP spend on healthcare. We need to see that in action now. I think for the next 5 years, we need to make very sure. We need to incentivize doctors and providers to go into these aspirational districts, go out of the cosmopolitan cities to set up healthcare facilities. And we need to make sure that we stress on urbanization enough. See, because just having the hospital there does not really cut it. The doctor has reached the super specialist stage. He's a cardiologist because he studied all his life. He did very well in school. So she needs a good school to be there for her children to study. She needs a level of urbanization to relax after work. So all of that has to be pushed across all of these districts to make sure that healthcare goes there as well. You know, Ashish, I'm going to start by asking each one of you for your wrap-up comments, and I'll start with you, Ashish. You know, the one thing that gives you the most hope at this point in time in being able to address and bridge some of these inequities over the next 10, 20, 30 years, and the one thing that you individually, through the various things that you're doing, through Central Square, through Ashoka, and so on and so forth, the one thing that excites you the most? Yeah, I would say what excites me from a country standpoint is that we are on a very solid growth trajectory the next 25 years. I think the real question is, how do we create more jobs? So how do we make sure it's labor-intensive growth? Because that will reduce equity while we accelerate growth. How do we get more investment? How does India's share of export in the world go up dramatically? And how do we move up the value chain? Now, in terms of me personally, my passion really is to build more institutions that really work on these issues alongside government, on policy and policy implementation as well. But what's been the biggest learning? Institution building is hard work, Ashish. What has been the biggest learning on this journey that you would like to share with us and anyone else who's considering institution building? I think the biggest learning has been, one is partner with others. Neera was also referring to it. It's much better to do it with others than just doing it alone. And two is, government is the main actor. And so one has to work with government. And three is just be innovative. There are new solutions, there are new ways of working. So being innovative, being outcome-oriented is something that we bring from the private sector. Vineet, so, you know, what's the thing that you're most excited about? And what's the future as far as the Avishkar group is concerned? What's driving you today? So we are at around 14,000 crores, hopefully to 1 lakh crores by 2030. I actually didn't take into my calculation the COVID. I went from 5,000 rupees to 100 crores in first 10 years, 150 million, so roughly 1,000 crores in the first 10 years, 1,000 to around 9,000 in the second 10 years. And we said, okay, we'll continue on the same growth, so 1 lakh crore. Then COVID came, so we have slowed down quite. But I think I'm very excited about government thinking differently. I'm very excited about they actually talking about fund of funds. That's a good idea for them to have less control, yet have control. And allow 1,000 other people to more efficiently deploy their capital. So I think I would want to see, if the new government comes in, whichever government comes in, to actually announce different kinds of funds of fund, which are 1 lakh crores and not 10,000 crores. I am fairly famous as a beggar both in Europe and US. I do not mind becoming famous here for fundraising. But till 2017, I raised zero in India. In last 5-7 years, I've raised significant amount of capital in India. I think what has been surprising is the global fund of fund capital now is thinking about raising money in India, which is a big surprise. So that means there is a lot of capital here, which is curious and wants to participate. And government, being one of the bigger mobilizer of capital, should actually continue to be working on the fund of fund path. So fund of funds and a whole host of fund of funds with a significantly higher outlay. Shuchin, what is the future? What makes you the most excited? What gives you hope and confidence?
I truly believe this is India's century, and with the government's focus on healthcare, I think it's organizations like us that are at the really sweet spot, right? The focus on medical colleges, nursing colleges ensures that the supply side of healthcare will be adequately addressed for us. We will have enough doctors coming out to make sure that they don't just stay in the big cities, they come out to the smaller towns. And the focus on insurance, on making sure that out-of-pocket spends reduce, because we have to realize that in India, healthcare is not just under-accessed, it is underserved as well, right? The Lancet Commission for Global Surgery said that an LMIC country like ours should have about 5,000 surgeries per 100,000 population per year. And this number can go as high as 23,000 in countries where out-of-pocket spend is negligible and awareness is very high, like the Scandinavian countries. But if you see in India how many surgeries happened last year, is just about 2.5 crores. So that's just 2,000 per 100,000 population. Where are the rest of the 3,000 people? They're not getting the surgery at all because they don't have enough money or they are not aware. That is why all these Guinness Book of Records come out of India, right? The doctor is standing with the poor girl and they're both very happy. Oh, we removed this 20-kilo tumor. Look at this. This is so nice. But that tumor should have been removed 20 years ago when it was like a 500-gram tumor, right? So this is increasing access and we are getting more patients coming into the hospital. So I think organizations like us are at the real sweet spot and it will be a good time for everyone. Neera, I promised you the first and the last word, so we're going to end with you. What gives you hope and what keeps you excited today? Really special by being able to give the last word, because I actually believe, and we'll all agree, that it is our young people that give us hope, right? Their aspirations and how they really want to see a transformed India. I think we have a collective responsibility to have them achieve those dreams and aspirations, and I think we can in our country. I think our biggest challenge, honestly, is patriarchy. If we could actually break this patriarchy. Yes, that does deserve a round of applause. But we're also collectively responsible for perpetuating this. But one of our biggest initiatives right now is investing in and really trying to transform women in leadership. And it's women in leadership in business, philanthropy, development, you know, across the board. But we all have to come on in this together. We all have to come on this together, and each of you have very carefully articulated what the road ahead looks like. It requires all stakeholders to be at the table, and it requires all of us to collectively put our hands together to ensure that we bridge some of these very crucial gaps and inequities. Ladies and gentlemen, a big round of applause to this panel talking about creating an equitable future for India. Appreciate your time and appreciate your insights. Thank you very much for joining us today. Thank you to our esteemed panelists and Shireen for that very insightful discussion. Now, ladies and gentlemen, as you are aware, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji will be gracing us with his presence today in the evening. That's why we sincerely request you to please cooperate with the security protocol. As we all know, this is a standard drill, keeping in mind Prime Minister Narendra Modi's security protocol. And of course, as we've already seen, the past 2 days have been very eventful because we've had a lineup of sessions which span over various fields, from sports to politics, even entertainment, international affairs also. Do not forget that we also have former NSA of the United States, Mr. Mike Pompeo, also joining us later in the evening. It's been an eventful day today, one that will also culminate with the Honorable Prime Minister's note today. And we do hope that you've been having a good time. There's just one request. Please remain seated, those who are already inside the hall, and do cooperate with the security staff. Now, ladies and gentlemen, our next session is with the quintessential Delhi boy who has made it count in the competitive film world. He began his career as a fashion model, but left it to pursue acting. He took on roles in television before essaying his first lead role in the teen film of 2012, Student of the Year. Over the years, he has showcased his powerful versatility as an actor across genres and roles from romance to comedy to war to thriller, even to drama.
He has starred in such commercially successful films, which are also romantic comedies like Hasi To Fasi, the thriller Ek Villain, and the drama Kapoor and Sons, war movie Sher Shah, and the action thriller series Indian Police Force. Ladies and gentlemen, please welcome Siddharth Malhotra for a session, Masala or Offbeat, scripting a new story in conversation with Kishore Rajmani. The stage is all yours. Ladies and gentlemen, please welcome the very handsome, very talented Siddharth Malhotra. Welcome, Siddharth. Thank you. आपको जब very handsome बोलते हैं तो अच्छा लगता है या लगता है कि और भी आपने talented बोल दिया तो फिर अच्छा लगता है. हाँ. But I think it's बिल्कुल it's not bad to be easy on the eyes जब आप पर्दे पे होते हैं. हमने भी जब बचपन से सारे एक्टर्स देखे हैं तो हम उनको एक खूबसूरत अंदाज में larger than life अंदाज में देखते हैं. तो I think बचपन से ही चीज दिल्ली का हर लड़का पहले तो ये होता है ना कि हमारे यहाँ पे यार ए हीरो इधर आ, ए हीरो उधर आ. तो आई थिंक मेरे केस में वो लकीली सच हो गया कि वो दिल्ली का लड़का या दिल्ली का लौंडा जो कि हम अभी अपने रिसेंट शो में कहते हैं वो हीरो बन गया. तो आप ये दिल्ली की बात करते हैं, कौन सी वाली दिल्ली? दिल्ली में बहुत सारी दिल्लियां हैं, आप कौन सी दिल्ली के हैं? जी मैं साउथ दिल्ली से हूँ. अच्छा हाँ, तो वो तो आप तो फिर वो थोड़ी नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है. मेरे दादू इंडियन आर्मी में से थे तो हम लोग उस फोर्सेस बैकग्राउंड से ही पले बढ़े वहाँ पे. तभी आजकल आप ये सब कर रहे हैं, गन फाइटिंग वगैरह. जी आई थिंक यूनिफॉर्म की अगर आप बात करें तो वो मेरे लिए एक पर्सनल अटैचमेंट भी हो या आई थिंक इन रीसेंट टाइम जैसे शेरशाह पिक्चर आई थी उसमें जो किरदार निभाने का मुझे मौका मिला उससे पर्सनली काफ़ी अटैच था मैं. आई थिंक फॉर श्योर दैट मेरे जो दादू थे उन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया. मेरे काफ़ी जो रिश्तेदार भी हैं वो हालांकि तो अभी रिटायर्ड हो गए पर वो भी सर्विस में थे. हम नहीं जा पाए तो इट इज़ जो अपनी मन की इच्छा थी, जो घर की इच्छा थी वो हम पूरी कर रहे हैं रियल लाइफ हीरोज़ की कहानियाँ वहाँ दर्शा के. तो आई थिंक ये भी एक छोटा सा योगदान है बिकॉज एज एनी ऑर्डिनरी सिटीज़न शायद हमें रोज़ पता नहीं होता कि यार इस वक्त भी जैसा कि उन्होंने अभी सिक्योरिटी की बात करी या आप सरहद पे हो या आप देश के बाहर भी हो 24 घंटे लोग काम कर रहे हैं आपको सुरक्षित रखने के लिए. तो अगर हम उस पर अगर उन पर एक मीडियम बन जाए आपको दिखाने के लिए कि वो कितनी खूबसूरती से या कितनी बहादुरी से वो अपना काम करते हैं तो आई थिंक वो एक हमारा एक योगदान है क्योंकि वो भी बताना बहुत ज़रूरी है. एक किस्म की लोग उसको अप्रिशिएट तभी करेंगे जब लोगों को जानकारी होगी कि यार एक ऐसा मिशन हुआ था यार. कैप्टन विक्रम बत्रा जैसा एक फ़ौजी था या मिशन मजनू में हमने एक जो इंडिया का फर्स्ट कोवर्ट ऑपरेशन किया था अबाउट द न्यूक्लियर पावर दैट आवर नेबरिंग कंट्री वाज डूइंग. सो आई थिंक ये चीज़ें अगर आप कभी दर्शाओगे नहीं पर्दे पे तो दिखता नहीं. और आई एम मोस्ट एक्साइटेड व्हेन आई रीड सच थिंग्स ऑन द स्क्रिप्ट कि यार ये सच भी है और इतना हीरोइक भी है और उसको बनाते हैं करते हैं. तो ये तो इट्स बीन 12 years सिंस स्टूडेंट ऑफ द ईयर. जी. तो ये 12 साल बाद आप ये सब चूज कर सकते हैं. जी. लेकिन उस 12 साल पहले भी तो कुछ स्ट्रगल रहा हुआ तो होगा ना. ये बार बार जो लोग कहते हैं कि आप आउटसाइडर हैं और आप फिल्म इंडस्ट्री में चले गए. बहुत सारे लोगों के ऐसे सपने होते हैं लेकिन सपने पूरे सिर्फ 2-3 लोगों के होते हैं. एक अमिताभ बच्चन के हुए, एक शाहरुख खान के हुए, एक आपके हुए जो आउटसाइडर होकर बाहर पहुंच गए वहाँ पे. जी बिल्कुल. वो सफ़र बहुत ही उस सफ़र में काफ़ी सफरिंग थी. इतना भी आसान नहीं था. मैं तकरीबन 20-21 साल का था जब मैंने दिल्ली में एक एजेंसी के कहने पे ऑडिशन दिया. एजेंसी मतलब हाँ एक मॉडलिंग एजेंसी कह लो आप या जो एजेंसीज एक्टर्स को भी ऑडिशन देकर आगे फॉरवर्ड करती है. उन्होंने आपको कहाँ देखा? उन्होंने एक्चुअली मेरी एक तस्वीर देखी थी उन्होंने पेपर में जब हम फैशन मॉडलिंग के वॉक्स करते थे. अच्छा. तो वो फोटोज आती थी डिज़ाइनर कपड़ों में चेहरा आता था. फिर एक पहला मैंने ऐड किया था एक मोबाइल फ़ोन के लिए. कौन सा मोबाइल फ़ोन था? वो एक्चुअली सैमसंग के एक कैंपेन चल रहा था उस टाइम पे. अच्छा. और उनको एक लड़का और एक लड़की चाहिए थे एक्सप्रेशन के लिए. वो मेरा पहला पे चेक था सम आई थिंक 2,500-3,000 रुपीज़. उसमें तो वो मोबाइल फ़ोन भी नहीं आता होगा. हाँ उसमें वो भी नहीं आता था. करेक्ट. हमारा उस वक्त हमारा वक्त सिर्फ इतना ही उसकी कीमत थी. तो उस सफ़र से लेके आज अब तो काफ़ी साल हो गए. वो तब मैं 18-19 एजेंसी ने फोटो देखी. जी. एंड देन द एजेंसी कॉन्टैक्टेड यू. जी. तो वहाँ से एजेंसी के बाद जब
एक प्रोड्यूसर साहब थे, एक डायरेक्टर साहब थे जिनको पसंद आई वहाँ पे, अनुभव सिन्हा जी, जिन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग काम भी किया है और पिक्चरें बना चुके हैं। उस वक्त एड लैब्स के साथ कोशिश कर रहे थे कि वो नए लड़कों को लॉन्च करें। अब इत्तेफाकन है कि वहाँ पे आप ऑडिशन देते हो या हर किसी फील्ड में भी आप जब प्रेप करते हो किसी चीज़ के लिए, हमने 1 साल लगाया वहाँ पे। मैं मुंबई गया। 1 साल? जी जी। आप अनुभव सिन्हा के कहने पर बॉम्बे गए? आप जी बिल्कुल के कहने पे नहीं गए थे? नहीं बिल्कुल नहीं। वो तो बहुत देर आया मेरी जिंदगी में। वहाँ पे मैं उनकी तरफ वहाँ पे गया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो अनुभव सिन्हा ने आपको बुलाया और 1 साल आपसे? 1 साल हमने ट्रेनिंग करी एक पिक्चर के लिए कि यार एक्शन ट्रेनिंग हो जाए, या आप अपनी लाइंस करते हैं या कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, स्क्रिप्ट के बारे में बातें करते हैं, आप प्रेप करते हैं उसके लिए कि शूटिंग शुरू होने वाली। और अचानक से हमें पता चलता है कि उनके पास एक चीज़ कमिटमेंट है, बेहतरीन कमिटमेंट है, जो कि पिक्चर डिले हो गई है या शायद ना हो या कोई और डायरेक्ट करे उसको। मतलब शूटिंग शुरू होने वाली हो ही नहीं? जी, हुई नहीं। तो ऐसी बहुत पिक्चरें होती हैं, तो मैं भी उनमें से था। मैं 21 तब कम से कम मैं 22 साल का हो गया था और बम्बई में था तब। और तब जब आप बॉम्बे में होते हो और आप दिल्ली में बोल के आते हो कि मैं तो हीरो बन गया हूँ और जा रहा हूँ हीरो बनने, तो फिर यहाँ क्या बताया आपने कि शूटिंग? यहाँ पे बस यही बोला कि शूटिंग शुरू होनी। घर में एक्चुअली मैं घर वालों को तब कुछ बताता ही नहीं था इतना, कि बस बोल रहा था हाँ बस 6 महीना और उस 6 महीने में जो आई थिंक मेरी बेस्ट ट्रेनिंग रही है पर्सनैलिटी की, क्योंकि जब आप कम्प्लीटली लॉस्ट होते हो, व्हेन यू हैव जेन्युइनली नो प्रैक्टिकल वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, आप उस डेस्परेशन में कुछ इंटरेस्टिंग करते हो। जैसे मुझे याद है एक रिक्शा राइड थी उस टाइम पे, जब मैं अपने दोस्त के साथ रिक्शा में जा रहा था कि मैंने कहा यार ट्रेनिंग तो कर ली, ये कर ली, अभी काम कहाँ से ढूंढे, कहाँ से ऑडिशन दे। तो उसने कहा यार तेरी तो भाषा भी सही है, बाकी लोगों की भाषा हिंदी में, दिल्ली में हिंदी साफ बोलते हैं, तो वो कोई फलाने एक्टर की बात कर रहा था। तो मैंने कहा तुझे कैसे पता? कहता नहीं यार जब मैं एडी था तो तब मैंने नोटिस किया कि ये एक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर। तो तब मैंने भी ऐसे रिएक्ट किया, मैंने कहा एडी माने? तो इसने कहा असिस्टेंट डायरेक्टर। तो मैंने कहा वो क्या होता है? इसने नहीं, हम डायरेक्टर को असिस्ट करते हैं एक बड़ी पिक्चर बनाने में, उसमें पता चलता है कि एक्टर का प्रोसेस क्या है या एक्टर काम कैसे करता है। तो मेरे को वो रिक्शा राइड इतनी स्पेसिफिकली याद है, अंधेरी से हम जूह सर्कल में जा रहे थे, और कि तब मेरे जहन में कुछ आया कि यार अगर ऐसा मौका मुझे मिले एक फिल्म सेट पे होने का, जहाँ पे मैं चीज़ें देख पाऊँ, ऑब्जर्व कर पाऊँ, तो आई थिंक शायद मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंटली समझ पाऊँ कि मूवी बिजनेस चलता कैसे। तो उस महीने से, उसी हफ्ते से मैं स्ट्रेट गया सेम प्रोडक्शन हाउसेस, एजेंसी सबके पास, ना कि बतौर एज एन एक्टर बट बतौर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, ट्राइंग टू बी एन इंटर्न। आपने एक्टर वाली ऑडिशंस नहीं दी? नहीं, फिर उस वक्त से मैंने शिफ्ट कर दिया। वो जो मैंने 3 महीना बिताए, आई थिंक दैट वाज डेस्टिन्ड फॉर मी टू टेक दिस पाथ, बिकॉज उस वक्त मैं मिला ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर्स की टीम से जो कि बड़ी बड़ी पिक्चरें कर रहे हैं, और वहाँ पे भी ऐसे लोग थे कि अगर 5 एडीज होते हैं तो एक 5वां जो होता है वो इंटर्न होता है, मीनिंग कि डजंट पे वेल, डजंट पे एट ऑल एक्चुअली। सो मैं उसके लिए जॉब के लिए वाउच कर रहा था। मतलब एडीज के भी आप इंटर्न हो गए? जी बिल्कुल, मतलब एडीज होते हैं, पैसा कुछ नहीं होता, पहली पिक्चर में नहीं होता है। तो कौन सी पिक्चर थी? फिर मैंने गाना किया था एक पिक्चर का, फिर जो पूरी फुल फ्लेजेड पिक्चर हमने करी वो मुझे तब एंट्री मिली धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस में, माय नेम इज खान करके। माय नेम इज खान में आप असिस्टेंट डायरेक्टर थे? जी बिल्कुल। मतलब वो बहुत सारी भीड़ जो होती है उसमें से एक थे? जी, हम लोग नहीं, बहुत बड़ी पिक्चर थी, हम 8 असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे और 8 में से मैं था, तब मेरी गिनती बीच में आ रही थी 5 या 6। उसमें तो वरुण धवन भी असिस्टेंट डायरेक्टर? उसमें वरुण धवन भी आया। तो आप दोनों जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में ले लिए? वो इत्तेफाकन है, तब नहीं पता था मेरे को। कम से कम उस पिक्चर को मैं प्री प्रोडक्शन में भी था, जो कि पिक्चर से पहले प्रेप होती है। वरुण शूटिंग में भी आए, और वरुण पोस्ट प्रोडक्शन में नहीं था, तो मैं वहाँ तब भी रुका, बिकॉज मेरे लिए वो सबसे कीमती एक्सपीरियंस था कि मुझे यार इट फेल्ट लाइक द बेस्ट फिल्म स्कूल। एक दिल्ली बॉय को जिसको एक्टर बनना है, इतने बड़े सेट पे शाहरुख और काजोल डायलॉग्स बोल रहे हैं यार, आपको उनके डायलॉग्स पढ़ने का मौका मिल रहा है, पहले उनका प्रोसेस देखने का मौका मिल रहा है। तो वहाँ से वो जर्नी इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि यार जब हम एज एन एडीज कैमरा फेस करते थे कभी कभी मार्क के लिए, जैसे ये लाइटिंग यहाँ पे हो रखी है, तो ये लाइटिंग सही है कि नहीं, आजा चल खड़े हो जल्दी, हाँ ओके सर,
तो स्टैंडिंग देयर, और उस स्टैंडिंग देयर में लाइट उस फेस पे कैसे आ रही है जी, तो वो मॉनिटर देखते थे तब हमारे कैमरामैन, तो वहाँ देख देख कर कैमरामैन जी ने कोई कमेंट किया कि इसका ये टेक्सचर ठीक है लड़का, वहाँ पे करण जौहर जी ने देखा कि अच्छा इस पे कैमरा ऐसा लगता है, फिर कोई राइटर देखता है, तो ऐसे ऐसे उन लोगों के जहन में एक इम्प्रेशन बैठता है कि ये ठीक ठाक पर्सनैलिटी वो है। एक तरह से आपका जो आप लाइट टेस्टिंग करा रहे थे या कैमरा पोजीशन टेस्ट करा रहे मेरी थे, होगी। आपका स्क्रीन टेस्ट हो रहा मेरा स्क्रीन, मैं 2 साल इतना घसीटा वहाँ पे स्क्रीन टेस्ट कर, जहाँ मौका मिलता था हम लोग, चाहे काजोल मैम की लाइटिंग हो या शाहरुख सर की लाइटिंग हो, हम करते थे वहाँ पे। और उसी दौरान आई थिंक तभी आपको पता चलता है कि कैसे चीज़ें जुड़ती हैं आगे, क्योंकि अगर मैंने वो असिस्टेंट डायरेक्शन के जॉब के लिए चेस नहीं किया होता, मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर शायद नहीं मिलती, क्योंकि उसके प्रोसेस के बाद ही जब करण सर ने हमें, मेरे को और वरुण को कैमरा के पीछे पर्दे में 1-1.5 साल देखा हरकतें करते हुए कि भाई इनमें भी जज्बा है, इनको एक्टर बनना है, और तब तो फुल जज्बाती ऑडिशन देने में हम तैयार। वहाँ से उन्होंने फिर हमें 3 महीना ऑडिशन लिए बिना बताए कि यार उनकी पिक्चर की है नहीं। वो तो लेकिन डेविड धवन के बेटे थे ना, आप तो बाहर से आए हुए थे जी, तो उनके चांसेस ज्यादा थे जी। आई थिंक अवेयरनेस ज़्यादा थी, चांसेस के पता नहीं बिल्कुल कि कोई जब उस माहौल में पड़ा बड़ा होता है तो एक अवेयरनेस होती है कि यार, जैसे तभी शायद जैसे उनको, वरुण वॉज मोर अवेयर कि यार पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग क्या होता है, यू नो मे बी क्योंकि डेविड सर एक एडिटर थे अपने यंगर डेज से, तो वो नॉलेज है, और मुझे वो नॉलेज उसी फिल्म के थ्रू मिली। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ एडिट पे कि अच्छा यार, अच्छा ऐसा एक एक कट काट करके आप पूरी पिक्चर बनाते हो, तो मेरे लिए तो वो एकदम डिज्नी लैंड था उस टाइम पे कि मुझे इतनी बड़ी पिक्चर में मौका मिल रहा है। तो घर में क्या बता रहे थे, पैसे नहीं मिल रहे थे कुछ भी? तब थोड़ी बहुत शुरू हुई, तब मैं उनसे एक्चुअली झूठ बोलकर बीच में शूटिंग के दौरान नहीं, बट जब हम प्रेप करते हैं, मैं जाता था अपने अलग अलग शूट करने के लिए, जैसे काफ़ी ऐसे कपड़ों के ब्रांड्स थे उस ज़माने में जो कि 1 डे के लिए, यू नो, मॉडलिंग के लिए फेसेस ढूंढते आप थे। एडी थे और बीच में मैं एक दिन जो कमाता था वो मेरे पूरे महीने का रेंट निकलता था उसमें, तो मैं बीच में जाके शूटिंग करता था। रहते हुए दूसरी जगह भी काम कर रहे थे? जी जी। उनको बताया नहीं था? उनको बताया मैंने, उनको तब उनको मैं सुबह मेरे को अपनी रियल लाइफ एक्टिंग एबिलिटीज करनी पड़ती थी कि यू नो आई एम जस्ट अंडर द वेदर, आई एम नॉट रियली फीलिंग वेल एंड यू नो सो आई कांट कम टुडे, तो ऐसा लो। वहाँ के बीमारी के बहाने बना के मैंने अपना रेंट दिया है दोस्तों के साथ, और कितना मिलता था मॉडलिंग का, कितना पैसा मिलता था? आई थिंक एट दैट टाइम फॉर एनी फेस, मतलब देयर वाज सम, एक दिन में आप कुछ 35-40,000 रुपीज़ कमा सकते थे। अच्छा, 35-40,000 पूरा महीना निकल जाता? जी, तो करेक्ट। उसमें रेंट मेरा 11,000 रुपये का रेंट था उस टाइम पे। वहाँ पे हम जुहू में 3 लड़के साथ में रहते थे। वो 2 क्या कर रहे हैं? जी, वो उनमें से एक MBA में, आई थिंक एक अभी बिजनेस कर रहा है। अच्छा। तो सबके थोड़े अलग अलग चीज़, उनमें से एक को एक्टर नहीं बनना था लकली, तो वो सक्सेसफुल आगे निकल गया। जिनको एक्टर्स बनना था वो हम ही लगे रहते थे जिम और फिटनेस में, और उसमें अपना रेंट कर रहे हैं साथ में जोड़ के। बट आई थिंक आई हैड द बेस्ट टाइम, बिकॉज वो स्ट्रगल के डेज की जो मस्तियाँ होती है वो अलग होती है। हमारे पास मुझे याद है जैसे 1.5 बेडरूम था, तो मैं हाफ बेडरूम में रहता था, और इस तरफ पूरी खिड़कियाँ थी, एक हाफ बेड था और कबर्ड से। तो जब हम शिफ्ट कर रहे थे, हमने कहा चला पर्दे लगाएंगे देखते हैं जब अंदर घुसते हैं। तो हम 2 साल वहाँ पर रहे, वो कभी हमने उतने पैसे खर्चे ही नहीं कि हमने पर्दे लगाए उसमें। तो वहाँ रात को वो जुहू बिल्डिंग इन 3 लड़कों को देख चुकी होगी आई थिंक उस 2 साल में, कि वो किसी भी हालत में वो नहा के बाहर निकल रहे हैं, वो तैयार होकर बाहर जा रहे हैं। हमने ना बिना बेपर्दे के उसको, उस घर को रखा था, और इतनी मस्ती करी थी वहाँ। और अब तो आप बिना पर्दों के रह नहीं सकते। जी बिल्कुल, अब तो पर्दे, वो अब उल्टा हो जाता है। तो वो 35-40 हज़ार उस टाइम मिलते थे, अभी कितने मिलते हैं? अरे देखिए अभी बिजनेस एक्यूमेन, ये इन्वेस्टमेंट हमने करके, अब मेरी टाइम की कीमत बढ़ गई है देखो। तो वो उसकी मेहनत करनी पड़ी। वो 10 साल मेहनत करें तब जाके हमें एक कीमत मिलती है। ये एक्शन वगैरह जो आप करते हैं, ये जी, पहले तो वो स्टंटमैन होते थे, आजकल ग्राफिक्स होती हैं, आप एक्चुअल करते हैं, कुछ ट्रेनिंग होती है? अरे नहीं, बिल्कुल। आई थिंक आज के दौर में एवरीबडी वांट्स समथिंग विच इज़ ऑथेंटिक, विच इज़ रियल, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग बाकायदा रियल लाइफ एथलीट्स की तरह ट्रेन करते हैं। जैसे मैंने एक फिल्म करी थी ब्रदर्स, अक्षय कुमार जी के साथ, या तो मैंने हाल ही में जो योद्धा करी है। इन दोनों पिक्चरों में हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेनर्स आए हैं फ्रॉम द US, साउथ अफ्रीका से। उन्होंने आपको ट्रेन किया? उन्होंने बाकायदा हमें ट्रेन किया है, एकदम एथलीट्स की तरह। वो हमें इतनी इंटरेस्टिंग ड्रिल्स कराते थे कि रियल लाइफ, जैसे एक बॉक्सर कैसे ट्रेन करता है, या एक रियल लाइफ कमांडो कैसे ट्रेन करता है। कैसे करता है?
बहुत चीज़ें आपको दिखा सकते हैं हम, ड्रिल्स भी हैं हमारे पास। आप खुद ट्रेन कर सकते हैं? हम ड्रिल्स दिखा सकते हैं जो हम हमने यहाँ करी। से ऑडियंस से किसी को बुलाते हैं, ये ट्रेन करेंगे। सोनल अरे प्लीज। वाह, कौन है हमारे फिटनेस सोनल ट्रेनर? आएंगी, सोनल, अरे वाह, आइए, ये सोनल ट्रेन getting करेंगे in आपको heels. बॉक्सिंग में। सोनल, आइए, आइए। heels can be a weapon. हाँ, A very good weapon. Nobody's going to mess with you. You can remove your heels then. Come. We'll try. Acha, okay, already. We're trying to give you a drill in action. How are you? Good to see you. I'm a little scared now. Why? I'm not going to do any action. I'm just going to give you a drill that they taught me. You have to shut your eyes. आंखें बंद करके आप पहले एक पॉइंट पे यहाँ देखो, एंड आपको ऐसा 10 बार घूमना है, और फिर जब आप खड़े होकर आंखें खोलती हैं, मैं आपको स्पॉट्स दूंगा जहां आपको पंच करना है, बस टच करना है। तो आपको वो टारगेट बनाना है। This is what a boxer goes through in one round of playing that sport, and we learned it in a film called Brothers, and we've actually done drills over this. एक टाइमर होता है, एक प्रैक्टिस होती है, तो आप आंखें बंद करिए, अपनी उंगलियां टच करिए जमीन पर, एंड आपको 10 चक्कर लगाने हैं पहले। Sounding like black magic? Listen, this will come in handy. I want to see your fitness thing. Now you put your fingers there. Now you turn around 10 times. Shut your eyes. तो आपको 10 चक्कर लेने हैं fast. But fast. Bend down a little bit. Squat. Squat down. Okay. Acha, go one more. One more time. 10 times. 1, 2, 3. Faster, faster. Keep going. Oh. Right. Shut your eyes. Okay. And now 2 more. Okay, if I fall, this is... Okay, now you have to punch here. Come on, quickly. Oh, punch the... Now you have to make the target sound and you have to keep moving forward. Okay. But you're not dizzy at all. You're not done it properly. I am. I'm just good at it. You're too good at it. Now she's the actual Yodha here and she's fit, guys. These are drills that हम लोग नहीं कर पाए थे first time पे जब हमें उन्होंने घुमा के खड़ा किया था. And you have to punch. Okay, now you're a bit dizzy. Okay, so then this is the trick. But you performed really well. मेरा हाथ अभी भी दुख रहा है. चलिए, थैंक यू सोनल। तो मतलब ये एक्चुअल जो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है जी, ये आप यूनिफॉर्म की आपने बात की, आपको इस तरह की इमेज बना रहे हैं जैसे 60s 70s में मनोज कुमार ने भारत कुमार की बनाई थी। अरे वाह। अब आप यहाँ राइजिंग भारत में बता दीजिए कि आपकी 21st सेंचुरी भारत कुमार आप बन रहे हैं। नहीं, मैं नया भारत की इमेज बना रहा हूँ, which is जो फुर्तीला है, फास्ट है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो भारत जो मैंने 10 सालों में चेंज देखा है। अच्छा। जेन्युइनली कि जब हम लोग बचपन में जब बाहर किसी देश में जाते थे तो हमेशा लगता था कि वाह यार क्या ज़िंदगी है, क्या सोसाइटी है, क्या चीज़ें हैं, क्या सड़कें हैं, क्या बिल्डिंग्स हैं। और अब जब मैं देखता हूँ तो आई थिंक वी हैव गॉन फार मोर इनवर्ड्स एंड वी हैव सो मच टू बी प्राउड ऑफ, एंड वी हैव एवरी टेक्नोलॉजी, एवरी फैसिलिटी जो बाहर है। तो तभी हम एक अपनी पिक्चरों में भी जब भी दिखाते हैं अपने फौजी, या जैसे मैंने हाल ही में पिक्चर करी योद्धा, जब उसके हम कमांडोज भी दिखाते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी दिखाते हैं या उसकी काबिलियत भी दिखाते हैं, आई थिंक इट्स एट पार विद एनी अदर मिलिट्री एजेंसी और मिलिट्री फोर्स ऑफ एनी अदर कंट्री। आई थिंक हमारे जो जितना मैंने भी देखा है शेरशाह मूवी के दौरान जो ट्रेनिंग होती है, जो उनकी वेपनरी है, वो पिछले 10 सालों में जो बढ़ोतरी हुई है, वो खुद फौजी बोलते हैं यार कि सर आज we're at par with anybody else in the country, anywhere else in the world. And I think वो चीज़ हमारी कोशिश रहती है कि नया भारत, एक यंगर भारत, एक फुर्तीला भारत, एक थोड़ा शार्प और खूबसूरत भारत दिखाने की कोशिश रहती है। ये आप अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे थे या भारत को डिस्क्राइब कर रहे थे? भारत को भी। मैं और भारत साथ में चल रहे हैं। सिद्धार्थ, फाइनली ये बताइए कि अब ये OTT की लोग बातें करते हैं कि अब ये OTT स्टार हैं, ये सुपरस्टार हैं। आपके ज़माने में भी आपने भी जब फिल्में देखी होंगी तो शाहरुख खान के नाम पे लोग आते थे जी, उससे पहले अमिताभ बच्चन के नाम पे लोग आते थे। ऐसी इच्छा होती है कि आपका पोस्टर लगे और बस भीड़ लग जाए? अरे वाह, आई थिंक आज का दौर बदल गया है। हमारे पास टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतनी सारी ऑप्शंस हैं एंटरटेन होने के लिए। आज लोग हमें भी इधर इस स्टेज पे नहीं, कोई कहीं और अपने मोबाइल फ़ोन पे देख रहा है, कोई अपने टीवी पे देख रहा है, कोई अपने दूसरे ऐप से देख रहा है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है पूरे मीडियम की इन 12 साल? एब्सोल्युटली। आई थिंक जब हम लोग आए थे अपनी पहली पिक्चर पे, तब सोशल मीडिया नहीं था ऐसा जो कि आज है। पिछले 6-7 सालों में लोगों के पास बहुत ऑप्शन हैं एंटरटेन होने के लिए।
मूवी तभी हम जैसे इंडियन पुलिस फोर्स जो हमने शो किया था अमेजोन के साथ, मैंने और मिस्टर रोहित शेट्टी जी ने, उसका इंटेंट वही था कि हम वो ऑडियंस को भी लेकर आए जो कि आजकल OTT पे है, घर बैठ के शो देखना चाहता है। हम थिएटर में भी आ रहे हैं कि वो ऑडियंस को भी एंटरटेन करें। कल अगर कोई और नया मीडियम शुरू होगा तो हम एक्टर्स वहाँ भी पहुँच जाएंगे। आई थिंक एक्टर को सिर्फ एक्टर से मतलब है, एक्टिंग से मतलब है कि हम हर मीडियम में ऑडियंस से कनेक्ट करें, अलग अलग कहानियाँ दर्शाएँ। मुझे पर्सनली रियल लाइफ स्टोरीज बहुत पसंद आती हैं, इसीलिए मैं भारत की कहानियाँ चुनता हूँ जहाँ पे यार मुझे पता है कि असली में हुआ है और इससे हम रियल लाइफ हीरोज़ को इंस्पिरेशन तरीके से दर्शा सकते हैं। चाहे वो OTT मीडियम हो, चाहे वो थिएट्रिकल हो, या चाहे कोई नया मीडियम कल आ जाए, पता नहीं। बट द अटेम्प्ट इज़ टू कीप एंटरटेनिंग एंड शोकेसिंग India's brave stories, and hopefully apart from this also be a part of some interesting campaigns that we are planning very soon. Personally also as a citizen would want to contribute to many causes, but बहुत जल्द उसका कुछ announcement करेंगे और plan करेंगे। तो फाइनली आप अपने जैसे और जो सिद्धार्थ मल्होत्रा बनना चाह रहे हो जी, उनको कैसे इंस्पायर करेंगे? क्या एक लाइन बोलेंगे कि ये ज़रूर ध्यान रखना? आई थिंक उसके लिए एक योद्धा एटीट्यूड जो कि मैं अपनी पिक्चर में बात कर रहा था होना बहुत ज़रूरी है। हमें कभी भी सफलता या सक्सेस आपको पहले वर्ड गो से नहीं मिलती, और अगर आप मिल जाती है शायद आप उसकी कदर नहीं करेंगे, स्पेशली भी किसी क्रिएटिव फील्ड में। तो एक योद्धा एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आप रिजिलियंट रहे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ना खोएं। दुनिया चाहे आपको जो भी उस बोले, पर दुनिया चाहे उस वक्त आपके टैलेंट को ना देखें, पर वक्त जरूर आएगा और उस कॉन्फिडेंस से डटे रहें। कीप द योद्धा एटीट्यूड ऑन। और वक्त आता है जैसा सिद्धार्थ मल्होत्रा का आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए राइजिंग भारत में। थैंक यू सिद्धार्थ मल्होत्रा। Thank you, Siddharth and Kishore, for a very entertaining discussion. Thank you to Sonal also for being a true sport over there. That was also very entertaining to see you give it a shot. All right, so as we've been talking about how diverse our panel discussions have been, it's not just entertainment, sports, or even politics. As we all know, Prime Minister Shri Narendra Modi ji will also be gracing the event in the evening, which will be the grand culmination of a 2-day Rising Bharat Summit. But having said that, let's now shift focus also over to international affairs, because we told you we have a very special guest all the way from United States. What is common between the United States and India this year? Well, we are both headed into general election. While there's talk about who will be India's next Prime Minister, there's talk about who will be the United States' next president. Will it be Joe Biden or will it be Donald Trump? On that note, our next speaker is a person who has spearheaded some of the US government's most significant foreign policy breakthroughs. As the only 4-year national security member of President Donald Trump's cabinet, he worked to impose crushing pressure on the Islamic Republic of Iran, avert a nuclear crisis with North Korea, even deliver unmatched support for Israel and bring peace to the Middle East. His efforts to promote religious freedom around the world were unequaled in American diplomatic history. He even helped the Trump administration craft the America First approach that appended Washington's wisdom and made him America's enemy's worst nightmare. Please welcome Mr. Mike Pompeo, former United States Secretary of State, for a session never give an inch in conversation with Bodhisattva Ganguly and Zaka Jacob. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for these gentlemen. Secretary Pompeo, thank you very much for joining us here at Rising Bharat. I just want to tell our audiences he's flown in all the way from San Francisco. He's here just for our session here, and then he flies right back. So first of all, how does that feel? I'm hanging in so far. If I drop off, someone will come save me, I'm sure. I'm fine. So let me start off by asking you, our session today is titled Never Give an Inch. It's the title of your book. And the thing that's of most interest to our viewers here, and you'd imagine that,
is what you said about what happened in February of 2019 when you were in office, when you were Secretary of State, and you describe in your book why you felt that India and Pakistan were on the verge of a nuclear conflagration. Can you tell our audiences here and people watching home why you felt the way you did and what really pulled it back from the brink? Sure. First of all, thank you for having me here. It's lovely to be at this gathering. I know this place well. I ran a business here in India for half a dozen years in the early 2000s. So I have a special affinity for the people of India and the amazing economy that has been built here in the intervening 20 years as well. I've watched that develop. You know, you all know the facts of that night in the same way that I do, that frankly, a couple of days conflict between India and Pakistan is always risky. You top that with and connect that to any time you have two nuclear-powered nations, nuclear-capable nations, and the risk of misunderstanding is very real, and bad things can happen very, very quickly. And so Ambassador Bolton and I came to learn there was an aircraft that had crossed. I won't go into the history, but we came to learn that the national security apparatus in each country was very concerned about the other nation beginning to take actions that would be consistent with use of a nuclear weapon system. Our task, the American task, was to try and determine, A, what was real, what was just someone fearing what might happen. And so we began to deploy all the capabilities that we had, all the capabilities that our partners had to learn what India believed they knew, what Pakistan believed that it knew, and then bring that data set all together. And that was really, in the end, you ask, well, how do you put it back in the box? That was the answer. We were able to, in relatively short order, make pretty clear that neither nation was actually moving towards that there was lots of risk, that there were, neither nation had a great deal of trust with each other. We had a pilot that had been captured. And so there was lots of anxiety and risk along the conflict zone. But it became pretty clear, and we were able to effectively demonstrate that the risk that the other side was moving towards using a nuclear weapon was very, very low, and we were able to take that tension down over the course of just a handful of hours. But nonetheless, you know, there's no issue when you're the Secretary of State for the United States of America. There is no issue that you worry about more than the proliferation of nuclear weapons and their potential use. And one of the things you worry about most is not that they will be used by someone who's doing so in a rational, intentional way, define rational however one might like, but rather based on a set of facts that isn't real, that there's a mistake, a false release, some kind of storyline, some propaganda, some deep fake. You can imagine lots of things that would create a situation where it would get to a place you can't get it back. And we wanted to do everything we could that day and night to make sure that that moment didn't arise, and in this case, it did not. I just want to talk a little bit. By the way, last thing I'll say is really good professional leadership on all sides. The team that worked for me, the teams that were both in India and Pakistan did a very nice job that evening of managing a very heated moment. You know what, when you were Secretary of State and in the Trump administration, the Pakistan policy was much more hardline than what we've seen in the last 4 years under the Biden administration. If you were, and now we all have the benefit of hindsight, if you were to assess the changes that's been made in the Biden policy towards Pakistan, how would you assess it? Because there's been significant changes. The military deals have come back, some of the aid has come back, maybe not so much the importance, but it seems like Pakistan's not in the doghouse anymore. Without adopting that analogy, we came to believe that the policy that had been before us under President Obama, and frankly under Republicans before that as well, that engagement policy had not successfully delivered an outcome that was good for the United States. So we did. It took us a little bit, took us 6 or 8 months, but we reversed course with respect to Pakistan in material ways, providing lots of things that Pakistan wanted. Not in an effort to punish, but rather in an effort to convince the Pakistanis that they needed to be part of a model that looked more like ours than the Chinese Communist Party's model. And I think, unfortunately, and I don't mean this politically, I don't do politics on national security. I think, unfortunately, the last few years have demonstrated that we were right, that the policies that we had were more likely to reduce Chinese Communist Party influence in Pakistan and the risk of extremism in Pakistan more than the policies that have been adopted these last couple of years. I still think
I think we largely had it right. I wouldn't say that about every element of our policy there, but we largely had it right. You compound that with the failure of America in Afghanistan, and I think American trust and leadership in this region has been diminished in these last 3.5 years. Just to ask you a variant on that question, one of India's strategic goals of this administration, even administrations before that, is to what we call the de-hyphening the India-Pakistan relationship. That India is a rising power, it's now the world's 5th largest economy. In 5 or 6 years, it'll be the 3rd largest. And therefore, India and Pakistan should not be clubbed together, which it may have been if you go back 15 or 20 years. From your vantage point, you've held the Secretary of State position for 4 years and 3 years that has followed. Do you think India has succeeded in doing that? Yes. So, it has. Yes. Yeah, I think it's succeeded. More needs to be done. But there's no doubt these two countries have taken fundamentally different directions, and I think you have economies to prove it. I think you can fundamentally see the difference in the growth trajectory of the two economies and, frankly, their place of leadership in the world. I think it is unambiguous that now you describe it, declubbing the separation. I think it is unambiguous and clear. I always root, just so you know, I root for every nation to be free and have opportunity for their people. I wish no one ill will. That includes the Chinese people of China. That's why I talk about the Chinese Communist Party, not about China. I'm rooting for their good luck and success as well. But it takes government leadership models that aren't desirous of doing that on the backs of others. India has done this by building out its own nation in a fundamentally creative, innovative way, and I think has benefited, and the world can see that as differentiated from Pakistan in the way you describe. And India has obviously benefited from the China, what is described as the China Plus model, as you know, MNCs seek to diversify their supply chains. You have now iPhones being made in substantial numbers in India, and so on. I'm asking you a hypothetical here, but if President Trump were to return to power in November this year, January 2025, what could India expect from a second Trump administration in terms of economic policy? I mean, there were friction points in the first Trump administration. Yes, oh yes, I remember them vividly. Yes. Yes. Yeah. No, there's always going to be trade friction between the United States and India. You write it down. It's natural that nations want to protect things that are theirs, including we want to do the same thing. So that piece is untroubling. You know, I think the best way, we're talking about something that may or may not happen, the best way to think about what a second Trump administration would look like is to go back to the facts and data about the first one. By the time you get to be my age, right, things don't change. Your worldviews are pretty set. And so when I think about the work that we did alongside India in the national security space, in the economic space, on the global stage as well, I suspect that the second Trump administration would adopt a set of policies that aren't dissimilar from that. That includes, if you read a book by a fellow named Robert Lighthizer, talks about tariffs and their economic benefit to the United States of America. I have a somewhat different view of that, but it is something that President Trump used in his first term, and I have every expectation he will continue to use that tool in his second term as well. It may be different, it'll certainly be different for different countries, but the idea of developing a deepening bilateral trade relationship with India was something that was central to our effort for our 4 years. I suspect if President Trump were to be reelected, that would continue to be the case. And will he have a second term? Oh, goodness. You all see the same data I do. I don't predict. It'll be very close. It'll be competitive. There'll be a half a dozen states where it will be material to the outcome. I'm hopelessly biased. I think that the American people are radically better off with a President Trump than they would be in a second term of President Biden. It probably doesn't surprise anybody that I think that. So I'm hopeful. I'm hopeful the American people will elect President Trump, and we will begin to build America's place, its leadership in the world in the same way we did, and that the American economy will continue to accelerate in the way that it was before COVID was unleashed in the beginning of 2020. Well, a Trump second term may be viewed favorably here in India
from New Delhi's point of view, but how may it be viewed from Beijing, from Riyadh, from Tel Aviv, from Kiev, Yeah. and of course from Moscow? Oh my goodness. They gave me half a dozen. They'd be very different answers. Where do you want me to start? No, will the world be worried, especially given what we saw in the first 4 years of Trump? Should the world be worried how his presidency, if at all there is a second term, his presidency may shape these relationships? Yeah. No, the world should be thrilled. I mean, how many wars started for those 4 years? Anybody got an idea? Zero. Yeah, zero. We now have a major conflagration in Europe, continuing now 2 years on. We have the most horrific act that I have seen in my adult lifetime. What Hamas did, what the Iranian leadership did to those women on October 7th in the southern part of the Negev desert is like unlike anything I've ever seen. And I've seen, as CI director, I've seen an awful lot. This didn't happen under President Trump's watch. Instead, we built peace and prosperity. We built what became called the Abraham Accords. We had 4 nations declare that they were no longer going to be hostile to the nation of Israel. We knew that Jerusalem was the rightful capital of Israel. Basic things that most of the people said, this will cause World War III. I remember, I was there. Mike, if you strike Qasem Soleimani, World War III will ensue. The truth is, just the opposite happened. We saw the entire world come to say, those people are serious. And they are going to defend the things that they promised to defend. Vladimir Putin didn't take an inch of Ukraine on our watch. He took a fifth of Ukraine under President Obama, and then he stopped. And then he went back at it again just a few months after we left. I know, New York Times, CNN, International, they'll tell you it was just pure luck. Fair enough. Maybe we did have good luck. Maybe the good Lord was with us. We can ascribe it to whatever we want, but I know it happened. Afghanistan didn't fall under President Trump. Right? These are things that we can factually present that are indisputable about the world being better off. So when you ask, should the world be worried about President Trump, I think the world will be fundamentally more prosperous and more secure were President Trump to be given a second term, another 4 years. But how would, I mean, obviously the world he would inherit if he were to become president again is a very different world from when he demitted office. That's what I was just talking about. How would he, because the onus is going to be on how he's going to end these 2 wars. How would President Trump end the Russia-Ukraine war or the Israel-Hamas war? I don't do predictions. I don't do predictions. I do factual, I do principle-based analysis of what's likely to take place and what happened, what I can prove happened. There are folks who say, gosh, these things, these are counterfactuals, right? Here's what I can say with certainty. Vladimir Putin had a fundamentally different perception of America when President Trump was in office. He just did. You can argue about why. Mean tweets, you just describe it however you choose to describe it. But the reality was that the missiles that saved Kyiv, the very Javelin missiles that were fired that saved Kyiv the night that they almost lost it, does anybody in this room know who provided those missiles to the Ukrainian people? Which president? It wasn't President Obama. He refused to do it. Had President Obama or his successor been elected in 2016, there would have been no Ukrainian defense that night from Javelin missiles. President Trump allowed those missiles to be delivered, saving Ukraine, giving them the very opportunity that they face today. I would tell you that in the Middle East, the Iranians understood that we were serious about defending things. We were serious about being partners with the Gulf states, the Emiratis, the Omanis, certainly the Kingdom of Saudi Arabia and Riyadh. We were serious about supporting these partners in a way that allowed them to move towards a different model in the Middle East. We want a good thing for the people that live in Judea and Samaria, that live in the West Bank. We wanted good things for them too. But we weren't about to let the terrorists that are under the thumbprint of Iran, whether it's Hezbollah or the Palestinian Authority or Hamas or the Houthis in Yemen, we weren't about to let them upset the opportunity for prosperity in the Middle East and for America, because it was about America first. We wanted to make sure our young men and women didn't have to go fight and risk their lives in those places as well, as they had done so many times over the last 25 years. I'm a former soldier.
My mission set at the State Department was to deliver a model in the Middle East which no one ever asked for the 82nd Airborne or Marine Brigade. And we had built that. And so I would suggest to you that were President Trump to get another chance, he would begin to rebuild that model. And this is how, in the end, these conflicts will end. The only way you convince evil, bad guys, to stop is power. You have to deter them. And the United States and the world, not just the United States, Europe, Middle Eastern countries, lost deterrence. And this is now what has to be returned. And I'm confident that it can be done. But regardless of what happens in November, will Ukraine be able to, will Ukraine be able to stave off a possible Russian offensive in the summer, given the deadlock in the US Congress in terms of supply of weapons? They'll get what they need. Sorry? They'll get what they need. They'll get. So you think it'll go through eventually? It will go through. The Ukrainians will get what they need. I'm convinced that they will get the tools that they need. But I'll be honest. The fact that we've provided these weapon systems to them for now 2 years plus, we collectively, the Europeans, others as well, the Koreans, many nations, not just the United States, we haven't let them win. You have to win. In the end, you have to convince your adversary that the cost of continuing conflict exceeds the benefit. This is deterrence 101. This is economic 101. This is what you teach your children. When they behave badly, you have to convince them that their bad behavior, which they enjoyed and benefited from, their bad behavior is exceeded by the cost of that bad behavior. And that's what we lost. And we have to allow the Ukrainians to do that, and we didn't. I'm afraid we're not doing it in Israel either. Today, the President of the United States and many countries, the United Nations, I think India voted that way as well, is trying to constrain the one actor that has a chance of actually creating peace in the region. Right? The leaders of Hamas to this day, tomorrow there will be a ceasefire, everything shuts down. What's Hamas going to do tomorrow? What would Iran do tomorrow? They'll go right back at it. This is no nation. India wouldn't allow this. India would not sit still for having their women raped and murdered at the level that happened that day. You'd go take care of whoever did it too. And by the way, the United States should support you in doing that. And if you had Indians held hostage, we should support your effort to go back and get those hostages. Today, there are not only Israeli hostages, but American hostages being held by Iran. And rather than pay them billions of dollars, we ought to go win. And this is the challenge. We didn't tell Israel, by the way, that they couldn't go into Gaza. Think about this. Think about the difference here. Israel is invaded by marauders, has hundreds of their people taken and held hostage, human shields being used to protect them. And we didn't tell Israel, no, you can't go get them. We told the Ukrainians, you can't do that. We told the Ukrainians, you can't go hold anything Russian at risk. If you're sitting in Russian leadership, not just Putin, but Russian leadership more broadly, and your mothers put their children to bed peacefully every night in Moscow and St. Petersburg, versus the Ukrainian mother who puts her child to bed and prays that the missile won't come through the building that night, this is asymmetric. And this is the thing that will continue to drag this European conflict out. We have to hold something that matters to Russia at risk, or at least convince them that we will. I just wanted to stay with Ukraine for a moment. So you don't subscribe to, sort of an intellectual theory of the present day right in America, or parts of the present day right, is that Ukraine is a distraction, and actually the U.S. should focus more on Taiwan and so on. You don't subscribe to that. And one strand of the theory is that the whole expansion of NATO eastwards was some kind of a provocation to Russia. I mean, the same set of people usually say about these things. What are your views? No, this is Russian propaganda. NATO no more threatened St. Petersburg than a man in the moon. I mean, come on. Like, can we just all, you don't have to tell your kids, but like, can we just all agree here today? Does anybody think Vladimir Putin really feared that NATO was going to roll into Russia? Maybe. I don't think there's any evidence to support that. By the way, the United States made a promise to Ukraine in 1994 in the Budapest Memorandum. We said, give up your nuclear weapons, Soviet-era weapons,
And in exchange for that, if you come under threat, we will support you in your defense. The world knows that America made that promise. If we walk away from that, good luck getting Chairman Kim in North Korea to give up his nuclear weapons. Good luck getting any nation to give up anything that matters to them based on an American guarantee. So I would argue there is a deep, important commitment there. Second, to your point, this is a European conflict. I was a soldier now decades ago. My first assignment as a young lieutenant was patrolling the then East German border. It was a great job. Drive up and down, M1 tank, put the tank away, go drink beer. Great job. European kids were sitting at the bar when I got there. Europe has to do the work, just as India needs to do the work in this region. Japan, South Korea, Australia, the list goes on. Regional nations need to do the job in the first instance to secure their own sovereignty and their own freedom. That's true in Europe. But America has a deep interest in Europeans' continued integrity and success as well. Yes, the bigger challenge is from the Chinese Communist Party. The long-term threat, the chance that my son, and if we are blessed, our grandchildren, will live in an America that is very different than the one we live in today, comes largely from Xi Jinping and his like in the Chinese Communist Party, not from Russia. That much is true. But it doesn't mean that we can allow a sovereign nation to be invaded by an aggressor. We will only encourage folks like Xi Jinping, whether that be in Taiwan or in Los Angeles. And I would remind you here too, it's as true in India as it is in the United States. The Chinese Communist Party isn't just a threat in the Taiwan Straits. They're inside the gates. The largest spying operation, I believe, ever conducted on America wasn't by the Russians. It was being conducted out of the Chinese consulate in Houston, Texas, with diplomats operating undercover. And we closed the consulate. We made the decision to close the consulate. Not an easy decision. You can imagine, oh my gosh, what will the Chinese do? Will they invade Taiwan? Will World War III? What they understood was like, these guys, good on you. You figured it out and you crushed it. They remain a threat. They're all around us. They're working hard inside our countries. They want to change the nature of India as well. They want it to look more like them than you. And we can't let that happen inside our own countries either. It's complicated. I get it. Deep trade relationships for India. Deep trade relationships, economic interests for the United States of America as well. I know them very, very well. We have to find a model that delivers security and prosperity for ourselves, protects our own trading bloc, and the rules that have delivered India to the place that it is today. And if we do that well, I'm convinced China will end up having to follow suit. I want to talk a little bit about China in the context of India, particularly because of the changed situation in the last 3 years since the Galwan incident at the border happened in 2020. There is a perception, there is a school of thought here in India which says the Chinese are poking and testing, and the more India is moving in the American orbit or becomes closer to America strategically, then it just incentivizes them to try and do that more, to be more militarily adventurous. What would you say to that? If you choose to adopt the model of appeasement, you'll have more Chinese aggression. What does Xi Jinping respect? Does he want someone who shows up and pays a tithe, an offering, bends the knee? Or does he respect someone who stands up and says, no, I'm the leader of Latvia. I'm the leader of Bangladesh. I'm the leader of America or India. And I'm going to damn well do the things I need to do to make sure that my people are served well. That's the place with which you can have conversations with Chinese leadership. You can't have relations with the Chinese leadership when you tell the Chinese leadership, no, it turns out we just want to talk more. And yeah, we're happy to let you run vessels into the Philippines. We're happy to let you make cockamamie statements about the South China Sea. I mean, just ludicrous statements about the South China Sea. More ludicrous than thinking that NATO was going to invade Russia. Right? These are propaganda campaigns intended to do what Chinese Communist Party intends. This isn't about military power.
Military power matters. You must have it. This is a check the block, have to have it. India must have it, we must have it, the West must have it. But this is about, this is a larger hegemonic play by Chinese Communist Party. This is about corrupting trading systems, make sure that the currencies that are used are no longer the traditional currencies, to make sure that energy flows work the way that every international organization is run by the Chinese Communist Party. I would laugh at my team when they would come in and talk to me about these climate change summits. I want to debate climate change here today. We've just got a few minutes left. But does anybody think for a moment that a Chinese signature on the Paris Climate Accords is worth a damn? Does anybody think, how many coal-fired power plants have the Chinese shut down since they've signed that agreement? Let's all just deal in reality, not fantasy. This would be my first ask in dealing with China. Observe what they do, not what they tell you in the China Daily Times or the China Global News. Observe what they do. They are the most polluting nation in the world. They have no capacity to generate enough energy for themselves. They are using the Belt and Road Initiative to achieve political influence around the world. And we should acknowledge that they have the world's second largest economy, albeit troubled, a huge population, although declining soon. And we should recognize that the Chinese people deserve better. And if we can keep those thoughts in our head, there is a model where we, Europe, South Korea, Japan, Australia, I'm sure I'll leave somebody out, India, Singapore, the United States, Canada, we can build at a model for the world that gives us another 75 years where we get to live our lives in the way that we so choose. But I just want to take off from what Bodhi was asking you a moment ago. But if you were Xi Jinping and you're in Beijing and you're looking at these two wars, the Russia-Ukraine war and the Israel-Hamas war, in a sense, it also has tested or shown to the world the limits of American power and American persuasion. So if you're Xi Jinping and you're looking at these wars and you're saying, you know, America, the most preeminent power in the world, is not able to get the outcomes in this war. It's not able to help Ukraine in a way that Ukraine can win this war. It's not able to stop Israel from, causing all these mass civilian casualties. What then stops Xi Jinping from saying, okay, let me try and see if I can take Taiwan back? Good partners and friends and American leadership. That's what's failed. I spoke about this already. This is the deterrence that failed. I agree. Xi Jinping observes that not just America, don't put this just on America, it's not fair, it's also dangerous, more importantly than not being fair. All of us have a responsibility to say, no, we have to go win these things. The world needs to perceive, everybody loves, right? The Middle Eastern idea is the idea of the strong horse. Everybody follows the strong horse. We need to be that. We, collectively, need to be the strong horse. We're totally capable of doing this. This isn't, everybody has angst, like this is hard. We know precisely how to do this. I think in the 4 years we were there, we demonstrated that. Not perfectly. We could have done more in Hong Kong. I don't know that we could have stopped the collapse of Hong Kong as we knew it, but we could have done better. We could have done more. I'm entirely self-critical as well when appropriate. But yes, no, I think you're right. If you ask, by the way, what stops Xi Jinping today, I think he figures his generals are lying to him just like Putin's generals lied to him as well. So I'm guessing he's double-checking what everyone's telling him. It's also the case that the cocktail party talk is about an invasion of Taiwan. Why would you invade Taiwan? That's nasty. You blow up TSMC, and so nobody benefits from this. No, the way to take Taiwan is to do what you did in Hong Kong, is to apply pressure and convince the world that, that in fact Xi Jinping, that the Chinese Communist Party is the strong horse. You undermine it via all the soft power tools and back it up with a very capable, not only Navy and Army, but a powerful nuclear weapons program, a powerful space program. China has each of those. So you have the hard power tools, but your modus vivendi to achieve your objective, which is political control, not just in Taiwan, but in the entire region, Pacific Islands included. I think the model isn't to send a fleet, might do that if he has to, but the model is way more dangerous than that.
About India and Mr. Modi, there is a view among certain institutions, maybe even sections of the Western press, that look, while he's great for the economy and India is the fastest growing large economy and so on and so forth, there is this whole narrative about democratic backslide and freedoms being under threat. Yeah. I'm sure it was there when you were in office as well. What would you say to that narrative, having interacted with Mr. Modi himself and members of his cabinet in the 4 years that you were in office? You know, it's interesting because that narrative of, what did you describe it as, backslide? Democratic backsliding. Is the headline in the New York Times today about if President Trump were to be reelected, democracy is at an end. So just, you should know, I have a view on these things. No, my observation was indeed uniquely different from that. My observation was about an India moving radically forward in all the most central areas. We don't get it right in the United States every day either on these same set of issues. I was deeply aware of this. What we ask is progress, and you know, we put religious freedom at the very top of the list of things we talked about. We spent a lot less time talking about climate change and a lot more time talking about religious freedom at our embassies around the world. I'm sure that's true for the embassy here today. You'll get it right. I'm confident you all will get it right. You will demand that your democracy be defended and protected. And when your leaders don't, you'll upbraid them. You'll bring them back to the place that you want them to be. And so I didn't observe this, and you asked, did I see this when I was there? I didn't observe this backsliding of which you speak. I give one other thought about the way we approached the internal policies of other nations, most especially for democracies. Less true for authoritarian regimes. But for democracies, we acknowledge that this is tough stuff, that the political fighting that takes place amongst political parties, amongst political actors inside of political parties. As a congressman, I'm perfectly attuned to that. We should welcome that. This is to be encouraged. This exchange of ideas, this political space to express one's view is vitally important. So when I see that take place in India, and I see one party saying, oh, and another, I think, you know, this is the best of our tradition. And I certainly experienced that when I observed it from my time in office as well. I must say it's one of the things I regret about what happened just last week in the United States, where we had a senior United States senator go to the floor of the Senate and speak about another democracy, Israel, and suggest that the Israeli people needed to change out their leader. Wow. That is, Senator Schumer asked for regime change in Israel. That's really quite something to me. It's in my view, deeply inconsistent with the American tradition about how we respect our fellow democratic peers around the world. We should honor their traditions. They'll choose paths that are different than ours in many cases. But man, I have confidence in the Indian people in ways that apparently Senator Schumer doesn't in the Israeli people. Can I, we're almost out of time. Just let me ask you a quick question. Would President Trump concede if he lost this time around? I'm sorry? Would President Trump concede if he lost this time around? Oh, sure. Of course. Yeah, of course. I'm still waiting on Secretary Clinton to concede in her election. She did the next day. No, she didn't. She still tweets, go look them up. She still says the thing was fixed. Fair enough. By the way, Al Gore thinks he lost. I still won in 2000. Fair enough. We have rambunctious, very competitive elections in the United States. But we also have a court system and a rule of law that conducted a peaceful transition of power, which caused me to grab my bag and walk out of the door on January 21st at noon of the year 20th of January 2021. Worry not. Whatever CNN International tells you, we will have an election. The election will proceed, and we will have a president duly elected. He'll give an inaugural address starting right at noon that day. It will happen. You can write it down. You heard it here first. All right, ladies and gentlemen, Secretary Michael Pompeo of the United States. Thank you very much for joining us. Thank you, Secretary Pompeo, Zaka and Bodhi, for that very engaging conversation, one that provided us with a window to changing geopolitics of the world.
And with that, ladies and gentlemen, may I now invite upon Shireen Bhan, Managing Editor, CNBC TV, to introduce our next speaker. Shireen, please come. Thank you very much, Akanksha. Ladies and gentlemen, it is my privilege to introduce our next speaker here at the Rising Bharat Summit. The bullishness about India that you've all been witness to over the past 2 days is showing up in our capital markets as well. The Bombay Stock Exchange market capitalization has risen. It's crossed $4 trillion recently, a nearly 4 times climb from the levels of $1.6 trillion that we saw a decade ago in 2014. The BSE Sensex has nearly tripled from 27,500 in 2014 to 72,000 now. Global funds are looking at India with an increasing appetite, and there's more money flowing from the Indian households to the Indian equity markets too. The value of shares and debentures held by households has jumped over 1,000% in the past decade. Mutual funds assets under management have also vaulted 500% in this decade. The Indian equity market has added 31 million investors in 2023. Digitization of financial systems and deeper bank penetration is transforming people's savings behavior, mirroring preference towards more return-yielding financial assets. To talk to us here on the Rising Bharat platform about the phenomenal transformation and democratization of the Indian capital markets, it is my absolute pleasure and privilege to welcome here on the stage Madhavi Puri Butt, Chairperson of the Securities Exchange Board of India, the Chairperson of our market regulator, SEBI. Good evening, ladies and gentlemen. I must admit I'm a little nervous here today because Shireen has asked me to deliver an address which is supposed to be 25 minutes long. And I'm really worried because at the best of times, 5 minutes, 10 minutes is good. But to the best and brightest minds in the country sitting here today, I can't think how I can keep you engaged for 25 minutes, but I shall try. So the strategy is to share with you some stories along the way in terms of what is happening in our capital markets. So as we think about democratization of the capital markets, to me, the question that starts right at the beginning is, what do we understand by democratization? And in order to share the story of many years ago, it's a story about one Mr. Murthy. Oops, go back. Okay, here's Mr. Murthy. He was a real person, Mr. Murthy, in Hyderabad, looked pretty much like this. This was the early days of online share trading. And when I met this gentleman, he was a small trader sitting in Hyderabad. We spoke partly in English, partly in Telugu. And he said that he was extremely delighted with online share trading. And when I asked him why was this the case, he had two very simple things to say. He said, I like to trade, but I trade very small amounts. So the sub-broker doesn't really care much about me, and I have to keep pestering him and following up again and again, and he just often doesn't even take my phone call. And if it's a really volatile day, though there's no chance of my being able to get through to him, and all the volatile days I miss the activity in the market because the sub-broker simply won't pick up my phone. And he said, online share trading gives me an equal right, like all the bigwig investors,
to go and buy and sell my shares. That was the day that I learned what is meant by democratization. We often think only of entry, you know, access to come in. What he taught me was access to get out as well. Because in a large part of any industry, any product or service, there are many people who encourage you to come in. But do you have equal access and as much service from them when you want to go out? So to me, democratization needs to encapsulate not just ease of coming in, but ease of being served right through the life cycle of being an investor, and indeed the ease of going out. So what is it that has really happened in our markets? I will take you to another story. This story is about Mr. Kamath. Many of you know him. I've taken his permission to narrate this story. It's not a professional story. It's about Mr. Kamath, the man. Mr. Kamath has household help, and he was really keen that they should participate in the growth of the country, the growth of the markets, and really create wealth for their children and their families. So he wanted to pay them bonuses and part of their salary, invest on their behalf, but he always worried. He said, I'll make the investment on their behalf. But tomorrow when I am not here and they need to be served and they need to exit, who will be there to serve them? They will be lost in this world, right? His domestic help, his driver, his maid at home, his sweeper, his cleaner. And then one day, we showed him a demo of MF Central. Those of you who are familiar with it, this is unprecedented anywhere in the world. And when I speak at IOSCO, which is our global forum for market regulators, they simply cannot believe that an entire industry, 50 different mutual funds, have come together to say that here is the one place where you will be served through a single window. It's not just about buying through a single window. That everybody does because of their own commercial interest. But to be served through a single window. So if you say, I want to change my address, and you are holding units in 5 or 6 different mutual funds, you upload it once, it automatically goes to all 5 or 6. Whenever you have any service request, you say, I want my account statement, I want my tax statement, I need to give it to somebody. You upload once, it goes to everybody. Single window to be served during your entire life cycle of holding that. Now, this is truly phenomenal. It's not just about the fact that technology enables it. It's about the fact that the entire industry chose to come together and offer this and say, this is not a space where we need to compete, this is a space where we need to collaborate. And that's what creates the democratization. Third story. This is Shakti Amma. Many of you may be aware, I am a Unilever wife, so I'm very aware of who Shakti Amma is. So this is the local Kirana wala lady who is in every village of the country. What is our ambition? Our ambition is that just as Shakti Amma is selling these little sachets of everything, and we know the entire story about how the shampoo market in India exploded when it moved from bottles to sachets, and people could afford to buy a 1 rupee sachet or a 2 rupee sachet of shampoo, but could never have afforded to buy a 100 rupee bottle. The market just exploded. So our objective is that in similar vein, we are looking to do sachetization of all our financial products. Again, the industry is coming forward to play such a marvelous role. So at the moment, the mutual fund industry tells us that a 500 rupee per month SIP is profitable for them. While many of them actually offer as low as 100 rupees a month, it is not profitable. They're sort of doing a bit of cross subsidy while they build up volume. We as a regulator know that unless it is viable, it will not be pushed. So we are working very closely with the industry to identify what are all the costs, including some of the regulation-driven costs, which is making this unviable at a 250 rupee SIP. So
again, it's something world over people cannot understand how a $3.50 per month investment can be made viable, but it is the magic of digitization. So for me, the journey of democratization is all about the journey of digitization. So hopefully very soon we will have Shakti Amma having little sachets of mutual fund units over there, 250 rupees a month top up. The next story is about the red, green and yellow. As I said, for us democratization not just to enter, sometimes there are disputes, sometimes consumers have grievances. If you don't have inclusion and democratization of that, you are again letting down your investor. So when we think of democratization, there must be democratization of this as well. At SEBI, we are about to launch on April 1st. I told them don't do April 1st, it's April Fool's Day. We are about to launch Scores 2.0. It's a new version. It's absolutely fantastic. You know, the way the entire workflow of handling consumer investor complaints is completely automated. It is linked to every other system in the market. So for instance, when you go there, in our version 1.0, when an investor went there, he had to register for his complaint and he had to put in his email ID, his phone number, his this, his that, to just register that he wants to put in a complaint. And we asked ourselves, why is he doing that? He's coming here to complain because he's already an investor. So we should be having his data. Why are we asking him to put it again, right? So we have to make it easy for that person that Mr. Kamath told us he wants to invest on behalf of. So now if he just puts in his PAN number, you all know PAN is essential in our country for being in the market, automatically the system talks to our KRA system and pulls all the data and says, this is your phone number, this is your email ID, this is your address, if this is you, please proceed. So simplifying it to this extent from the start of registration of a complaint to taking it to the end of an online dispute resolution mechanism of arbitration and mediation, the entire process with 3 levels of escalation for the consumer, for the investor, is something that has now been digitized. And the objective is democratize this thing for them, which is their dispute resolution. If you don't do that, you're just paying lip service to the fact that you allowed them in, but are you serving them in a democratic way? This one is a story of loss. You know, normally when we would think about loss in the markets, you would think somebody lost money in the markets, but for us this was not that loss. It was about the loss of a dear one. So if this person sat there or was standing there and got the news that his father or his mother passed away and he's just sitting there, that he's just lost his parents, that is grief, that is loss, that is pain. And what we said is, at a time like that, for us to give this investor the runaround and that he cannot claim the assets of his parents is just the most appalling thing possible. So what have we done about it? Again, full credit to the entire market ecosystem. About 50 odd legal heads across the ecosystem sat together, arrived at a common set of documents that they will all accept. And now if a person goes online and submits one set of transmission documents, death certificate, etc., across the entire market ecosystem, all mutual funds, all depositories, everything, you get, nobody will ask you for another document. So you have to be, this is what democratization is about, so that it's just easy for people even at a time like this. And if the regulator cannot empathize with loss, then of course we need to have our heads examined. Sorry. I do want to quote a few numbers. Shireen mentioned some. I love to quote Nandan. You know, he's the, I would say, the guru for all things digital. And when he highlighted this, you can see the numbers there. The numbers themselves are not important. You know, what we talk about the hockey stick effect at a company level, imagine this is the hockey stick effect at an ecosystem level. So the entire Indian ecosystem is one. It's not one company outperforming to deliver the hockey stick.
It is the entire ecosystem that is able to deliver this, and therefore the whole SEBI eases the know your client process by enabling online KYC, use of Aadhaar, etc. And look at the way in which that hockey stick effect is now achieved. And of course, the numbers show up that between 10 years ago, Nandan presented this last year. So what is the ratio of physical to digital forms? And on the back of this, the monthly systematic investment plans have multiplied by 6x. This number has gone up further since then. So it just shows that the hockey stick effect, when you really bring together the spirit of democratization, you can achieve it at an ecosystem level, not just as a company level. Mutual fund story is well known, and this is our favorite product for financial inclusion. So if you see the blue line, which is number of unique mutual fund investors, so deduped for PANs. So 10 years ago, we started with 1 crore, we're now at 4.4 crore. And the actual asset under management was 8 lakh crore, and we're now at 55 lakh crore. So it's just been a huge amount of growth again on the back of this whole democratization. This is my favorite slide. I use it quite often. When we think of the markets, invariably we all think of the share bazaar, let us say. But we have actually a very vibrant bond market. Now, people do not know this. People do not know this. So, two things I would like to say. Number one, some statistics. While the secondary market in bonds is not very active, and we're doing a bunch of stuff to try and improve that, in terms of the primary market issuance, okay, if you look at the total bonds outstanding today and compare it to the total banking loans to the corporate sector, it amounts to 60%, which means for every 100 rupees that the banking system gives to corporate India, the bond market gives 60 rupees. Most people are not aware as how large that number is. Now, specifically in this slide, what I like to talk about is we are expecting this to grow much more. Because with the inclusion of the Government of India securities in the global indices, right, that's already happened, JP Morgan, Bloomberg indices, we can expect to see a large amount of foreign interest in our Government of India securities. And once the Government of India yield curve is established, investors automatically tend to come into our corporate bonds as well, because then you just benchmark off the Government of India yield and add the credit spread. So until you have that yield, people don't have that much interest in corporate bonds. So we should see a good amount of inflow in the corporate bond market. And that's when, as people tell me, now you won't need to have an Indian hero there. So I said, we'll definitely put Akshay Kumar there in the same natty suit. So that's our bond market. Some of the things that we are doing, and this is really important again from a democratization point of view, one of the things that people used to worry about every time the markets were dislocated, the bond markets, they would say liquidity dries up. And people are stuck. Now, you remember what I said about democratizing not just entry but also exit. Something absolutely sparkling that this government has done, and it's gone relatively unnoticed, I feel sad about it, is something called the backstop facility, which the government has put in place with sovereign guarantee. Think about it. The government has said 30,000 crores of asset purchase program guaranteed by the Government of India in the event that there is a stress in the market and the mutual funds, the debt mutual funds are stuck and they don't want to sell at distressed prices in a dislocated market. They have actually sanctioned that guarantee. And what that means is that the fear that some people have, that because the markets are not so liquid, tomorrow if there's a crisis and the market freezes up, what will happen? Well, the government has stepped forward and actually said, well, we will stand behind the bond market. So this was a very, very important step taken by the government to really facilitate the growth of the bond market and to protect the investors. The second thing which SEBI did was to create a very specialized institution called the repo, Corporate Bond Repo Clearing Corporation. The reason this was important and what this slide is meant to demonstrate is the product was always there in the market. It was not getting used. And we realized that the exchanges were focused on equity,
will never have the management bandwidth to focus, eat, dream, drink, breathe the bond market. So we created a whole new institution, and we were told, you know, it's very hard to set up a new institution. Yes, it was hard, but it was created, and that again was a cooperative effort of the entire mutual fund industry. So, you know, this is, every time I narrate these stories, as I said in ASCO, people cannot believe how much cooperation and collaboration exists in our ecosystem for people to come together to grow the market. So this is an institution, and I'm very proud to say, I believe in February they crossed 10,000 crores of repo on corporate bonds. That's what focus brings. This is one of my favorite products for the future, REITs. I believe that, you know, there's just so much latent demand in our country for real estate, and for each of us to own a little bit of that action and that wealth creation, and to try and participate in what can potentially be an inflation-proof income is so important. Again, we have found that when we shared this vision with the industry and said that in order to retailize, in order to democratize REITs, we need higher levels of disclosure and compliance. I cannot tell you the cooperation we got, and they've all agreed to a much higher level of disclosure and compliance so that the regulator has comfort to really retailize this product. And of course, consequently, we went ahead and announced something called the small and medium REITs, which means that even assets as small as 50 crores, otherwise our threshold was 500 crores, so only the big boys were participating. We brought it down to a 50 crore asset, and we've reduced the investment size for just folks like you and us and everybody else to be a part of this entire area which is set to grow. Our own back of the envelope calculation tells us that over the next 10 to 15 years, the REIT, InvIT and Muni bond market will be as large as our equity market today, 1 time GDP. That is our belief. So where is that growth going to come from? Where is the capital formation going to come from? This is what our belief is, that this little piece of heaven, this little piece of real estate, this little piece of infrastructure, democratized across millions and millions of people, is what is going to create the next 1 time GDP market for our country. I think one additional step that we took towards democratization of what we call the issuers. This was all about the investors. Now what about the issuers? We recently inaugurated the listing of 5 NGOs on our social stock exchange. Again, many people told us it's not worked anywhere in the world. Why will it work in India, X, Y, Z? And our belief was no. A, we will make it work because we have the technology and we can take it far and wide. And B, we have again faith in our ecosystem which has done so much. And therefore, we actually saw 5 NGOs listing together very recently last week as the first set of NGOs to list and make available a very transparent and trustworthy ecosystem for people to donate. So that's our social stock exchange in terms of creating democratization of issuers. Now even a non-profit can be an issuer. How do we achieve all this? And I'm often asked this question, and I think the answer is very simple. On the one hand, of course, technology. I mean, there's just no doubt about that. But the second is co-creation. You know, everything we do is co-created with industry. SEBI has always had a very rich tradition of doing very extensive discussion and very rich advisory committees on policy making. The big step we took about a year ago was that we moved that spirit of cooperation and co-creation into standard setting. So we've set up something called Industry Standards Forum, which set down the standards for implementation of SEBI regulations. And the amount of work that has happened in this last, I would say, 7-8 months, and the kind of, ease of compliance that has been brought about. So SEBI had to make some changes because when a logical argument was presented to us, obviously we're going to listen to it. The industry came up with some brilliant ideas on how to do that. So the entire spirit of co-creation has been extended and democratized. So it's one more form of democratization, that the regulator does not have a monopoly on policy making. Regulator also does not have a monopoly on standard making.
So this spirit of collaboration and co-creation is one of, I think, the biggest strengths of India, along with our technology. On the technology, of course, as I said, it's just there for everybody to see, and Shireen and I were speaking that many people across the world cannot even understand how we can implement 90-day projects. People say we barely get our terms of reference in place in 90 days, and you guys just sort of implement things. So it just comes from, I think, the speed, the attitude, the talent. So many of our young people are tech-oriented, quant-oriented. So all of this really is a huge advantage for us as a country. And therefore, with this entire democratization for the investor, for the issuer, for decision making, for policy making, all of this together is really wonderful to look at it and say that this market, therefore, is contributing to capital formation for the real economy, and that's where the driver of growth is going to come from. And at the same time, it is creating wealth in the hands of our citizens. And what a beautiful win-win outcome that is. And that's all thanks to the democratization of the capital markets. Thank you. Thank you, Madhavi ji. Fantastic as ever. And such a pleasure to have you here with us. And thank you for making the time. Really appreciate it. Ladies and gentlemen, you can be a little more generous with your applause, please. Thank you very much. Thank you. And now I have to request all of you to cooperate with us, and very humbly so, because we now have to follow the SPG security protocols ahead of the Prime Minister gracing this Rising Bharat Summit, ladies and gentlemen. In exactly about 90 minutes from now, Prime Minister Narendra Modi will be here with us to address this gathering. Leading for Global Good is the theme. Rising Bharat Summit concludes with that grand finale with the address of Prime Minister Narendra Modi, the most popular leader in current times. Now here's what we'll have to do. We'll have to make our way out, and we have to clear the Darbar Hall for now. And I request all of you to please cooperate, because there will be yet another round of checking and frisking. Please try and avoid carrying battery packs or electronic gadgets with you on your way back in. Around 7 p.m. we will start letting people in as soon as we get the thumbs up from the SPG. Everybody has to make their way out, and you have to come back in, and we'll have to do it in an orderly manner. Everybody, I mean everybody, will be checked. So there's nobody who can come out and say, Meri checking ki zarurat nahi hai, sabke checking ki zarurat hai. Everybody's going to get checked. I request you to please be orderly. Allow the ladies to make their way out, plus. Let's not crowd around the exit door. One by one, please. And all our guests, all our attendees are requested humbly to please cooperate. And there will be some specific seating in some areas that will be marked out for some specific guests, and also to adhere to the SPG protocols. Kindly cooperate and help us put up a fantastic evening. Thank you. भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे, और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए उस लौह पुरुष की जैसी एक भारत के प्रति अड़ी निष्ठा रखते हुए आज हमारे गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह। स्वागत करना चाहेंगे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, जिनसे वार्ता करेंगे श्री राहुल जोशी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप एडिटर इन चीफ, नेटवर्क 18। अमित जी, आपका हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सुना है कि कल सुबह 4 बजे तक मीटिंग चल रही थी, कल आप हमारे साथ नहीं जुड़ सके, आज आप आए हैं। तो
स्वाभाविक है कि बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं और आपके ही पास सारे जवाब भी हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार का जो माहौल है, 2014 में मोदी जी की एक बड़ी वेव थी, लोग सीट प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जीतेंगे, कितने से जीतेंगे। 2019 में भी बालाकोट हुआ, उसके बाद माहौल बदला और लोगों ने फिर प्रेडिक्ट करना एक मिनट, बालाकोट के पहले से ही माहौल भाजपा के पक्ष में था और हम जीतने वाले। पर इस बार अमित जी, इस बार तो कुछ अलग ही नंबर और आंकड़े आ रहे हैं। 370 एक बहुत बोल्ड आपने टारगेट लिया है, 400 पार एनडीए के लिए। तो इस बार वेव इलेक्शन देखते हैं आप, इसको क्या कारण है कि आपको एक कॉन्फिडेंस है कि 370 सीटें मिलेंगी बीजेपी को? देखिए, ये 10 साल है 2014 से 24 के। आजादी के बाद के 75 साल में जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, मोदी जी के शासन के 10 साल स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होने वाले हैं। ये 10 साल में भारत की जनता अनुभव कर रही है, एक देश की नई पहचान समग्र विश्व के सामने खड़ी हुई है। देश का हर नागरिक सम्मान के साथ कहता है कि हाँ मैं भारतीय हूं, गर्व के साथ कहता है हाँ मैं भारतीय हूं। और दुनिया में जहां जहां भी भारतीय पासपोर्ट के साथ जो कोई भी जाता है, इसका बड़ा सम्मान होता है। ये 10 साल में विकास की प्रक्रिया से पूर्णतया कटे हुए 60 करोड़ गरीब, जिनको 70 साल की आजादी के बाद भी बैंक अकाउंट नसीब नहीं हुआ था, घर में टॉयलेट नहीं था, घर में गैस नहीं था, घर में बिजली नहीं मिली थी, नल से पानी नहीं मिला था, खाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। ये 10 साल के अंदर ही, सिर्फ 10 साल के अंदर हरेक को बैंक अकाउंट, हरेक घर में नल से जल, हरेक घर में शौचालय, हरेक घर में गैस और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं पूरी की है। और हर गरीब को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज आज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। एक प्रकार से ये 60 करोड़ लोगों को भारत के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये 10 साल के अंदर ही देश जिसकी बड़े समय से राह देखता था कि भारत अपने अर्थतंत्र को दुनिया की तालिका में बहुत आगे पहुंचा है। अटल जी 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में 11वें का 11वां मेंटेन किया और मोदी जी ने 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा है। और मैं आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को कहने आया हूं, ये मोदी गारंटी है, तीसरे कार्यकाल का आशीर्वाद दे दीजिए। हम तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत दुनिया की बन कर रहे हैं। ये 10 साल में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बना है। ये 10 साल में डिजिटल क्रांति सब्जी वाली से लेकर बड़े बड़े कॉरपोरेट तक ट्रांसलेट कर गई है। ये 10 साल के अंदर भारत के स्टार्टअप दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं। ये 10 साल के अंदर ही एक सर्वग्राही, सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशी शिक्षा नीति का आगाज हुआ है, जो अपनी भाषाओं पर तो गौरव करता है, दुनिया भर की आधुनिक से आधुनिक चीजों को समाहित करते हुए विश्व के मंच पर भारत के युवा को खड़ा रहने की ताकत देता है। ये 10 साल के अंदर भारत सुरक्षित हुआ है। आए दिन बम धमाके कर जाने वाले पड़ोसियों को मैसेज दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया करने का दम भारत में है। ये 10 साल के अंदर सालों पुराने मसले जैसे धारा 370 हटाना, 35 से हटाना, राम मंदिर का निर्माण करना, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाना, ट्रिपल तलाक समाप्त करना, सीएए लाना, ढेर सारे यूसीसी लाना, ढेर सारे मसले जिसको छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था, मोदी जी ने हिम्मत के साथ उसको निरस्त किया है और सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से जमीन पर उतारने का काम किया है। 10 साल
भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी स्वर्णिम अक्षर से लिखे जाएंगे। हम 3 हॉटस्पॉट से ग्रसित थे, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद। मोदी जी के समय में, ये 10 साल में कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों जगह पे लगभग 75% हिंसा कम हुई है और वहां विकास का शुरुआत हुआ है। और ये 10 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि है। पहले देश के विकास के लिए सिर्फ सरकारें लगा करती थी, नरेंद्र मोदी जी ने महान भारत का संकल्प 130 करोड़ लोगों के स्वप्न बनाकर रखा है और मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ लोग जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा 15 अगस्त 2047 को, तब महान भारत की रचना के लिए कटिबद्ध है और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा। आप जो कहते हो कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य 400 पार का है। कमल के निशान पर हम 370 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और ये लक्ष्य सिद्ध इसलिए होगा कि भारत की जनता की आशा, आकांक्षा और सपनों को पहली बार कोई प्रधानमंत्री फ्रंट पर से लीड कर गरीब के साथ खड़ा रहकर, युवा के कंधे पर हाथ रखकर, गरीब बहन का भाई बनकर आज इनके स्वप्नों को पूरा कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी, एनडीए 400 पार करेगी और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। धन्यवाद। आपने मेरे एक ही सवाल में 3-4 जवाब दे दिए, तो ये माहौल, अब मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछता हूं। सबसे पहले जो मुद्दा इस चुनाव के पहले जो गर्म हो गया है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में मैं ये पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आपको क्या लगता है कि इससे ब्लैक मनी वापस आएगा? जो कॉन्फिडेंशियल नाम थे लोगों के, जिस वजह से लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, वो आज जो है सब सामने आ गए हैं। तो क्या ये उचित है और आप इसके बारे में आगे क्या सोचते हैं? देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाती है, देश के सभी नागरिक इससे बंधे हुए हैं। हम एक संवैधानिक व्यवस्था में रहे। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, मगर मेरा व्यक्तिगत मत जरूर देना चाहता हूं कि बॉन्ड से काला धन समाप्त होने के कगार पर था और इस फैसले से चुनावी व्यवस्था में फिर से काले धन का दबदबा बढ़ेगा। इसीलिए राहुल जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस बॉन्ड के खिलाफ था और वो चाहते थे कि पहले की तरह जो कट मनी आता था वो कट मनी फिर से एक बार राजनीति पर हावी हो। पहले क्या होता था, चंदा कैश में आता था और चंदा कैश में आता था तो क्या होता था, कोई व्यक्ति मानो 1500 रुपया चंदा जमा कराता था, 100 रुपया वो पार्टी में जमा कराते थे, 1400 रुपया अपने घर ले जाते थे और स्विस बैंक के अंदर या कहीं और जहां टैक्स डिस्क्लोज नहीं होता है, चंदे डिस्क्लोज नहीं होते हैं, धन डिस्क्लोज नहीं होता है, ऐसे देश में ले जाते थे। बॉन्ड आने से ये पूरा पैसा चेक के माध्यम से पार्टी के अकाउंट में जमा होता था। ये पूरी जो जमात है राहुल जी के नेतृत्व में, वो पुरानी चीजों की आदी है। उनको यही चाहिए कि पार्टी को चंदा मिले न मिले, चुनाव के लिए खर्च हो न हो, अपनी पीढ़ियां बहुत अच्छे तरीके से जी पाएं। और इस चीज को मोदी जी ने बॉन्ड लाकर इस पर कुठाराघात किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी पार्टी की बात बताता हूं। 2014 में मेरी पार्टी में जो चंदा आता था, इसमें से 81% चंदा कैश से आता था, जिसमें किसी का नाम नहीं होता था। 20-20 हजार रुपया कर जमा करते थे। 18 में ये 81% से 17% हुआ। 18 में एंड पे भी ये 17% पर रहा और 2023 पर कम होकर 3% पर आ गया था। हमारी पार्टी ने इसको ट्रांसपेरेंट वे से आगे किया था। जहां तक गोपनीयता का सवाल है, इसमें इतना ही है कि बहुत बड़ा देश है, हमने फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया है, ढेर सारे राजनीतिक दलों की सरकार होती है। अगर कोई एक राजनीतिक दल को पैसा देता है तो दूसरा राजनीतिक दल उस पर विंडिक्टिव अप्रोच से अपने स्टेट के अंदर बदला लेता है। इसलिए एक व्यवस्था रखी थी जिससे किसने किसको चंदा दिया वो गोपनीय रहे। मगर इसमें गोपनीय नहीं रहता था किस कंपनी ने कितना चंदा दिया और किस पार्टी को कितना मिला।
अब जो व्यवस्था होगी इसमें किसने कितना दिया वो भी गोपनीय हो जाएगा, क्योंकि सारा कैश में देना है, और किस पार्टी को कितना मिला वो भी गोपनीय हो जाएगा, क्योंकि कैश से लेना है। और कैश से लेना तो छोड़ो, घर पे ले जाने की व्यवस्था भी इसमें से हो गई। और हम पर एक आरोप लगता है राहुल जी कि हमें बहुत सारा चंदा मिला है, ये मिथ्या है। सर 6,900 करोड़ 6,200 करोड़ हमें मिला है। इसके सामने 6,200 करोड़ राहुल बाबा के नेतृत्व में चलने वाले इंडिया अलायंस को मिला है, जबकि हमारी 303 सीटें हैं। उनकी लोकसभा में कितनी सीटें हैं? हमारी 17 सरकारें हैं, हमारी हर राज्य में पार्टी चल रही है। और एक काम के सामने चंदे का जो सवाल है वो भी गलत है, क्योंकि 2019 लोकसभा में हमें जो 6,000 करोड़ मिला, इसमें से 2019 लोकसभा के समय पर जो बॉन्ड खुले हैं इसमें 3,071 करोड़ चंदा मिला है। तो आप जाहिर है जब आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है तो कोई काम के सामने चंदा नहीं होता है। और विधानसभा के चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हमें 2,640 करोड़ रुपया मिला है। उस वक्त भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोई काम नहीं होता है। तो 90% से ज्यादा चंदा बॉन्ड से हमें कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद मिला है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं बड़े बड़े धाराशास्त्री, जो ये पूरी सिस्टम के फायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि वो भी राजनेता ही है ज्यादातर, चंदे वाली कैश चंदे वाली व्यवस्था का फायदा उठाने वाले, वो उनका आर्ग्यूमेंट था कि इससे सरकारी नीतियां प्रभावित होती है। उनको ये मालूम नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट बनने के बाद कोई नीति आ नहीं सकती। तो ज्यादातर चंदा तो कोड ऑफ कंडक्ट के समय में हमारा आया है, 90% चंदा। राहुल जी इसको हफ्ता वसूली कहते हैं, खुद भी 1,400 करोड़ उनको मिला उनकी पार्टी को। ठीक है, तो फिर उन्होंने 1,600 करोड़ का हफ्ता क्यों वसूला, वो उसका हिसाब देना चाहिए। 1,600 करोड़ उनको भी मिला है, हमें 6,000 करोड़ मिला है, तो सामने सारे इंडिया अलायंस घमंडिया गठबंधन को भी 6,000 करोड़ मिला है, एक पैसा कम नहीं मिला है। राहुल जी ने सबसे पहले वो चंदा कहां से वसूल लाए, हफ्ता कहां से वसूल लाए, इसका हिसाब। हम तो कहते हैं इसमें एक पैसा हफ्ता नहीं है, ये शुद्ध रूप से पारदर्शी तरीके से लाया गया चंदा है। मगर वो खुद स्वीकार कर रहे हैं बॉन्ड की व्यवस्था हफ्ता वसूली है, तो उन्होंने 6,000 करोड़ का हिसाब देना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस कहां से लाई, वो कहां से लाए हैं, एनसीपी कहां से लाई है। अमित जी, कुछ पार्टीज ने अपनी जो है लिस्ट ऑफ डोनर्स को घोषित किया है, क्या आप कोई भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करेगी? भाई क्या घोषित कर रहे हो, कल सारा घोषित हो जाने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं, बताने जा रहा हूं, घोषित कल होगा। ये मुंह नहीं दिखा पाएंगे, इंडिया अलायंस मुंह नहीं दिखा पाएगा। जब पता चलेगा कि कहां से, जब पता चलेगा चंदा कहां से आए। ये समझे बगैर कुछ लॉयरों के दिए हुए चीट पढ़ पढ़कर भाषण करते हैं राहुल गांधी, उनको मालूम नहीं है कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। एक चीज जो और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बोला जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि काफी सारा करीब 14 कंपनियों का पैसा जो है करीब 4,000 करोड़, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्होंने तब खरीदे हैं जब उनके वहां कोई किसी प्रकार की इंटेलिजेंस एजेंसी की रेड हुई है, जैसे कि ईडी या सीबीआई। मैंने आपको बताया कि वो हो सकता है वो 6,000 करोड़ में हुआ हो जो घमंडिया गठबंधन को मिला है। हमारा जहां तक सवाल है, चुनाव के 40 दिन में हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप ये कह रहे हैं कि जिनमें रेड हुई है वो जरूरी नहीं कि उन्होंने बीजेपी को पैसा दिया। हाँ, अभी आएगा ना, मैं कह रहा हूं। अच्छा, कल आप कह रहे हैं जब आएगा कल तो सारा दूध का दूध आएगा, और पानी का पानी, पानी का पानी हो जाएगा। चलिए उसका इंतजार करेंगे, वापस आपसे फिर उससे सवाल करेंगे। एक इससे लगा हुआ सवाल है तो पूछकर इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं कि ऑपोजिशन का कहना है कि ईडी की रेड हो, इनकम टैक्स की रेड हो, सीबीआई की रेड हो, वो हर बार ऑपोजिशन लीडर्स पर ही क्यों पड़ती है? भारतीय जनता पार्टी के लीडर क्या सब साफ सुथरे? ये एकदम सफेद झूठ है। मैं देश की जनता के सामने कहना चाहता हूं, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद काले धन पर कठोर कार्यवाही हुई है, ईडी काले धन पर कार्यवाही कर रही है, और ईडी ने जितनी भी संपत्तियां कुर्क की है उसमें से 5% ही राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों की है, 95% काले धन वाले की। ये भी काला ही धन है, मगर वो ऐसा चाहते हैं व्यवस्था जिसमें राजनेता पर कोई कार्यवाही ही न हो। मैं आपको स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि 95% कार्यवाही ऐसे लोगों पर हुई है जो राजनीति से जुड़े हुए ही नहीं, और ये बिल्कुल सरासर। और
ममता जी के मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया मिलता है, कांग्रेस के सांसद के घर से 355 करोड़ मिलता है। 10 मशीन एसबीआई की गिनते गिनते थक जाती है, गर्म हो जाती है, और ये कहते हैं कार्यवाही ना हो। भैया कार्यवाही का सवाल मत उठाओ, तेरे सांसद के घर से 350 करोड़ कहां से आया वो सबसे बड़ा सवाल है। ममता के मिनिस्टर के घर से 55 करोड़ कहां से आया वो बड़ा सवाल है। क्या समझते हो, जनता कुछ देखती नहीं है? तो क्या नोटों की गड्डियां भरने के लिए मेटाडोर लाने पड़ते, एक मेटाडोर छोटा पड़ गया, दूसरा मेटाडोर रात को 4 बजे लाना पड़ा। ये कहां जाने वाला था पैसा? राहुल बाबा बता सकते हैं देश की जनता को? ये 355 करोड़ जो कांग्रेस के सांसद के घर से पकड़े, किसके? इसका जवाब देना चाहिए उनको, और बाद में ईडी कार्यवाही नहीं करे। ऐसा नहीं होगा। जो करप्शन करेगा उस पर कठोर कार्यवाही होगी और जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे। और जहां तक सवाल है बीजेपी के नेताओं का सवाल है, इस देश में कोर्ट है। जब हम ऑपोजिशन में थे ढेर सारे पीआई लगाए थे आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए थे। 42 पीआईएल हुए थे। 42 पीआईएल में से 35 में ऑर्डर हुए थे, और आपकी ही सरकार ने आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ी। अगर हिम्मत है तो जाए कोर्ट में। और मैं कहता हूं ये 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाला इंडिया अलायंस एक कांग्रेस पार्टी लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए, भ्रमित करने के लिए कह रही है। वास्तविकता है 23 साल से नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं, उन पर 25 पैसे का आरोप देश में आज तक कोई नहीं लगा। तो ये वास्तविकता। तो अमित जी, क्या आप देश की जनता को आश्वस्त करेंगे कि अगर इस तरह के कोई नेता जिन पर कार्यवाही चल रही है वो पलटकर बीजेपी भी ज्वाइन करते हैं? भाई आश्वस्त करने की जरूर नहीं भैया। राहुल तुम भी पत्रकार हो, तुम चले जाओ कोर्ट में कि फला नेता का ये काला भ्रष्टाचार है, आप इस पर कार्यवाही। कोर्ट सबको ऑर्डर देती है, तुम ही चले जाओ ना, छोड़ो इंडिया अलायंस। मैं सिर्फ सवाल पूछने तक ही सीमित रखता हूं अपने रोल को। अगला सवाल अमित जी, जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है पॉलिटिकल डिस्कोर्स गिरता जा रहा है। हमने पहले भी देखा है, पहले भी चुनाव हुए हैं, शुरू में तो लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं, ऑपोजिशन भी बड़े मुद्दों पर अटैक करता है, पर जैसे जैसे पास आता जाता है स्तर गिरता जाता है। अब लोग कह रहे हैं कि मोदी को गोली मार देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इस तरह का जो डिस्कोर्स और वरिष्ठ नेताओं से आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ने जो सार्वजनिक जीवन में जीते हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मगर मैं आपसे पूर्णतः सहमत इसलिए नहीं हूं। ढेर सारी बातें होती हैं, अच्छी बातें होती है, जायज विरोध भी किया जाता है, विकास की बातें होती है, एजेंडे की बातें होती है, भारत के विकास की भी बातें होती है। मगर आप लोगों का ध्यान वो कंट्रोवर्शियल 1-1.5 मिनट पर ही टिका हुआ होता है, क्योंकि आपकी टीआरपी इससे जुड़ी हुई है। मेरे इंटरव्यू में से भारत का अच्छा क्या हुआ वो नहीं निकालोगे आप। सीए निकालोगे, 370 निकालोगे, ईडी निकालोगे, ये आपका काम है। खैर मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर मुझे जनता को भी बताना चाहिए। बात को पूरी सुनिए, सब अच्छी बातें भी होती है, ऑपोजिशन भी अच्छे विरोध के मुद्दे लेकर हमारा विरोध करता है। ऐसा नहीं है कि देश में गाली गलौज की राजनीति हुई है, ये बात सही है आपकी। मोदी जी पर कुछ ज्यादा प्रेम है इन लोगों को, तो जब भी चुनाव आता है मोदी जी को गालियां बोलते हैं। मगर एक रिकॉर्ड है मोदी जी का 2001 से, जितनी गालियां ज्यादा पड़ती है, कमल इतना जोर से खिलता है, मोदी जी ज्यादा बहुमत पर। और इस बार भी यही होने, किसी के कहने से कोई मरता नहीं। मोदी जी के साथ इस देश की करोड़ों माताओं का आशीर्वाद है, जिसको गैस मिला है, घर मिला है, सुरक्षा मिली है, खाना मिला है, दवाइयां मिली है। कोई 1-2 लोगों की बद्दुआ से कोई फर्क नहीं पड़ सकता। जिस व्यक्ति को देश के करोड़ों लोगों की दुआ हासिल हो, इसको कोई कुछ नहीं बिगाड़। थोड़ा बड़े मुद्दे की ओर जाते हैं। ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने कास्ट सेंसस की बात करी है। कास्ट सेंसस के बारे में आपका क्या मत है, और जितनी आबादी उतना हक, उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कमोबेश अभी भी जितनी आबादी उसका उतना हिस्सेदारी। आप देश की संसद का अभी का मानचित्र उठाकर देख लीजिए, यही हुआ है। परंतु राहुल गांधी को कम से कम ये बात करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि काका साहेब कालेलकर कमीशन, जिसने सबसे पहले बीसी को रिजर्वेशन की बात करी थी, वो कमीशन कम से कम 30 साल तक
कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में रखा और कभी इसका उसको ओपन नहीं किया गया, अमल नहीं किया गया। उसके बाद में मंडल कमीशन आया, इसको भी कांग्रेस थी तब तक उन्होंने ठंडे बस्ते में रखा। और जब मंडल कमीशन को लागू किया गया, राहुल गांधी के पिताजी, शायद उनको मालूम नहीं इनके पिताजी क्या बोले हैं, परंतु देश की संसद में 1 घंटा और 45 मिनट तक ओबीसी को रिजर्वेशन की खिलाफत पानी पी पी कर 6 बार पानी पिए वो बीच में पानी पी पी कर राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा था ओबीसी को पहली बार संवैधानिक अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये ओबीसी के सेक्रेटरीज गिनाते हैं जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी गिनाते हैं। टॉप 70-80 में कुछ 2-3 हैं, 2-3 उनको मालूम नहीं है। भारत सरकार में जो टॉप पर आता है करीब करीब 55 से 60 साल के बीच में होता है जी। इसकी भर्ती कब हुई होगी राहुल जी? जी जी आपके दादी और परनाना के समय में भर्ती हुई है, ये अब यहां पहुंचे, उनको मालूम नहीं है। और इनको टॉप सेक्रेटरीज दिखाई पड़ते हैं जो उन्होंने भर्ती करे थे। मोदी जी की कैबिनेट में 27 ओबीसी मंत्री हुए और देश का प्रधानमंत्री भी ओबीसी है, उनको ये नहीं दिखाई पड़ता। एक्चुअल में इनकी प्रॉब्लम है कि वो स्टडी ही नहीं करते, जो उनको पकड़ा देते हैं अंग्रेजी में लिखा हुआ वो सीधा पढ़ जाते हैं दुनिया के सामने, इसलिए वो फंसते हैं। अभी बात कर रहे थे कि एक शक्ति है जिसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं और उसको मोदी जी ने उस पर हमला किया और कहा कि ये नारी शक्ति का अपमान है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनको ना हमारी परंपराओं का जानकारी है, ना हमारी परंपराओं का सम्मान है। शक्ति का कंसेप्ट हमारे देश के अंदर सालों से 10,000 साल से मातृशक्ति को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है जी। माँ के आशीर्वाद से कोई बड़ा आशीर्वाद हो नहीं सकता, बहन के प्यार से, स्नेह से बड़ा कोई प्यार हो नहीं सकता। उनको मालूम नहीं है क्या बोल रहे हैं। मोदी जी के साथ इस देश की मातृशक्ति चट्टान की तरह खड़ी है और राहुल जी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो अभी 2-3 दिन में जितना भी फील्ड में बात हुआ है, सभी जगह से देश भर की महिलाओं ने ठाना है कि शक्ति का परिचय इस बार राहुल गांधी को जरूर कराना है चुनाव में। ये मैंने सब जगह से पाया है। और मैं देश की मातृशक्ति का भी आह्वान करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद देश की महिलाओं के कब से आकांक्षा थी कि नीति विषयक निर्णय करने में और देश के कानून बनाने में देश की माताओं बहनों की हिस्सेदारी हो, और वो मांग कोई पूरी नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण संसद में और विधानसभा में माताओं बहनों को देकर शक्ति का सम्मान किया है। और इस संसद के बाद 20वीं संसद जब आएगी तब आप देखना 33% माताएं बहनें अंदर बैठी होगी, पूरी दुनिया देखेगी भारत की मातृशक्ति की शक्ति क्या है और उसका सम्मान कैसे हो सकता है। राहुल गांधी ये सारी चीजें नहीं समझ पाए। अमित जी, एक मुद्दा जो आपके भी काफी करीब है, सीएए का मुद्दा। आज कोर्ट ने भी स्टे देने से इनकार कर दिया सीएए के लिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये आपने जो है पारित बहुत पहले किया था, इसको जो है अभी आपने नोटिफाई इतने दिनों बाद क्यों किया, इतना गैप के बाद? क्या चुनाव आपके उसमें था? ऐसा नहीं था राहुल जी। सीएए पारित होने के बाद देश में एक बड़ी गलतफहमी फैलाई गई और इतने में कोविड आ गया। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है, जब किसी सच्ची चीज के लिए गलतफहमी फैलाई जाती है तो जो पार्टी इन पावर होती है इसका दायित्व होता है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाए। एक भ्रमित किया गया, ऑपोजिशन ने अपनी वोट बैंक जीवित करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए भ्रांति फैलाई गई कि सीएए से इस देश की माइनॉरिटीज का, विशेष कर मुस्लिम भाइयों बहनों का मताधिकार, नागरिकत्व छीन लिया जाएगा, जबकि है उल्टा। सीएए से किसी का नागरिकता नहीं जाने वाला है। सीएए नागरिकता देने का कानून है। सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, हिंदू, जो सारे भाई 3 देशों से प्रताड़ित होकर आए हैं, वो सालों से यहां बैठे हैं, उनके पास नागरिकता नहीं है, उनके नाम से संपत्ति नहीं खरीद सकते, सरकारी नौकरी नहीं ले सकते जी। किस प्रकार से इनका जीवन व्यतीत होगा? एक करोड़ों लोगों की परेशानी को कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं था। वो अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ही मशगूल थे।
और पूरी भ्रांति फैलाई कि सीएए से देश से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं फिर से एक बार, अनेक बार कर चुका हूं, फिर से एक बार स्पष्टता करना चाहता हूं, इस देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। सीएए नागरिकता लेने का कानून ही नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। और जहां तक सीएए का सवाल है, एक कांग्रेस के आजादी के वक्त महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, सबका वादा था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आएंगे वो सारे शरणार्थियों को हम नागरिकता देंगे। वो वादा कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया, वो वादा हम पूरा कर रहे हैं। वो एक प्रकार से नेहरू लियाकत पैक्ट का इंप्लीमेंटेशन है। मगर राहुल जी का ये सारे ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट से लेना देना ही नहीं है। वो चीट पढ़कर बोलने वाले नेता है, चीट में इतनी सारी बातें आती नहीं है। केजरीवाल जी, ममता जी, राहुल जी, सबका कहना यह है कि जब देश में खुद ही नौकरी और खाने पीने की इतनी समस्याएं हैं, तो जब इतने घुसपैठिए और आ जाएंगे तो इनको हम लोग नौकरियां कहां से देंगे? घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठिए और शरणार्थी में फर्क होता है। और मैं केजरीवाल जी, राहुल जी, ममता जी सबको कहता हूं, अगर देश के युवाओं की नौकरी की चिंता है तो आप बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यास के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों जुबान सिल जाती है आपकी? इसलिए सुल जाती है कि आप अपनी वोट बैंक को हट कर रहे हो। शरणार्थी जो होता है वो प्रताड़ित होकर यहां आता है। अभी मैं आपको बताता हूं, अफगानिस्तान में निजाम बदला, सारे लोग इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे। सैकड़ों हजारों सिख भाई पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को लेकर यहां है। क्या करें उनका? वो घुसपैठिए है क्या? हर सिख भाई बहन का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका है। हर हिंदू भाई बहन का इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका है। इसको घुसपैठिए करार देना ठीक नहीं है। और जहां तक नौकरियों का सवाल है, वो पहले से यहां रह रहे, आज रह ही रहे हैं जी। कहां लोड डालने का सवाल है? और केजरीवाल कहते हैं क्या खाएंगे? केजरीवाल जी, आपको अगर प्रॉब्लम है तो 5 किलो अनाज की अर्जी कर दो, आपको भी दे देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। मोदी जी हर एक को 5 किलो अनाज दे रहे। ये सारे लोग यहीं रह रहे हैं, कहां नहीं कोई व्यवस्था करनी। इनको अधिकृत नागरिक बनाना है, उनको सम्मान देना है, उनको अपना मानना है, इसको इस भूमि का हिस्सा बनाना है जो उनका अधिकार है। और इस तरह से देश को बांटने की बातें नहीं करनी चाहिए। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और यूएस एम्बेसडर ने भी सीए पे टिप्पणी की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं मानता हूं कि उनको पूरी तथ्य की जानकारी नहीं होगी। भारत सरकार का विदेश विभाग क्लैरिफिकेशन दे चुका है, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। परंतु मैं इतना फर्मली कहना चाहता हूं, नागरिकता किसको देनी ये मेरे देश का अधिकार है और ये अधिकार में कोई दखल नहीं। चुनाव पास आ रहा है, अभी कुछ खबर आ रही है कि चाइनीज मिलिट्री ने कुछ दिनों पहले कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है उनका एक अभिन्न अंग है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये जवाहरलाल नेहरू के समय से कह रहे हैं जी। और बहुत बड़ा हिस्सा वो उस वक्त हड़प भी कर गए। मेरा तो जन्म नहीं हुआ था 1962 में जी। परंतु ये मोदी सरकार है, 1 इंच भी जमीन देश की किसी भी सरहद पर कोई नहीं ले सकता। ये हमारा भारत की जनता को वादा है। अमित जी, एक सीए से रिलेटेड सवाल है और आपने भी पहले इसकी बात की हुई है कि ये क्रोनोलॉजी की बात हुई थी कि सीए के बाद एनआरसी आएगा। एनआरसी की बात आजकल कम हो रही है, क्या इसको ये माना जाए कि इस मैनिफेस्टो में ये रहेगा या नहीं रहेगा? ऐसा है जी। राहुल जी, ये भ्रांति फैलाई जा रही है। एनआरसी कांग्रेस के वक्त आया हुआ कंसेप्ट है। एनआरपी चिदम्बरम साहब जब गृह मंत्री थे, गवर्नमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, हमने इसको आगे बढ़ाया। मगर सीएए का जो कानून है, इसके अंदर कहीं एनआरसी का प्रोविजन नहीं है, कहीं एनआरसी के जिन्स भी नहीं है। कृपया देश की माइनॉरिटी को डराना बंद करिए, स्पष्टता से बताइए कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जा सकती, और ये वास्तविकता है। नहीं, पर एनआरसी क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में होगा? अगले टर्म में इसको देखेंगे? अब मैं तो मैनिफेस्टो कमेटी में अभी ड्राफ्ट कोई आया नहीं है, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने आएगा तब देखेंगे। परंतु मैं इस मंच से इसकी घोषणा भी नहीं कर सकता, परंतु मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अभी देश के सामने सीए का कानून है जिसमें एनआरसी के कोई वायरस नहीं है।
क्या कहते हैं, इस पिछले आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें आप लोगों ने बहुत बड़े काम किए, 370, अभी सीएए की हम लोग बात कर रहे थे, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हुई है और इसको आपने जो है उत्तराखंड के गवर्नमेंट के उसके माध्यम से शुरुआत भी की है। तो क्या अगले 5 साल में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? आपके मैनिफेस्टो आपने कहा कि अभी आप नहीं बता सकते, मगर आप राहुल जी, यूसीसी लोकभोग्य भाषा में कॉमन सिविल कोड, ये आज से हमारा मुद्दा नहीं है जी, 1950 से हमारा मुद्दा है। इसके लिए मेरी पार्टी ने आंदोलन किया है, जनसंघ था तब से करा है और हम इससे हट नहीं सकते हैं। हम मानते हैं कि पंथ निरपेक्ष देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, इसमें किसी से कोई मतभेद, और हम इस बात को जनता के सामने मुखरता के साथ रखेंगे। उत्तराखंड सरकार यूसीसी लेकर आई है और इस यूसीसी पर इसकी अब सोशल, लीगल, जुडिशियल सभी प्रकार की स्क्रूटिनी होगी और उसके बाद में कोई एक कॉमन मत भी बनेगा देश का। परंतु यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता को वादा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, ये सभी ने एक कानून से जीना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता में कोई दखल नहीं करनी चाहिए, लग्न की पद्धति क्या हो अपने अपने धर्म के हिसाब से हो, परंतु कानून एक होना चाहिए। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने तय की हुई बात है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। हमने यूसीसी को हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स में एक्सेप्ट किया था, जिसको अंबेडकर जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल जी, राजेंद्र बाबू सब ने स्वीकारा था। ये सारे कांग्रेस के नेता थे जी, और सब ने स्वीकारा था कि उचित समय पर देश के विधानमंडल और देश की संसद इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। एक आदर्श हमारे सामने रखा था, जो पूरी करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने इसको आगे बढ़ाया। डीएमके ने आज जो है अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर वो सरकार, उनकी सरकार आती है इंडिया अलायंस की, तो इन सबको रिपील करेगी, सीएए को रिपील करेगी। किसने कहा है? डीएमके। डीएमके कहां पावर में आनी है भाई जी, डीएमके का सवाल ही नहीं है, वो तो इसीलिए ऐसा। ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि क्या मुसलमानों को शरिया और हदीस के हिसाब से रहने का हक नहीं है? देखिए, ये भी एक प्रकार की भ्रांति है। शरिया और हदीस के हिसाब से 1937 से नहीं रह रहा है इस देश का मुसलमान। 1937 अंग्रेजों ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट क्यों निकाल दिया भाई? फिर तो चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को रोड पर पत्थर मारकर मार दो। कोई मुसलमान सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता, सूद नहीं ले सकता, लोन नहीं ले सकता। शरिया और हदीस से अगर जीना है तो पूरा जीना चाहिए। सिर्फ 4 शादी करने के लिए शरिया और हदीस क्यों आता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस देश का मुसलमान शरिया और हदीस की सारी चीजों से अंग्रेजों के समय से कटा हुआ है और देश ढेर सारे इस्लामिक कंट्रीज भी ये छोड़ चुके हैं। ये कांग्रेस की एपीसमेंट की पॉलिसी है, वोट बैंक की पॉलिसी है। इस देश के माइनॉरिटी इससे बाहर आए और ये सालों से नहीं है, आज से नहीं है, ऐसा नहीं है, सालों से नहीं है। आज भी सिविल सूट होता है तो देश के संविधान के हिसाब से मुस्लिम भाइयों का सिविल सूट होता है, शरिया और हदीस के हिसाब से नहीं होता। काजी के पास कोई नहीं जाता है। तो क्या वो सब राहुल जी लागू करना चाहते हैं? चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को पत्थर मारकर मार दो, देश का जो द्रोह करेगा उसको फांसी पर, चौराहे पर लटकाओ, ये सारा लाना है क्या? अमित जी, थोड़ी सी बात करते हैं साउथ इंडिया की, जहां पे कि मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस रहा है। पिछले 2-3 महीनों से वहां बहुत बार गए हैं। आप लोगों को भी उम्मीद है कि इस बार साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। सबसे पहला सवाल तो यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ये उनमें से मतलब वाकई एक बड़े वरिष्ठ नेता ने कहा कि साउथ इंडिया जो है दक्षिण भारत को एक अलग देश होना चाहिए। पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका जवाब तो सच अर्थ में राहुल जी को देना चाहिए। आज तक कांग्रेस ने उस नेता के बयान से कन्नी नहीं काटी। देश की जनता तो मान रही है, कांग्रेस का पॉलिसी है कि इस देश का 2 टुकड़ा होना चाहिए, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया जी। मगर राहुल बाबा, आप चिंता मत करो।
अब भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर है, कांग्रेस दूसरी बार इस देश का विभाजन नहीं कर पाएगी। कभी ये देश के टुकड़े हम नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या कर रहे हैं आप? चुनाव जीतने के लिए दो देश बनाने की बात कर रहे हैं। और क्या होगा इस पार्टी को? इतनी पुरानी पार्टी, आजादी का आंदोलन करने वाली पार्टी, वो इस बयान से कन्नी नहीं काटती है, इनको नोटिस नहीं देती है और फिर से टिकट दे दिया। क्या कहना चाहते हैं आप? उसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी ने देना पड़ेगा चुनावों में। आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि 130 लगभग जो सीटें हैं साउथ में, आपको कितनी उम्मीद है इस बार आएंगी? पिछली बार तो आपको कर्नाटका और तेलंगाना के बीच में 29 सीटें मिली थी। देखिए, तुम इधर उधर ईस्ट वेस्ट साउथ सेंटर मत गिनो भाई, 370 गिन लेना। नहीं, 370 में नॉर्थ में तो बहुत सारे प्रदेशों में आपकी करीब करीब पूरी सीटें हैं। तो मैं कह रहा हूं कि एडिशनल 70 सीटें कहां से आएंगी? ऐसा है भाई, जब मैं 300 कहता था तब भी तुमने, राहुल जी, मुझे ये सवाल 2019 में पूछा था कि तुम लाओगे कहां से। मैंने कहा काउंटिंग के दिन दोपहर को बता दूंगा, और हमारी 300 पार हो गई। इस बार भी मैं कहता हूं, काउंटिंग को 12 बजे मुस्कुराते हुए चेहरे पर कहना, मोदी का वादा पूरा हुआ, लक्ष्य पूरा हुआ, भाजपा 370 पार। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि कहां से आप और उम्मीद देख रहे हैं। जैसे कर्नाटका में ढेर सारे स्पेस है जी। बंगाल में हम बढ़ सकते हैं, उड़ीसा में बढ़ सकते हैं, तेलंगाना में बढ़ सकते हैं, हम तमिलनाडु केरल में बढ़ सकते हैं, ढेर सारी जगह है, पंजाब में बढ़ सकते हैं। नीचे से शुरू करते हैं, केरला में अकाउंट खुलेगा इस बार? भाई मैं आपको कहता हूं, आप पिसमिल अकाउंट में मत जाओ राहुल बाबू। आप 370 गिन लेना, मैं उस दिन आपके शो पर आऊंगा और बताऊंगा कि हमने कहा था देश की जनता के आशीर्वाद से, और इसमें भाजपा का कोई पराक्रम नहीं है। इस देश की जनता का स्नेह नरेंद्र मोदी जी पर है, हमारे नेतृत्व पर है, हमारी पार्टी पर है। वो ही वोट में कन्वर्ट होगा, वो ही सीट में कन्वर्ट होगा और 370 पार हो जाएगा। तो आप ओडिशा के बारे में तो कुछ बताइए कि साथ में है या नहीं साथ में, अलग अलग लड़ रहे हैं कि साथ में लड़ेंगे? पांडियन जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि सब प्रधानमंत्री के हाथ में है। अभी तय नहीं हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे तय करेंगे, परंतु इतना निश्चित है कि हम ओडिशा में हमारी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी करने जा रहे हैं। ओडिशा की जनता का मोदी जी के प्रति जो प्यार है, वो हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल उष्मा के साथ और विनम्रता के साथ उसका स्वीकार भी करते हैं, इसको फील भी करते हैं। सीटें बढ़ेंगी पिछली बार से लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा में क्या होगा? निश्चित रूप से विधानसभा लोकसभा दोनों में बड़ी बढ़ोतरी होगी, और चुनावी पंडितों की गिनती से कई गुना ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की। ओडिशा में सरकार बनाने की हालत में हैं आप लोग? कुछ भी हो सकता है, पहले तय हो जाए कि हम साथ में जा रहे हैं या अकेले जा रहे हैं। साथ में जाएंगे तो बीजू बाबू नेता है, तो स्वाभाविक रूप से हम साथी के रूप में लड़ेंगे। अकेले जाएंगे तो हम सरकार बनाने के लिए ही लड़ेंगे। पांडियन जी ने एक अच्छी अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, सेंटर में बीजेपी को बीजेडी की जरूरत नहीं है और स्टेट में बीजेडी को बीजेपी की जरूरत नहीं है। क्या इस बात से आप सहमत? देखिए, गठबंधन हमेशा जरूरियात के आधार पर नहीं होता। हमें ढेर सारी पार्टियों ने ये पूरे 5 साल में राष्ट्रीय हित के जो मुद्दे थे, इसमें इश्यू बेस्ड समर्थन पार्लियामेंट में दिया है। चाहे 370 हो, पहले चाहे जीएसटी करना था, चाहे बॉन्ड हो, बॉन्ड भी कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था जी, उस वक्त नहीं किया था जी, मगर इश्यू बेस्ड समर्थन हमें ढेर सारी पार्टियों ने दिया है। और मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विरोध हर मुद्दे पर नहीं होता है। जो मुद्दा देश हित में होता है, इसका समर्थन इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स करना चाहिए, सबने करना चाहिए। 2 प्रदेश जहां पे चुनाव इंटरेस्टिंग हो सकता है वो है बिहार और महाराष्ट्र। थोड़ा उस पर बात करूंगा। बिहार पे आपने फिर एक बार, पलटू राम जी तो पलटी मारते रहते हैं, इस बार आपने भी पलटी मारी और उनको आपने 16 सीटें दे दी। देखो भैया, हमने नहीं मारा है पलटी, नीतीश बाबू हमारे साथ ज्वाइन हुए। हम तो जहां थे वहां ही थे जी, हम गंगा किनारे, वो पलट के वापस फिर आ गए। हम गंगा किनारे ही थे, गंगा किनारे ही रहे, कोई हमारे साथ आकर मिला। पर 16 सीटें उनको दे दी आपने। नहीं, वो तो बिहार यूनिट का नेगोशिएशन का जो नतीजा है वो आपके सामने है। हम पहली बार नीतीश कुमार जी से ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं, बड़े भाई की भूमिका में आए हैं
वो हमारे लिए बड़ी बात है और मुझे विश्वास है कि हम बहुत अच्छी तरह से बिहार में विजयी होंगे। 5 सीट चिराग पासवान जी को दी, पर पशुपति पारस को आपने डंप कर दिया। कोई उनके संग भी समझौता हो सकता है? अभी उन्होंने रिजाइन भी कर दिया आपकी मंत्रालय मिनिस्ट्री। अब समझौते की गुंजाइश नहीं रही, कम रह गई है, लगभग नहींवत है। अच्छा था अगर परिवार पूरा साथ में आता, मगर ठीक है भाई। अभी आप बड़े भाई के रूप में यहाँ आए हैं, तो क्या विधानसभा में भी बड़े भाई के रूप में ही आएंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का होगा? अभी कुछ नहीं तय नहीं, हमें लोकसभा का चुनाव है, 370 और 400 के लक्ष्य के लिए सब लोग लगे हैं। विजयी होने के बाद आगे का रणनीति हम बनाएंगे। इस बार देखा है बिहार में आपने और छोटी पार्टियों को भी साथ में ले लिया, यही रुख जो है महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में देखें तो आप पहले आप शिंदे जी को लाए, उसके बाद अजित पवार आए, आज कल आपसे राज ठाकरे भी मिलकर गए हैं। तो कितनी सीटों का आपको, पिछली बार 41 सीटें थी आपकी 48 में, क्या उससे ऊपर हम जा सकते हैं? 41 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीतेंगे और ये जो घमंडिया गठबंधन प्रचार कर रहा है, पार्टियां तोड़ी, पार्टियां हमने नहीं तोड़ी है। शिवसेना तोड़ने का काम उद्धव ठाकरे के पुत्र प्रेम ने किया है। अगर वो एकनाथ शिंदे को उनका उचित सम्मान देते तो शिवसेना न टूटती। और एनसीपी तोड़ने का काम शरद पवार जी की पुत्री प्रेम ने किया है। अगर वो अजित पवार को उनका उचित सम्मान देते तो आज वो उनके साथ ही होते, हमारे साथ थोड़ी ना आते। वो तो सरकार में थे सब। मगर जब आप पुत्र पुत्री के मोह में अंध हो जाते हो तब पार्टियां टूटती है। इसका आरोप हम पर नहीं लगाना चाहिए। कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप? 30 के आसपास आप क्या क्या डिवीजन हुआ है? अभी तय नहीं हुआ है, मगर स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र में हम सबसे बड़ी पार्टी होगी। और उसके बाद शिंदे और उसके शिंदे सेना और उसके बाद अजित पवार। हाँ, कमोबेश यही होगा। कह रहे हैं लोग नंबर ऑफ सीट अभी तय नहीं। पंजाब में क्या है? अकाली दल से कभी हाँ कभी ना बातचीत, कहीं कोई एग्रीमेंट कुछ हुआ है? कैप्टन अमरिंदर सिंह और ये आप जिस तरह से सवाल पूछे, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना है ही नहीं। अभी नेगोशिएशन चल रहा है, तो नेगोशिएशन में तो एक ऑफर होती है, हम काउंटर ऑफर देते हैं, वो काउंटर ऑफर देते हैं, हम ऑफर देते हैं, ये चलता है। इसको हाना में नहीं देखना चाहिए। तो उम्मीद है कि मुझे लगता है 2-3 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पर आप लोग चाहते हैं कि साथ में लड़ें, ये स्वाभाविक। हम तो चाहते हैं कि हमारे एनडीए के सारे साथी हमारे साथ हो, फिर से एक बार सारा एनडीए संपूर्ण बने। परंतु भारतीय जनता पार्टी का उचित हिस्सा और हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान, वो भी हमारी चिंता का विषय होता है। तो हरियाणा में दुष्यंत चौटाला से बाद में फिर से समझौता हो सकता है? दरवाजे बंद नहीं है, एनडीए में रह सकते हैं। अभी तो आपने बहुत जल्दी होगी। अभी तो वो हमसे अलग हुए हैं, उन्होंने अपनी सीटें लड़ने का ऐलान किया है। तो अब तो आमने सामने चुनाव लड़ेंगे और जब नतीजे आएंगे तब देखेंगे। मगर अभी तो हम आमने सामने ही चुनाव लड़ रहे हैं। 2-3 सवाल इन्हीं मुद्दों पर और प्रदेशों पर। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आप इस बार अपनी पोजीशन को कैसे देखते हैं? क्या पिछली बार से स्ट्रांग रहेंगे आप तेलंगाना में? निश्चित रूप से जिस प्रकार का स्वागत पलक पावड़े बिछाकर दक्षिण भारत की जनता मोदी जी का कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहवर्धन करने वाली बात है। पहली बार भाजपा के किसी नेता को इतना सकारात्मक उत्साहजनक प्रतिसाद देश की जनता के, दक्षिण भारत की जनता से मिल रहा है। वो हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है, उत्साह बढ़ाने वाला विषय है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि दक्षिण के सभी 5 राज्यों में हमारी पोजीशन और कंसोलिडेट होगी, हम मजबूत होंगे और बढ़कर आएंगे। न केवल हम, हमारे साथी दल भी बढ़ेंगे। वेस्ट बंगाल की बात मैं थोड़ा सा करना चाहता हूं। वहां संदेशकाली के बाद आपकी स्थिति, पिछली बार 18 सीटें आई थी और लोग मान नहीं रहे थे कि आपने मुझसे इंटरव्यू में कहा था कि बहुत अच्छी स्थिति है। हम लोग सोच रहे थे कि 18 सीट नहीं, पर आप 18 सीट लेके आए। इस बार आपको क्या लगता है, इससे बढ़ेगी और इसका क्या कारण है? मैं बॉटम का आंकड़ा भी कह देता हूं जी, क्योंकि चुनाव काफी बाकी है, वहां 7 चरण में चुनाव होना है। बॉटम का आंकड़ा हमारा 25 है। 25 से ज्यादा सीट हम निश्चित रूप से बंगाल में जीतेंगे। इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 25 सीटें, बड़ा वो 25 से ज्यादा। 25 से ज्यादा। तो ये कैसे होगा? ये आपका जो
साउथ ईस्ट बंगाल में जो है आप काफी वीक हैं। पिछली बार आपको शायद सिर्फ 2 ही सीट मिली थी, वहां 18 सीटों पे। वो एरिया जो है वो आपके लिए बहुत अहम है, कोलकाता, हुगली, 24 परगना, हावड़ा। तो वहां पे कैसे करेंगे ये? वहां पे आपका संगठन भी उतना शायद स्ट्रांग नहीं है। देखिए, 2017 से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पश्चिम बंगाल में संगठन का भी विस्तार किया है और चुनावी सफलता के आंकड़ों में भी विस्तार किया है। 2017 से लगातार हम बढ़ते ही जा रहे हैं। विगत विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं, हम 2 लोग थे, 77 हो गए, बहुत बड़ी जंप है। कांग्रेस 0, कम्युनिस्ट पार्टी 0। आज प्राइम ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी वहां बनी हुई है। हमारी 2 लोकसभा की सीटें थी, 14 में, 19 में 18 हुई और इस बार हम 25 से काफी आगे निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। बंगाल की जनता 1 करोड़ों रुपया जो पकड़ा गया है, इसमें ईडी पर सवाल नहीं उठाती है, ममता जी पर सवाल उठाती कि रुपया कहां से आता है, रुपया किसका है। ये रुपया बंगाल की गरीब जनता का रुपया है भैया। वहां पर मोदी जी की योजनाएं नीचे नहीं पहुंच रही है। डर है उनको कि इस योजना से मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। क्या दोष है बंगाल के गरीब लोगों का? क्यों 5 लाख तक का उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही? क्यों अनाज उनका कालाबाजारी में बेचा जा रहा है? क्यों नल से जल की योजना वहां ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है? क्यों अब तक सीए से इनको महरूम रखा गया? केवल और केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण और भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार उनका उजागर हो चुका है। बंगाल की जनता के सामने ममता जी एक्सपोज हो चुकी है। एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में जिस तरह से संदेश खाली में सालों तक बहनों माताओं पर अत्याचार होते रहे और उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा होते रहे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दखल करने पड़ते, तब जाकर अरेस्ट करते हैं। शर्म आनी चाहिए। ईडी पर भी हमला हुआ था। ईडी पर हमला तो छोड़ो भाई, अलग बात है। मैं जिन्होंने वोट दिए वो बंगाली माताओं बहनों की बात कर रहा हूं। उन पर आपके पार्टी के नेता अत्याचार करे, आप उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हो और हाईकोर्ट ने ऑर्डर करने पड़ते हैं। जी। बंगाल की जनता ये सब जानती है। मेरा तो बंगाल की माताओं बहनों से करबद्ध निवेदन है कि इस बार शक्ति का परिचय राहुल के साथ साथ ममता जी को भी करा दो। इस बार मोदी जी कश्मीर काफी दिनों बाद गए। आर्टिकल 370 अपील होने के बाद उनकी बहुत बड़ी सभा हुई वहां पे। क्या आप लोगों को उम्मीद है कि वहां चुनाव में आप लोग अच्छा करेंगे? कश्मीर वैली में कोई अकाउंट खुलेगा? देखिए, कश्मीर वैली में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट खुलना न खुलना ये बड़ी बात नहीं है, परंतु 3 परिवारवादी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये 3 परिवारवादी पार्टियों ने वहां पर लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया। आजादी से अब तक वहां पंचायत चुनाव नहीं हुए। पहली बार हमने 30,000 पंच सरपंच को चुनाव करा, तहसील पंचायत बनी, जिला पंचायत बनी। पहले वो 3 पार्टी जिसका चिट फाड़ते थे वही नेता होते थे। मैं घाटी के मुसलमान भाइयों बहनों को कहने आया हूं कि आप कृपया अगर चाहते हैं कि जमहूरियत पाताल से नीचे तक चली जाए, लोकतंत्र पाताल से नीचे चली जाए, इसके मूल पाताल से नीचे जाना है, तो ये 3 परिवारवादी पार्टियों को साफ कर दो। जिसको वोट देना है ना इसको दो, परंतु कश्मीर में तभी जाकर लोकतंत्र आ रहा है। ये 370 का हवा बनाए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने 370 को समाप्त कर दिया। आज हर कश्मीरी को 5 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य को मिलता है, पानी मिल गया, चावल मिल रहा है, सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल गई है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आए हैं। 2 करोड़ से ज्यादा यात्री अब आज कश्मीर में जा रहे हैं। कश्मीर में 30 साल के बाद थिएटर खुले हैं। कश्मीर में 30 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकल रहा है, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। ये लोकतंत्र की बहाली के कारण हुआ है। जी, एक बार कश्मीर की जनता ने हिम्मत करना चाहिए। जिन लोगों ने 75 साल तक कश्मीर की जनता को लोकतंत्र से महरूम रखा, संवैधानिक अधिकारों से महरूम रखा और अपने केंद्र सरकार की स्कीमों से महरूम रखा, उनको दंड दीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कर दिए। भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, जिसको देना है इसको दीजिए, परंतु घाटी में एक बार ये 3 परिवारवादी पार्टियों को सबक सिखाना चाहिए।
कश्मीर में चुनाव कब होंगे? ये मैंने आपसे सवाल बहुत बार पहले भी पूछा है। इस बार बोला गया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की कुछ कमी है क्योंकि नेशनल इलेक्शंस हो रहे हैं तो नहीं हो पाए, तो इसका मतलब जल्दी होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ही किया है सितंबर तक कराने का। जी, तो उसके तो आउटर लिमिट है, सितंबर के पहले हो जाएंगे। एक सवाल जो कि बार बार होता है, आप लोगों का नारा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वो आप लोगों ने बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा हुई। एक और नारा है जो है अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो क्या ये अगले उसमें पाँच साल में देखने को मिलेगा? देखिए, ये सारे मसले कोर्ट में लंबित है, इस पर मेरा अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। राम मंदिर में हमारा पालमपुर कार्यकारिणी का भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि हम संवैधानिक रूप से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनाएंगे। 500 साल से करोड़ों राम भक्त जिसकी राह देख रहे थे, वो काम मोदी जी ने 5 साल में भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर प्रभु श्री राम को अपने भव्य मंदिर में विराजित करने का काम भी नरेंद्र मोदी ने कर दिया। और मैं मानता हूं कि जो दृश्य है वो क्षण है, 10,000 साल का क्षण है, मेरी बात याद रखना। 10,000 साल तक न केवल भारत, दुनिया इस क्षण को भुला नहीं पाएगी। और ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण है, क्योंकि भारत में हिंदू मेजोरिटी में होने के बावजूद भी 75 साल तक हमने राह देखी कि हमें कोर्ट ऑर्डर करे, उसके बाद ही हम मंदिर बनाएंगे। और पूर्ण तरह संवैधानिक रूप से कोर्ट के ऑर्डर से मंदिर बनाया। दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जो भारत ने दिया है, और उसका मोदी जी के समय में होना, भाजपा के समय में होना, हम सबका सौभाग्य हम मानते हैं। जी, बस कुछ सवाल, 2-3 सवाल और आपको मैं उत्तर प्रदेश के बारे में सवाल पूछे बिना नहीं जाने दे सकता। क्या इस बार उत्तर प्रदेश में आपकी परफॉर्मेंस 2014 से भी ज्यादा अच्छी होगी? निश्चित रूप से 73 सीटें थी। निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश में हमारा अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, 2014 से भी ज्यादा सीटें। इसका मतलब रायबरेली में आप जीत सकते हैं, कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, इन सब में? सीटों के नाम पे न पड़िए। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता परिवारवाद से त्रस्त है। इस बार परिवारवादी पार्टियों को जनता सबक सिखाएगी, ऐसा मुझे भरोसा है। आपसे हर बार जब इंटरव्यू करते हैं तमाम सवाल पूछते हैं, देश भर की बातें होती हैं। गृह मंत्रालय के कुछ अचीवमेंट्स बताइए जो 5 साल में, जो आप सबसे बड़ा मानते हैं। देखिए, कोई अचीवमेंट बड़ा या न छोटा नहीं हो सकता। हर अचीवमेंट की अपनी जगह पे एक अहमियत होती है। छोटे से छोटा फैसला बहुत बड़ा हो सकता है अपनी जगह पे। जैसे मैं कहता हूं, जब 5 किलो RDX पकड़ा जाता है तो लोगों को लगता है, इतना कॉलम आता है कि आज 5 किलो RDX पकड़ा गया। अगर वो न पकड़ा जाए तो 2000 लोग बम धमाके में मारे जाते हैं। तो ये तो नजरिए का सवाल है। मगर मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, कश्मीर के अंदर शांति, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 से ज्यादा समझौते कर 9000 से ज्यादा उग्रवादियों को सरेंडर कराना, वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्त कर देना, नार्कोटिक्स पर कठोरता से लगाम खींचना, और ढेर सारी चीजों में देश की आंतरिक सुरक्षा को हमने सुरक्षित करने का काम किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो मोदी जी का एक देश भर में मोदी जी का ही इनिशिएटिव है, उसको भी मोदी जी के नेतृत्व में, इनके सीधे गाइडेंस के तले गृह मंत्रालय ने आगे बढ़ाया है। ढेर सारे काम हुए हैं, परंतु मैं देश की जनता को एक ही बात कहना चाहता हूं, चाहे समाज कल्याण विभाग हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय, हर मंत्रालय में आजादी के 75 साल में अगर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है तो ये 10 साल में हुआ है। और 10 साल में देश की सूरत और सीरत दोनों बदली। देश को दुनिया में सम्मान मिलने लगा है। आज भारत क्या बोलता है वो मैटर करता है। भारत का पासपोर्ट लेकर कोई जाता है तो सम्मान के साथ उसको देखा जाता है। और भारत के भविष्य पर न केवल भारतीय, पूरी दुनिया को विश्वास है कि आने वाले 25 साल भारत के 25 साल है। मोदी जी जब देश की जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं, तब हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। विपक्ष के पास ना ट्रैक रिकॉर्ड है, ना एजेंडा है, ना नेता है,
ना नीति है। भारतीय जनता पार्टी एक कॉन्क्रीट एजेंडे के साथ महान भारत की रचना की कल्पना लेकर आप सबके सामने आ रही है। आप समर्थन करिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, और आशीर्वाद दीजिए तो थोड़ा बहुत मत दीजिएगा, 400 पार करा दीजिएगा, इतनी ही मेरी आप सबसे विनंती है। धन्यवाद। अमित जी, आप दिन रात काम करते हैं, हम लोग बात कर रहे थे आजकल दिन में सुबह रात 3-4 बजे सुबह तक मीटिंग्स चलती रहती हैं। आज हमारे साथ आपकी धर्मपत्नी सोनल जी भी यहाँ हैं, तो घर के लिए समय कैसे निकालते हैं? हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, ये वर्क वाइफ बैलेंस कैसे होता है? देखिए, वो कोई सार्वजनिक बात नहीं है, मगर मैं आपको बताता हूँ कि मैं परिवार के लिए समय नहीं निकाल सकता, परिवार मेरे लिए समय चुनकर निकाल लेता हूँ, तो हमारा बैलेंस बना रहता है और इसमें परिवार का बड़ा रोल रहता है। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत सवालों के जवाब दिए, 1 घंटे हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, let's hear it from the man who has been shepherding all of this with such elan and grace. Please join me as I welcome Dr. S. Jaishankar, Minister of External Affairs, for a session that's titled India's Moment in Conversation with News 18's Zaka Jacob. Welcome, Mr. Jaishankar. Nice to have you with us. Thank you, Zaka. Dr. Jaishankar, thank you very much for joining us here at Rising Bharat. So we were having this discussion outside and internally in the run-up to Rising Bharat as well. In an election year, forget about election year, we are a few weeks away from elections. What do we ask the foreign minister? Is foreign policy top of mind of people during elections? You would think that more tangible things like homes and toilets, etc., are the things that people are more concerned about during election time. But funnily enough, Minister, in the News 18 opinion poll that we had last week, one of the things that people said, one of the reasons why they will vote for Modi is because Modi ne desh ka naam roshan kiya hai. Modi has elevated the image of India substantially. Why do you think something that is not necessarily tangible, like foreign policy and foreign policy gains, has suddenly become a vote-determining issue? Well, first of all, let me say what a pleasure it is to be here with all of you. Look, to be honest, that answer doesn't surprise me. It doesn't surprise me because in the last 5 years, traveling around the country, I've seen this sentiment grow. And I attribute it to 2-3 factors. One, that there is a greater sense of pride in the nation about itself, you know. And also, as people's basic necessities are being met, they are also looking at many more things, you know. So they know today, for example, that the water connection will come, the electricity will come, the road will come, the health will happen, because they have seen that grow. So there also, there's a kind of a, I would say, a new middle class thinking which is pervading through the society. The second is that you know, a lot of people today go out to work, go out on travel. They are tourists of various kinds. Something abroad in some way affects their livelihood. So the connection between being treated well abroad, being looked at well abroad, and their existence is also stronger. I would say the third factor would be, to me, the G20. G20. G20 actually ended up our initial concern, and Amitabh is here. Initial concern was how do we get it out of Delhi. But
we actually ended up with the entire country owning the G20. That in very small towns, you know, I mean, people you would not think would have an interest in foreign policy, leave alone something as specific as G20. Actually, people had that sense with our G20, you know, it's a time to show our country to the world, people are coming. So I think G20's had a great sense of connection. And finally, in a very peculiar way, COVID. That what COVID did was, at different times, it made us aware, you know, after all the COVID came from outside. You know, we sent vaccines outside. At a critical moment, we got oxygen from outside. So somewhere that connect with the world, it's made people more aware. Then it's technology. You know, you have the world in the palm of your phone. So I do want to ask you about the G20 part, because we have seen instances in the past where major sporting events have transformed the image of a nation, whether it is the Barcelona Olympics, the Beijing Olympics, and so on. But the G20, you know, the uncharitable way of putting it is it's a talk shop. Why would that have permeated to the level of the Aam Aadmi and Aam Aurat on the street in a way that it's lifted the image of India? Partly, as I said, physically, because it was done in 60 cities and towns. And mind you, other than those 60 places where something happened, people went out maybe to another 60 or 100 places more. So if you actually said in terms of locations, I would say maybe 120 to 150 locations in some way or the other saw G20. And we ran G20 actually like an Andolan, you know, like a Jan Bhagidari. So I mean, look, I've been doing G20 for 10 years now. This is the only G20 where you went to a place, you had a meeting, but there's a university running a event on a G20, there were a bunch of NGOs who were doing something on a G20, the population was out there displaying their culture. So it had a, you know, a flair and a impact which was very, very different. So the second is, to be very honest, I don't think people expected us to succeed. Really? Yeah, you know, I mean, look, we went through, you know, saw the Indonesian presidency, the kind of pressures they were in. Every meeting was blocked by a single issue. And then finally, okay, we patched something together at the summit. All of us helped out because that's the way it is. Now, in our case, I think we took, frankly, much less defensive strategy. We said, look, every meeting, if there's a finance meeting, we will get a finance outcome. If you've got other issues, I'll put an asterisk and put it on the side, but you are not going to block that finance outcome. So what we did was, we piled up the stakes, outcome after outcome. So you said it's a talk shop. Yes, you are right, but you know, even talk shops make a difference. So when a talk shop, for example, ends up recommending to the World Bank that, you know, you need to change, reform as per a report which is coming out, or a talk shop says that digital public infrastructure is today a kosher concept and the rest of the world must adopt it for you know, propagation. Don't write off the power of ideas and talking. Ultimately, they move things. And I would say, you know, today, if you look at one thing which has gone very badly wrong with the world, which is that COVID, the impact of COVID has really set back development, SDG targets in the world. The G20 brought the focus back. So, and you know, people intuitively understand it, that people, you know, they may not know the nuances, but they knew the pressures were on us, and they knew that we had to, you know, get the outcome done at the summit, and I think they kind of get it. So, because this is election season, as they say, you have to go to the voters, give them your hisab of what you have achieved over the last 5 years. So, in the realm of foreign policy, because you've been doing it, you've been marshalling for India's foreign policy over the last 5 years,
aside of the G20, the COVID vaccines, navigating India's interests through these two wars. What is the one thing that you would say is the standout for the Modi government, which no other government in the realm of foreign policy has done in the last 75 years? Well, look, if, it's not an if, it is a when. When I go out and explain foreign policy of the last 10 years to people, I would actually tell them Modi ki guarantee works as much abroad as it does in the country. Okay. And it is Modi ki guarantee which moved the whole Indian system in Operation Ganga, where 5 ministers were deputed and told you sort out those places and come back when the last people come back, when the military is put to work on a mission like this. It could be that, it could be Operation Kaveri in Sudan, it could be what we did during COVID. The whole Vande Bharat mission, that anybody who was stuck somewhere, I mean, there were shipping crews, there were air crews, there were hotel people, there were tourists, there were students who had been, told your hostel is closed, go home. So what has happened today? And it isn't just the people who came back. If you looked at the Gulf, where we have today almost 90 lakh people, my deputy Muralidharan and I were regularly going to Gulf during the COVID because we were carrying messages from PM to the Gulf regime saying, please take care of our people. And they did respond. They did take care of them. So, and it could be, it need not be just taking care in a physical sense. The Modi ki guarantee also applies that I will take the right decision to make sure your petrol costs are kept within reasonable grounds by not bowing to political pressure. So that sense that, we have a national interest, the national interest will a national welfare in a way. We will do what it takes. We will send troops in the height of COVID to defend our northern borders. We will react to terrorism in a way in which will deter, any sort of repetition of such attacks. So it works in different ways. I think today, when part of the reason why people respond to foreign policy is they can see that visibly our international stock, our credibility, our weight, our influence has gone up. So just like the government puts its record to the people and says these are the things that we've achieved in the last 5 years, 10 years, the opposition also has a right to say that, look, this we think are the failures of the government when it comes to foreign policy. So they say, look at the whole situation vis-a-vis China. You mentioned that. The opposition's even gone to the extent of saying you've lost territory to China. Look at the neighborhood. Even friendly countries are not so friendly anymore. The situation with Pakistan is back in the back burner. With the West, there are serious differences on the Russia-Ukraine war, on the Israel-Hamas war. What would you say to that? What would you say to the opposition's narrative? Well, I would say, some of the places which, by the way, they said we had lost, were lost in 1962, if not before. So I'd say first go and get a lesson in history, possibly in geography. The second, we may have, differences with the West on Ukraine. But the purpose of foreign policy is not to agree with other powers on the basis of their interest. The purpose of foreign policy is to defend your interest and advance it. So if I have a difference, I have a difference. So what would the opposition like me to do? To get along with people and increase my petrol purchase, price at which I buy fuel? So, let's get the parameter of judgment right. I still say that if you look, or take Pakistan, yes, today our relations are very, at a formal level, are very minimal. But why has it happened? It has happened for two reasons. One, because we have put terrorism fair square at the center of the relationship. And number two, the Pakistanis reacted to our long, in my view, a long awaited, something which should have been done much earlier, decision on 370. So what would the opposition want us to do? Not do 370 because it will upset Pakistan? Or talk to Pakistan ignoring that
they do terrorism. Actually, that's what the opposition was doing. So, if you ask me, look, foreign policy is not run as a global popularity exercise. It is run, I mean, if you have an appeasement mentality at home, you will take it outside. So, one of the points you mentioned, and again, this is the latest sort of criticism against your government, points of difference, if you will, with the West, is on the CAA, the Citizenship Amendment Act. The US State Department has reacted to it. I think the MEA has also put out a formal statement against it. When you speak to your Western counterparts, how do you tell them that this is not a discriminatory law, that people are not being discriminated based on their religion? Well, actually, it isn't when you speak. I have spoken. When CAA was passed, I did speak. Even now, I continue speaking. And there were 2 points I made. I actually, I had a meeting with all our European colleagues, EU colleagues. I'd gone to Brussels at that time. And I asked each one of them to look at the citizenship pathways which they have in their respective countries. And can you tell me that there is no criteria by which you will fast track a certain category? Every one of them has something. It could be religion, it could be historical, it could be language, it could be ethnicity. The fact is, and the US, I'm on record as giving multiple examples of that. So look, do understand, this is an issue of correcting a certain situation of our history. And it is a question of being just, of being fair to those people who were caught on the wrong side of history at the time when partition happened. And who at that time, whose welfare people worried about even then. So, and as I said, this is not unique. I mean, if you go around the world, in different parts of the world, history has stranded people in different situations. Now, you can either be completely heartless and utterly calculating and say, well, it doesn't matter, who cares what happens. But if you look at the predicament of these people, these are stateless people who are stateless because of no fault of theirs, because political leaders of a certain era got it wrong. Somebody is righting a wrong. They're not wronging anybody. They are actually righting a situation where a wrong has been done to many people. You mentioned, not in a direct way, but in a tangential way about this in your book as well, Why Bharat Matters, as to why you believe, and you've made a case for it, it's for up to people to agree or disagree with it, that because of that mentality that you referred to in the first few decades after independence, there were missed foreign policy opportunities, particularly vis-a-vis Pakistan and vis-a-vis China. And vis-a-vis the US. And vis-a-vis the US as well. So, but some would say, now you have the benefit of hindsight to make that argument, to make that case. Perhaps in the 50s and 60s, that case would have been looked down upon or may not have been entertained. So, how do you then make the case that, these were missed goals or missed opportunities because there was a certain political bent of mind? I saw that argument coming, and therefore I anticipated it. So, a good batsman. So let me tell you. I mean, first of all, I just want you to think of this one very simple fact. You got Pakistan wrong, you got China wrong, you got US right, and we had a great foreign policy. So put that aside. I am not saying today, benefit of 2024, that, let's look back at 1954 or 1950. I'm saying somebody in 1948, 49, 50, 51, 52, as you were taking those decisions, stood up and said, please, Mr. Nehru, what you are doing, have you looked at this aspect of it? So this is not hindsight.
These are Nehru's contemporaries who are questioning decisions which Nehru was taking at that point of time. So what are these decisions? I give you three. Shyama Prasad Mukherjee actually contests very strongly the Nehru-Liaquat Pact, saying, look, you are assuming that Pakistan is going to treat its minorities the same way as we are treating our minorities. But the very nature of creation of Pakistan and the regime which has come into being is very different. So how can you possibly make, such a fundamental misreading of these guys? And mind you, this is just 3 years after partition. Okay. Well, a little bit more. The Patel, I'm giving you example of China. Patel puts in writing that today, for the first time, we are facing a two-front situation. The intentions of China cannot be taken in a positive way. There is much that we have to apprehend. So please do not, have a sort of rosy picture of the situation. What is the answer from Nehru? I cannot conceive that anybody would undertake a wild adventure across the Himalayas. By the way, that's exactly what they did in 1962. So now, if Jaishankar in 2024 says, oh, they got it wrong in 1954, your question is very, very valid. It's not Jaishankar who's saying it. It's Patel saying it on China. It is Shyama Prasad Mukherjee saying it on Pakistan. It is B.R. Ambedkar who says, look, why are you alienating the Americans? If you are to argue, you want to take on the American, I have no problem with it. I just told you foreign policy can be pushed back. At least fight your own cause. We were alienating the Americans on behalf of China. That we were taking up China's cause. And more than anything else, what an irony. That imagine, in 1950s, we spoilt our relationship with America because we were arguing on behalf of China. So, this is not hindsight, this is not a political polemic. I am placing before, especially the younger generations, because they wouldn't be familiar with it. I am placing historical situations, which is what I called a road not taken. That road was available, that road was marked. Those people drew a map and said, don't go this way, go that way. And we consciously chose not to take those roads. Now, I'm not saying there were no-brainers. There were pluses and minuses. But we need to get out of this, cult worship that everything from 1946 till pick your year, these were great years and we did splendidly. If anything went wrong, other people were to blame. But, Nehru's foreign policy is such a sort of impeccable theology that even today, whoever comes to power must follow it. And any deviation is somewhere wrong. I think, companies are audited. After all, countries should also be audited, for policies should be audited. People should look at what happened in the past with an open mind, with a critical mind. And by the way, I'm not saying it should only happen then. I'd be very happy if somebody said, I'd like to discuss the last 10 years with you. In fact, that's exactly what you're doing. And please defend your record. I'd be very happy to defend it. So let's talk about one big aspect of that record. And since you referred to in the previous answer about a two-front situation, are we not in a two-front situation today? We have, my friend, we have always been. It is we who were in denial. Tell me, I'm now asking you as a person, Zaka, at which stage in your life did you actually feel that China was your strategic partner? I don't think in my lifetime. No, but yet in 2006, we actually have a declaration describing China as a strategic partner. So I want to say, look, there's a gut sense in society. Sometimes, and I say this as someone from the foreign policy fraternity, sometimes, this is a bubble you have created. Because,
in the earlier years, it was very much a Nehruvian ideological bubble. Nehru was against America, so everybody was against America. Nehru said China is a great friend, everybody says China is a great friend. So the vestiges of that continue, even today. I mean, you have a concept called Chindia. Okay, I don't, you know, many of you will remember who put that concept forward. So if you actually have reached to think that you're making a sandhi of China and India, and you think we are that close, and our interests are so aligned, I mean, this is a different world. So I would put to you, if you go back, you know, especially I would say to me, 1950s, it was latent. 1960s onwards, especially after the China-Pakistan agreement in 63, and the territorial transfer of Indian territory by one illegal occupier to another, you had effectively the two of them working in tandem. And to me, that is a very obvious basis on which to build policy. So let me now come to domestic politics. We've got the last 15, 16 minutes now. In the last 5 years, we have seen the transformation of Dr. Jaishankar from diplomat to foreign policy scholar. Now you're a full-blooded politician. So tell us, why is the Prime Minister spending so much time in southern India? Every day, every other day, he's in South India. In the last elections, in the last Lok Sabha elections, out of 129 seats in the 5 states in southern India, the BJP won just 29. A bulk of it came from Karnataka. Why do you in the BJP believe this time the south will be your new frontier and you'll be able to conquer the new frontier? Well, you know, if I applied that logic, I could apply it to the rest of the country. There was a time, there were many states where there were no BJP MPs. So, in a way, every state, I mean, for a party like BJP, was a new frontier at some point. Why today, I mean, I don't know how many of you saw the pictures of the Prime Minister's, road shows in Coimbatore and Palagat, etc. Look at the response that he's getting. So, my sense is, I mean, ultimately, the results will tell. But as someone who's been traveling a fair amount, certainly to Kerala, I mean, Karnataka is a different case. There's already a strong history with BJP out there. My sense is, political opinion in those states is changing. That people today contrast, they've seen the benefits of good governance, that many of the changes of the last decade, as you say, the Anna Yojana, the food support, the Mudra scheme, the Awas Yojana for the housing, even what the vendors, informal economy is getting, Swanidhi, the Jal Jeevan Mission, the power connection, the road building. So, when the Kisan Samman Nidhi so if you put all this together, they today realize, and particularly if you add to this health and insurance, they today realize that, look, because you are getting good governance out of the center, and these schemes have been pushed by the center, they have benefited literally tens of crores of people. They are looking, at a very, very different way, both at the center and at the BJP. The second, I would say, our sense of ourselves as a nation and society is also changing. There is today, I mean, you refer to it in a very different way, saying, why are people taking an interest in foreign policy? I would argue one of the reasons they are taking an interest in foreign policy is they have a stronger sense of what this nation is about. And the South is, as deeply, if not more so, that sentiment as the rest of the country. And I think the combination of all these things is actually, it's certainly, anybody would
even anybody objective would tell you something is changing out there. You can see that, you can feel that. Now, we'll have to see how it goes, but I can tell you there's a fair degree of confidence about how this will work out electorally. You mentioned about the sense of identity, sense of pride. No doubt it's gone up in the last 5-10 years, but in the South there's also regional identity. And one of the narratives, you can call it a trope if you want, particularly from the southern parties, is that your party is anti-South India, you're a North Indian party, you're a Hindu imposition party. As somebody who is a Delhi boy, but your family is from the southern part of this country, how would you counter that narrative? Well, look, I think by now Prime Minister Modi has put that kind of propaganda to rest. He's contested it very, very effectively. But you have not had a Prime Minister of this country who has so visibly associated anything national with what you would call regional issues. I mean, it could be, the fact that we've taken foreign policy out there, the fact, I mean, even the parliament, the Sengol issue, the fact he did Kashi Tamil Sangamam, or in fact also, a Tamil Saurashtra. So he's taken enormous pains to actually counter that kind of propaganda which has vitiated our politics for many, many decades. And my sense is today you're getting that traction. My next question is in two parts. First part I know you'll dodge, but I'm still going to ask. But the second part is a little more weighty. The first part is, are you contesting the upcoming Lok Sabha election? Second part? The second part is, does it make a difference in your, practicing of foreign policy if you're an elected politician as opposed to one who is nominated to the Rajya Sabha? It's a hard one because if you look at the previous foreign ministers of India, you've had a mix. My immediate predecessor, Sushma Ji, was from Lok Sabha, and many of her predecessors. So it's a mixed issue. The fact is, today, certainly speaking from a BJP perspective, I can tell you how much focus there is on constituency, on ensuring delivery, on making sure that last mile, that leave no one behind message goes through. So when I look at my, I'm a parliamentarian of 5 years juniority. So I'm still a relatively new person, and therefore I'm very curious how does that peer group work. And I look at especially the effort which Lok Sabha MPs put in, and it's staggering. I mean, it's not, by the way, that the Rajya Sabha MPs have a ball. I mean, because certainly where the BJP is concerned, I mean, you have governance responsibilities, you have party responsibilities. I mean, you are on, really it's a 365-day kind of calendar. But there's always that balancing your focus and attention with what are foreign policy issues, with other responsibilities that you may have. It may be Lok Sabha, it may be something else as well. You've had ministers who were not Lok Sabha members, but who as foreign ministers had many other responsibilities to do. So you're not answering the first part? No. No. No, but since you said that the BJP gave so much attention to constituencies, is there a preferred constituency that you would like to fight from if the party asks you to? No, I think when I said I wasn't answering the first part, bowling a googly still doesn't mean the ball is going to be played. Okay, let's run you through the last 5 minutes of questions. It's a bit of a rapid fire, if you will. One foreign policy person that you have been inspired by in your career, both as a diplomat and now
as a politician? Well, look, what happens if you pick somebody, I mean, I have some, if I look at the peer group of ministers, you know, there would be there are people for whom you have genuine respect. The problem when you get into names is you name somebody and you don't name many others. But over a period of time, I would say, you know, there have been people who, from their sort of respective perspectives, who were great authorities, who kind of dominated the scene. In many cases, it helped that they had longevity. In some cases, they may not have had that kind of time, but still, so it's safer in a way for me also to go back a little bit and pick. I mean, you know, when I first entered the foreign ministry, I started my career in Moscow, and Andrei Gromyko was the foreign minister. When I switched to the after Moscow, I was moved to the Americas division, and the first minister I met then was, at that time, Secretary of State was George Shultz. Now, I saw these people really from the eyes of, you know, someone who's starting the business. But when you kind of read about them and you know, analyzed them with a passage of time, I mean, so even in our own setup, I would say, I mean, you know, the foreign minister when I joined the foreign ministry in India was Atal Bihari Vajpayee. Oh, wow. It's 1977. So, 1977. So, when you look at some of them, you know, different people appeal to you in different ways. You know, Atalji, for example, was always someone who was willing to sort of, in a way, break the mold. You know, and you saw that finally when it came to the nuclear test. So I would say at different points of time, I've had the good, you know, it's like if you are interested in cricket and you've been seeing a lot of test matches, you'd remember great innings. Yeah. You know. By the way, the first century I ever saw was Ian Chappell. Ian Chappell? Yes, in Delhi. Oh. So you remember, you know, you remember these moments, you would remember. I would hesitate to say, okay, this was the all-time greatest. I mean, yeah, that's a tough one, yeah. Yeah. Since you mentioned nuclear and since we're talking about all of these doyens, you've talked about him in the past as well and more recently as well about the legacy of your late father. He's the man who, you know, for all practical purposes was the architect of India's nuclear doctrine. Do you think about your legacy as to how people will remember Dr. S. Jaishankar? No, not really. I mean... how would you want them to remember you if it... I haven't even given thought to that. I mean, look, you know, you start, I guess people start thinking these things when they feel they are very advanced and are close to hanging up their boots. So you're far from that. Well, I do not know what the future holds. I didn't know what it held 5 years ago. I would have, I mean, my wildest dreams wouldn't have anticipated becoming the External Affairs Minister. But I think I still have enough gas left in the tank not to think about parking in the garage and thinking about how people are living. Please race away, Dr. S. Jaishankar. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the External Affairs Minister of India, Dr. S. Jaishankar.
भारत की बात सुनाता हूं। हाँ दोस्तों, ये गीत के बोल हैं, पर अगर इसे किसी ने कण कण में जिया है तो वह हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और 2014 में एक लहर के साथ जब से उस बल पर जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, तब से लेकर अब तक उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। कोई भी पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, वो जवानों, किसानों या नौजवानों के साथ उस दिन को बिताते हैं। उनकी अगुवाई में नारी शक्ति को बल मिला है, देश को रक्षा और देश की रक्षा शक्ति और सबल हुई है, दुश्मन की मक्कारी विफल हुई है और भारत की विश्व पटल पर साख और हिस्सेदारी और प्रबल हुई है। सबका साथ सबका विकास से की गई ये शुरुआत आज वसुदेव कुटुंबकम पहुंच चुकी है। शुरुआत, आरंभ प्रचंड हो तो अंत भी सुलभ होता है, अच्छा होता है, यही कहा जाता है। भारत, इस देश में करोड़ों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उभरते हुए हम देख रहे हैं और दुनिया को शांति, मैत्री और सद्भाव की राह भी हम दिखा रहे हैं। जहां जैम से जनता को वेलफेयर से जोड़ा गया है, वहीं भारत मंडपम में G20 की अगुवाई कर विश्व को भारत की सभ्यता और संस्कृति से भी जोड़ा गया है। मैसेज बहुत क्लियर है, हमसे नजरें मिलाओगे तो तुम्हारे लिए जान दे देंगे, आंख उठाओगे भारत की तरफ तो घुस कर मारेंगे। जी हां, अब आगे क्या करना है? स्वप्न एक विकसित भारत का है। हमारी प्रेरणा भारत है, भूमि की करें पूजा, सुजला सुफला सदा स्नेहा, यही रूप है उसका। जिए माता के कारण हम करें जीवन सफल अपना, यही तो है मंत्र अपना, शुभंकर मंत्र है अपना, चरैवेति चरैवेति। स्वागत कीजिए सर्वजन प्रिय, द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ आवर टाइम्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, श्री नरेंद्र मोदी। And he's joining us here at the Rising Bharat Summit to present his thoughts on our principal theme, leading for global good. Prime Minister Narendra Modi, जोरदार स्वागत कीजिए इनका। प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आभार। एंड मैं नाउ रिक्वेस्ट News 18 Network's Managing Director and Group Editor-in-Chief, Shri Rahul Joshi, to welcome the Honorable Prime Minister. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, ladies and gentlemen. First, I would like to thank the Prime Minister for taking time out from his punishing schedule to be with us. Please give him a round of applause. We are indeed very, very grateful. Sir, 5 years ago on February 25th, 2019, at Rising India Summit, I had quoted Bismil Sahab in your presence in the context of the Pulwama attack. Sarfaroshi ki tamanna ab hamare dil mein hai. Soon after my welcome address, you delivered your powerful keynote without betraying anything going on in your mind. And next morning, February 26th, we all woke up to the big news of India's attack on Balakot in Pakistan. Ladies and gentlemen, in many ways, it was the big turning point under PM Modi's leadership towards the end of his first term. The message was as loud as it was clear. Don't mess with a strong, resurgent, confident, muscular India. And of course, don't mess with Modi. Prime Minister, that was 2019. Fast forward 5 years to January 22nd, 2024. I would say the other big turning point came on the day of Pran Pratishtha
in Ayodhya, to which I was witness, a day that will go down in history as a major milestone in the life of Bharat. As I drove down the same evening from Ayodhya to Prayagraj to visit my mother, I could see amidst the celebrations and the bursting of crackers, the rise of a new India. As I passed through Gonda, Sultanpur and Pratapgarh in Uttar Pradesh, I could see in people renewed hope, renewed energy, renewed confidence. In many ways, the civilizational and cultural resurgence of India is finally taking wing. A Bharat that is not only soaring, but doing so while remaining firmly rooted in its cultural moorings. अगर इसी बात को मैं आपके शब्दों में कहूं, तो यह प्राण प्रतिष्ठा का समय सिर्फ विजय का नहीं, विनय का था। राम आग नहीं, ऊर्जा है, विवाद नहीं, समाधान है, वर्तमान ही नहीं, अनंत काल है। प्रधानमंत्री जी, 22 जनवरी के दिन आपने हमारी प्रतिष्ठा में प्राण फूंक दिए। Ladies and gentlemen, the last 10 years in tangible terms have been marked by rising GDP and galloping stock markets. It has also been marked by efficient welfarism through direct benefit transfers while building an unprecedented scale of physical and digital infrastructure. Prime Minister Modi's biggest contribution is not only to take the Indian economy from the fragile 5 to the fabulous 5. His biggest contribution is to instill in every Indian a strong sense of self-esteem and a firm belief that India is finally getting its rightful place at the global high table of powerful nations. Today, our chest fills with pride that the Indian passport has gained in respect and stature. We bleed blue in every way. Finally, with your permission, Prime Minister, I would like to crystal gaze into the future. What would it be like, same time, 2029? I believe India will lead for global good, the theme of our Rising Bharat Summit this year. The next 5 years will mark a further acceleration of our journey towards a Viksit Bharat, one that will find its place in the top 3 economies of the world. Once again, it is not so much about adding trillions to the GDP, but the rise and rise of India's stature globally. At the G20, you've shown that you are a bridge builder in a divided world. The New Delhi Declaration is a clear demonstration of your influence and relationship with global leaders. Ram willing, India will soon have a permanent seat at the UN. With the rapid strides the country is taking, we'll see an acceleration in reverse brain drain into the country. Global companies will soon have headquarters in Mumbai and Bangalore, while Indian conglomerates will take a bite of the big apple. Modi ji, all this has been possible because you think different, you think big, but you execute bigger. Your approval ratings show you're the most popular leader in the world. To Indians here and around the world, you are also by far the tallest. To end on a high note before your keynote, I would like to quote these powerful lines from Sacha Bharat by Ramdhari Singh Dinkar. वृथा मत लो भारत का नाम, वृथा मत लो भारत का नाम, भारत एक स्वप्न भू को ऊपर ले जाने वाला, भारत एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला, भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है, भारत एक जलज जिसका जल का न दाग लगता है. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the man of the moment, Prime Minister Narendra Modi.
नमस्कार। अभी वैसे राहुल ने बड़ा वर्णन किया 5 साल पहले मैं जब आया था, और शायद उस समिट की तारीख या घटना आपके ग्रुप को तो याद रहना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन शायद पत्रकार मन ये भी सोच सकता था, और शायद सोचा होगा लेकिन बोलते नहीं होंगे, कि क्या कारण होगा कि एक इंसान अपने कमिटमेंट के कारण इस समिट में इतने ही शांत मन से आया था और उसी समय वो किसी प्रक्रिया को दौड़ा रहा था, और जो दूसरे दिन सुबह दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर बन गई थी। और मैं मानता हूँ जरूर आप लोग इसका एनालिसिस करेंगे, और शायद वो 28 फरवरी थी 2019, और माहौल तो ऐसा ही था, और मैं भी बहुत शांति से आप सबसे नमस्ते नमस्ते करके निकला था, और भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी रात को। और वो एक दिन था और एक दिन आज है। और आपने देखा होगा कि आतंक के सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो, सब ने राइजिंग भारत अनुभव किया है। ये नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है। बल्कि आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है। जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे, उनकी क्या हालत है, ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। एक सुरक्षित राष्ट्र ही एक विकसित राष्ट्र का आधार होता है, और आज यही भारत की पहचान है और यही राइजिंग भारत है। साथियों, चुनाव का मौसम है, चुनाव की सरगर्मी बिल्कुल सर पर है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। आपकी इस समिट में भी कई लोगों ने अपने विचार रखे हैं, डिबेट का माहौल बना हुआ है, और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। देश में भी धीरे धीरे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। सरकार अपने 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड रख रही है। हम अगले 25 साल का रोड मैप बना रहे हैं, और अपने तीसरे टर्म के पहले 100 दिन का प्लान भी बना रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो विरोधी हैं, वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है।
मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। इन सब पॉजिटिव नेगेटिव बातों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है। 2600 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां, करीब 97 करोड़ मतदाता, 97 करोड़ वोटर्स, करीब 2 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर ये हर भारतीय के लिए, यहां इस हॉल में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के लिए और आपके टीवी के दर्शकों के लिए भी उतनी ही गर्व की बात है। साथियों, आज पूरी दुनिया 21वीं सदी को भारत की सदी कहती है। बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े जानकार राइजिंग भारत को लेकर बहुत आश्वस्त है। और इन लोगों के मन में कोई इफ नहीं है, बट नहीं है, नो इफ नो बट्स। आखिर ऐसा क्यों है? कोई सवालिया निशान नहीं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया आज ये देख रही है कि पिछले 10 साल में भारत ने कितने बड़े परिवर्तन किए हैं। आजादी के बाद से जो सिस्टम बना, जो वर्क कल्चर बना, उस सिस्टम में ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये हुआ है और ये हम भारतीयों ने ही करके दिखाया है। आज भारत का कॉन्फिडेंस लेवल हर भारतीय की बातों में झलकता है। आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। और लोग चाहे विपक्ष में हो, देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, सब भारत की उपलब्धियां देख रहे हैं। सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, क्या ये ऐसे ही हो गया होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन जाना, क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर के $700 बिलियन के पार पहुंच जाना, ये क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का एक्सपोर्ट $700 बिलियन पार कर जाना, क्या ऐसे ही हुआ होगा? और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आगे जाना है। साथियों, यहां बड़े बड़े जर्नलिस्ट मौजूद हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के दिग्गज हैं, पॉलिटिकल फील्ड के लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी वर्ल्ड के भी लोग हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सरकारों में ब्यूरोक्रेसी में काम कैसे होता रहा है। फिर वो एक फैक्टर क्या था जिसकी वजह से ये बदलाव आया? वो एक फैक्टर है नियत। नियत सही तो काम सही।
और नीयत कौन सी? नेशन फर्स्ट की नीयत। मेरे देश में कोई कमी नहीं है कि उसकी पहचान गरीब देश के रूप में हो। हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। एक समय में हम ज्ञान में, विज्ञान में सबसे आगे रहे हैं। दुनिया की कोई वजह नहीं है कि भारत किसी भी देश से पीछे रहे। बस हमें नेशन फर्स्ट की नीयत के साथ आगे चलना है। ये देश जो हमें इतना कुछ देता है, हम उसमें सिर्फ रहते हैं या फिर देश के लिए कुछ अलग करते भी हैं, ये फर्क बहुत बारीक है। लेकिन बारीक सा फर्क ही देश को आगे ले जाता है। जिस दिन आप अपने काम को देश के साथ जोड़ लेंगे, आप जो कुछ भी हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जिस दिन आप अपने काम को देश के लक्ष्यों के साथ जोड़ लेंगे, तो समझ लीजिएगा कि नेशन फर्स्ट का बीज आप में अंकुरित हो गया है। यही नेशन फर्स्ट का बीज आज सरकार में, सिस्टम में, हर व्यवस्था में, हर व्यक्ति में, देश के कोने कोने में राइजिंग भारत का आधार बन रहा है। सिर्फ अपने लिए ही जिए, सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए? जीना है तो देश के लिए, और मरना भी है तो देश के लिए। साथियों, 2014 से पहले और आज की स्थिति में एक और ऐसा अंतर आया है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। ये चर्चा देश की साख से जुड़ी है। जिस देश की साख गिर रही हो, उस देश के लोगों का स्वाभिमान भी ऊंचा नहीं रह सकता। 2014 के पहले भारत के साथ क्या स्थिति थी? आप याद कीजिए, 2014 से पहले घर घर में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था। देश की साख गिर रही थी, लेकिन तब की सरकार झूठे तर्कों के आधार पर अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है। जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है, और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता था। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। ये अंतर 10 सालों में आया है। बात वही है, नीयत सही तो काम सही। करप्शन पर कार्रवाई, ये मेरा कमिटमेंट है। साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार इसलिए भी अधिक था क्योंकि सरकारी दफ्तर, सर्विस सेंटर बनने के बजाय पावर सेंटर बन गए थे। हर काम के लिए देशवासियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
हमने सरकारी दफ्तरों को सत्ता के बजाय सेवा का केंद्र बनाया। सरकारी सेवाएं ज्यादा से ज्यादा फेसलेस हो, बिल से लेकर टैक्स जमा करने तक की अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन हो। हमने इसका प्रयास किया। आज सरकार की ज्यादातर खरीद जैम पोर्टल के माध्यम से होती है। आज सरकार के टेंडर ऑनलाइन होते हैं। आप याद करिए, 2G जैसी सामान्य सुविधा के लिए पहले की सरकार में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। अगर उस दौर में 5G आता तो पता नहीं ये क्या क्या करते। साथियों, पहले के समय में भ्रष्टाचारी बहुत दिमागी तिकड़म लगाते थे। हमारी सरकार ऐसे भ्रष्टाचारियों का इलाज टेक्नोलॉजी से भी कर रही है। आज भ्रष्टाचारियों की धरपकड़ आसान हुई है। आज मनी ट्रेल को छुपाना और कैश को छुपाना दोनों मुश्किल होते जा रहे हैं। और इसलिए कभी किसी सरकारी बाबू के घर से, बिस्तर से, दीवारों से नोटों की गड्डियां निकलती हैं। कभी किसी कांग्रेस के सांसद के घर से सैकड़ों करोड़ के नोटों के ढेर निकलते हैं। कभी किसी टीएमसी के मंत्री के घर से नोटों के ढेर निकलते हैं। इसलिए चारों तरफ बौखलाहट नजर आती है, बिलबिलाए हुए हैं। और ये सब होता क्यों है? बात वही है, नीयत सही तो काम सही। साथियों, आप में से जो सीनियर है, उन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो सिर्फ 15 पैसा गरीब गांव के गरीब तक पहुंचता है। यानी सरकारी खजाने से पैसा निकल रहा था, लेकिन वो किसी और की जेब में जा रहा था। ये ऐसा भ्रष्टाचार था जो सीधे सामान्य जन को प्रभावित करता था। मनरेगा का पैसा सरकारी खजाने से निकलता था, लेकिन मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती थी। गैस की सब्सिडी किसी और के खाते में पहुंच जाती थी। अपनी स्कॉलरशिप पाने के लिए भी रिश्वत खिलानी पड़ती थी। 10 साल पहले तक जो सरकार में थे, उनको ये सूट करता था, उनकी राजनीति को ये सूट करता था। लेकिन साथियों, हमने सरकारी खजाने की इस लूट को पूरी तरह से बंद कर दिया। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति बनाई। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़ 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाए। अगर पहले वाला हाल होता और 1 रुपया और 15 पैसा वाली थियरी होती तो 27-28 लाख करोड़ रुपए गरीबों तक कभी पहुंचते ही नहीं, कहीं और चले जाते। 27-28 लाख करोड़ अलग अलग योजनाओं के करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी, वो लोग जिनका कभी जन्म नहीं हुआ था लेकिन कागजों पर वो जिंदा थे, योजनाओं के हकदार बन गए थे। हमने ऐसे 10 करोड़ फर्जी नाम हटाए हैं। इसका मतलब उसका बेनिफिट लेने वाले लोग क्या मोदी का जय जयकार करेंगे क्या? आप हैरान हो जाएंगे, 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड, उसको हमने हटाया। आप कल्पना कीजिए ये कितना बड़ा घोटाला था, गरीबों का कितना बड़ा हक मारा जा रहा था। आज इस हॉल में बैठे हर व्यक्ति को उस गरीब का चेहरा याद करना चाहिए
जिसे राशन की जरूरत थी, जिसे राशन मिलना चाहिए था, लेकिन मिल नहीं रहा था। वो गरीब सरकार को कोसता था, अपनी किस्मत को कोसता था। आज हमारी सरकार में उसी गरीब को वन नेशन वन राशन कार्ड मिला है। आज हमारी सरकार उसी गरीब को उसके खाते का पूरा राशन मुफ्त दे रहा है। आज वो गरीब जब मुझे आशीर्वाद देता है तो विपक्ष के मन में गालियां फूटती हैं। मेरे लिए भी गालियां, वो गरीब मुझे आशीर्वाद देता है इसलिए उस गरीब को भी गालियां, लेकिन गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश ने तो मन बना ही लिया है। फिर एक बार साथियों, हमारी सरकार ने पहले दिन से ही अपनी गवर्नेंस को गरीब की गरिमा, गरीब के कल्याण और गरीब के सशक्तिकरण पर केंद्रित रखा है। खुले में शौच करना, सड़क पर सोना, गंदा पानी पीना, धुएं में जीवन बिताना, अंधेरे में रहना, ये जीवन कोई शौक से नहीं जीता था। परिवार का सदस्य बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ा हो, मदद के बदले ठोकरें मिलती हो, कोई रास्ता न सूझे, यही स्थिति थी। आप सोचिए, आए दिन अपमान कैसे कितने घूंट गरीबों को पीने पड़ते थे। यहां बैठे बहुत से शायद जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कैसा जीवन था, लेकिन मैं ये सब कुछ अनुभव करके यहां पहुंचा हूं। मैं उस जिंदगी को जी करके आया हूं, इसलिए मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता और न ही कैमरा के माध्यम से वीडियो शूट करके देखना पड़ता है। और इसलिए हमारी सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजना है, उनमें आपको गरीब के, सामान्य जन के इस दुख दर्द का भी इलाज मिलेगा। जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी ने पूजा है। साथियों, आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि एक बैंक खाता खोलने के लिए भी गरीब से गारंटी मांगी जाती थी। लोन की बात तो छोड़ दीजिए, देश के एक बड़ी आबादी जो भूमिहीन थी, उसे भी ऐसे ही छोड़ दिया गया था। 80% से अधिक किसान जिनके पास 2 एकड़ भी जमीन नहीं थी, उन्हें भी अपने नसीब पर छोड़ दिया गया था। करोड़ों नौजवानों के लिए बैंक के दरवाजे बंद थे, क्योंकि उनके पास भी गारंटी नहीं थी। जिनके पास किसी को देने के लिए कोई गारंटी नहीं, उनकी गारंटी मोदी ने ले ली। इसी भावना ने मुद्रा योजना को जन्म दिया। इसके तहत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए, 30 लाख करोड़ रुपए हमने बिना गारंटी गरीब युवाओं को दिए हैं। इसी भावना ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के अभियान को गति दी, जिससे आज 10 करोड़ बहनें जुड़ी हैं। इसी भावना ने रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना को जन्म लिया। इसी भावना ने हाथ के कौशल से आजीविका कमाने वालों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को जन्म दिया। इसी भावना से छोटे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि को जन्म दिया। इसके तहत उन्हें करीब 3 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। कल्पना कीजिए, अगर नीयत न होती, मोदी की गारंटी न होती, तो क्या होता।
आज जो ये मोदी की गारंटी का इतना सकारात्मक प्रभाव है, वो किसी विज्ञापन की मोहताज नहीं है। मोदी उस गरीब की गारंटी बना है जिनकी कोई गारंटी नहीं लेता था। इसलिए देश का हर गरीब आज मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। और मैं फिर कहूंगा, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आगे जाना है। साथियों, हमारे देश में लंबे समय तक राजनीतिक उपेक्षा का बहुत बड़ा शिकार देश का मिडिल क्लास भी रहा है। आप में से ज्यादातर मेरी बात से कोरिलेट कर पाएंगे। मिडिल क्लास का मतलब है वो वर्ग जो कठिनाइयों से लड़कर आगे तो आ गया, लेकिन उसके आगे सपनों और आकांक्षाओं का एक विशाल संसार होता है। लेकिन मिडिल क्लास के सामने पहले चुनौतियां भी कम नहीं थी। टैक्स का जंजाल, बच्चों की पढ़ाई का दायित्व, उन्हें अपने से बेहतर बनाने का तनाव, हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर, महंगे लोन का बोझ, एक तरह से पहले जीवन के हर दायरे में समस्याएं ही समस्या थी। ऐसे में मिडिल क्लास का जीवन 3 जरूरतों के इर्द गिर्द सिमट जाता था। एक, अपना घर बनाना, दूसरा, बच्चों की शादी हो जाए, और तीसरा, बच्चों को कहीं नौकरी मिल जाए। उसका जीवन बस इसी आधार पर सिमट जाता था। पिछले 10 वर्षों में हमने मिडिल क्लास को मुसीबतों में बांधने वाली हर बेड़ी को तोड़ दिया है। पहले 2 लाख की इनकम पर टैक्स लग जाता था, अब 7 लाख की इनकम भी टैक्स फ्री है। जीएसटी की वजह से लोगों के करीब साल भर में 45,000 करोड़ रुपया बचे हैं। बीते 10 वर्षों में होम लोन पर इंटरेस्ट रेट भी कम हुए हैं, पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट भी कम हुए हैं। पीएम सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग को मिल रहा है। साथियों, मध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा सपना होता है बच्चे की अच्छी पढ़ाई। इस दिशा में भी पहले की सरकारों ने मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं का ध्यान नहीं रखा। आज हमारी सरकार देश में तेजी के साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल रही है। बीते 10 साल में हर दिन भारत में 2 नए कॉलेज बने, प्रतिदिन डेली 2 नए कॉलेज, और हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी बनी है। देश में रिकॉर्ड संख्या में नए आईआईटी, आईआईएम्स और मेडिकल कॉलेज खुले हैं। 2014 तक देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन उनकी संख्या 10 साल में 700 तक पहुंच गई है। 2014 में पूरे देश में सिर्फ 50,000 एमबीबीएस सीट थी। आज देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गई है। मेडिकल में पीजी की सीटें भी 2 गुनी से ज्यादा हो चुकी है। सरकार ने स्थानीय भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का जो निर्णय लिया है, उसका भी फायदा मध्यम वर्ग के बच्चों को मिला है। हमारे मिडिल क्लास परिवारों के हजारों करोड़ रुपए अपने बच्चों को बाहर किसी देश में पढ़ाने में खर्च हो जाते थे। ये पैसे बचे, इस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। आज दुनिया के एक से बढ़कर एक विश्वविद्यालय यहां भारत आकर अपना कैंपस खोलना शुरू किया है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज की मदद के लिए सरकार ने नियमों में भी बदलाव किया है। साथियों, बीते 10 साल में जो नए सेक्टर खोले गए हैं, उन्होंने भी मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए आगे बढ़ने के नए रास्ते बनाए हैं।
स्पेस सेक्टर हो, स्टार्टअप हो, ड्रोन और मैपिंग सेक्टर हो, इन सबको नौजवानों के लिए खोल दिया गया है। डिफेंस सेक्टर में भी रिफॉर्म करने से हमारे नौजवानों को नए अवसर मिल रहे हैं। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी हमने जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, ट्रांसपेरेंसी पर जो काम किया, उसने भी नौजवानों के लिए नए अवसर बनाए हैं। अभी हमने जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है, उससे भी बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनने वाले जा रहे हैं। और उसके कारण मध्यम वर्ग का बिजली का बिल 0 होने वाला है। मध्यम वर्ग का एक और बड़ा सपना होता है शहर में अपना घर। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि शहर में रहने वाले मिडिल क्लास के लिए पहले की सरकारों में एक भी योजना नहीं थी। मध्यम वर्ग के घरों के लिए पहली योजना अगर किसी सरकार ने बनाई तो हमारी सरकार ने बनाई। हमने मध्यम वर्ग के लोगों को घर के लोन में सब्सिडी दी, ब्याज में राहत दी। इस पर करीब 50,000 करोड़ रुपए हमने खर्च किए। इसका भी बहुत बड़ा लाभ मिडिल क्लास परिवारों को मिला है। उनके अपने घर का सपना पूरा हुआ है। साथियों, दिल्ली एनसीआर के लोग जानते हैं कि पहले की सरकारों के समय कितने फ्लैट फंस गए थे। लोग किराए के घरों में रहते थे, ईएमआई भी भरते थे और अपने घर के पूरा होने के इंतजार में जीवन पूरा कर रहे थे। मिडिल क्लास के इन परिवारों की भी पहले किसी भी सरकार ने सुनी नहीं थी। हमारी सरकार 25,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके ऐसे अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करवा रही है ताकि मिडिल क्लास के परिवार को उसका अपना घर मिल जाए, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको मकान मिल जाए। ऐसी परेशानी फिर ना हो, हमने इसके लिए भी रेरा कानून बनाया है। आज करीब 1.25 लाख बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स रेरा के तहत रजिस्टर्ड है। अब कोई ये मनमानी नहीं कर सकता कि किसी मिडिल क्लास के व्यक्ति का घर फंसा दे या अधूरा छोड़ दे। और ये काम मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में बहुत बड़ा राहत का काम है और ये ही तो मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी सिर्फ शहर में ही नहीं, गांव में रहने वाले लोगों की संपत्तियों की भी चिंता कर रहा है। गांव में प्रॉपर्टी के कागज ना होने की वजह से लोगों की जिंदगी कचहरी के चक्कर काटने में ही गुजर जाती है। जमीन को लेकर झगड़े ना हो, कचहरी का चक्कर ना लगे, गांव की प्रॉपर्टी पर लोन मिले, इन बातों को ध्यान रखकर स्वामित्व योजना चलाई जा रही है। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी कहती हैं कि लोगों के पास उनकी प्रॉपर्टी के राइट्स होना किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। स्वामित्व योजना के तहत हमने करोड़ों परिवारों को उनके लैंड टाइटल दिए हैं। आज देश के गांव-गांव में ड्रोन की मदद से मैपिंग का काम चल रहा है, प्रॉपर्टी के राइट देने का काम चल रहा है और इससे भी रोजगार के कितने मौके बनते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, 2014 तक पूरी दुनिया भारत को एक ओवरलोडेड फ्लाइट के एडिशनल वेट की तरह देखती थी, लेकिन आज भारत वो पैसेंजर बन चुका है जिसके बिना ग्लोबल फ्लाइट उड़ान भरने की सोच भी नहीं सकती। अगले 5 साल में भारत वो पायलट बनेगा जो ग्लोबल फ्लाइट को नई बुलंदी की तरफ ले जाएगा। अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन के होंगे। अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ के होंगे। अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड एक्सपांशन के होंगे। अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी के होंगे। और ये मोदी की गारंटी है।
आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए सबके बीच बुलाया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। Can we have one more big round of applause for a fantastic address and a big note of thank you to Shri Narendra Modi, the Honorable Prime Minister of Bharat. May I request the audience to please wait here in the Darbar Hall as the Prime Minister makes his exit. Thank you very, very much. With that, we conclude this edition of Rising Bharat, the annual summit here at the News18 network, Rising Bharat 2024. A profuse thanks or a profound thank you to all our sponsors, to all our lovely guests for joining us over the last 2 days for some amazing sessions, engaging sessions that perhaps paved the way for how we can lead for global good. The story of a Viksit Bharat. Ladies and gentlemen, dinner is served. Thank you very, very much. Big round of applause for all of you also for being a fantastic audience, and thank you to the entire wonderful team here at the News18 network for putting together the Rising Bharat Summit 2024. Thank you very much.